and welcome to 9th and 10th channel of BYJU'S. I'm your teacher Ankita, and with us we have so many amazing teachers. Hi everybody, I'm Aishwarya. Hey everyone, I'm your physics expert Saurabh, and we have with us... Hi everyone, I'm Kriti and we study chemistry together. And आज हम चारों आ चुके हैं आपको साइंस के 100 PYQs कराने के लिए. Yes, 100 most repeated previous year questions. Now देखो, board I think it's almost, we can't even say it's coming soon. It's almost there. It started, right? So we don't have time. It means the only best thing we can do is take care of the most important things, and that is the previous year questions, right? So, ma'am, any idea or what do you want to tell us, our students, how the session will be and how will you proceed? Yeah. So I think it will be a very amazing session, as you all know that we have 100 most repeated questions, and we will be going into the details and we'll be discussing those questions. What else, Aishwarya ma'am, what do you think? And of course, as you know, it's going to be 100 most repeated questions across science. So it's going to be quite a long class. So we will be, of course, breaking it up, giving you relevant amount of breaks. So please make sure that you stay hydrated. You have good amount of food next to you, right? And when we give you the breaks, don't say that, ma'am, break nahi chahiye, fatafat we'll finish. Because most often than not, I think Kriti ma'am, normally, you know, they'll be like, we'll finish it at one go. But at times when we finish it off at one go, sometimes here and there what we try to teach, they may or may not be able to perceive it, right? When we're doing so many questions. Yes, absolutely. So you deserve that break in between, and उस break में अच्छे से stay hydrated. And the most important thing is be ready with a pen and paper. Otherwise, the entire session will not be of any use. अगर आपने नहीं solve करे questions हमारे साथ, अगर आपने इस time को अच्छे से utilize नहीं करा, then फायदा नहीं होगा. सिर्फ देखना नहीं है, आपको साथ में solve करना है, और जो नहीं आता उसको note down करना है for future reference. Yes. Yes. Yes, everyone. So I think please make sure, as all of the teachers have mentioned, have your notebook, have your pen. And I can see you are asking us to start the class, so we'll be starting in a minute. Please make sure to hit the like button and do subscribe to the channel, because this is just the beginning, right? As we say. Exam abhi start bhi nahi hua, and especially for science and for all the subjects, we have planned amazing sessions. So stay tuned. और बच्चों, I think all of you were saying no, science के अंदर practice चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. So आज का session उसके लिए है. Two things. The chat is moving very fast. तो we can see a lot of comments, लेकिन बहुतों को हम address नहीं कर पाएंगे. But बच्चों, we can see all your names. Your chats are still there. कोई question रहा which is relevant to the session, we'll take it. और इसके अलावा तो just have your attitude ready पहले तो. आज का session बहुत जरूरी है ना? अच्छे questions हैं, सारे के सारे अच्छे से करने हैं. So make sure you solve them, you be with us till the end, and you press the like button, you subscribe if you haven't done already, because इसके अलावा बहुत सारे sessions आने वाले हैं, right? We will be revising a lot of things अभी. So subscribe करो, like करो, और चालू करते हैं. Yes. So we'll get started. Yes, everybody. So see you all very soon. Just quickly adding on. First, we'll be going with biology. Ankita ma'am will be starting off, and then I'll be taking it, followed by chemistry and then physics. So all the very best to everybody. And over to you, ma'am. Thank you. Yes. See you. See you everyone. Yes, everyone. So I hope that all of you are ready, right? Yes, I hope that all of you are ready, everyone. Awesome. So I think I can still see many of you are asking what will be the length of the session. So approximately I would say 6 hours, right? We'll try our best, but we will be going in detail today. We will be focusing on how we can write the answer in the examination. So we will be going a little bit slow, right? And I want all of you to pay attention. I know that there are so many of you here, and I know that you have doubts. So what we'll be doing, right, we'll be focusing in the class and not anywhere else, right? And if you pay attention, I'm sure all of your doubts will get it sorted. Okay, everyone, let's have a quick thumbs up chain and we will be starting. We're starting with the bio. I'm just increasing the height of the table. This is fine. Yes. Yeah, this is fine, right? Ha. Awesome, everyone. Yes, and after the class, I will be sharing, right? All of us will be sharing the PDF. Yes, so please make sure you join us on the Telegram and you will get the PDF. All the best. Yes, Kriti ma'am was there in another studio. Okay, chali everyone. So here we are starting with bio, and here we have how many chapters we have in bio? Can you quickly tell me how many chapters we have in biology? We have total of 5 chapters. We have life process, we have control and coordination, we have how do organisms reproduce, heredity, right? We don't have the part of evolution, and the last chapter, our environment.
So हम start कर रहे हैं live process से, and here we have the first question everyone. चलिए. And again, those of you are asking me to speak in Hindi and English, we will be mainly focusing on the English. If at all the question is really very difficult, I might explain in Hindi, but let's just stay focused on English. Here we go. In human alimentary canal, everyone, the specific enzymes/juices secreted in the location. Now, we all know that the digestive system is really very important from the exam point of view. And every year, right, it's a very common question asked. Maybe for 1 marks, 2 marks, or 3 and for the 5 marks question. So here we have, right, here we have it, right, everyone. We have to find the location 1, 2, 3 which is there in the image, and then we have to find the enzymes or the juices that particular gland secrete. Very good. So the digestion start in the mouth, right? The digestion start in the mouth, and what we have over here, we have the teeth, right? And we have the tongue. Apart from that, we have the salivary glands, and salivary gland secretes a very, very important enzyme. Right, we know the enzyme over here. We have these MCQs type of question. We have to pick one. Very good, everyone. So can you pick the correct option from here? Awesome. So we know that in salivary amylase, what we have the secretion of the salivary glands will secrete salivary amylase. Bile is secreted by the liver, stored in the gallbladder. Very good, everyone. And trypsin is secreted by the pancreas, and it helps in the breakdown of the proteins. Are we clear? Yes, awesome, everyone. So we know that option number B over here is the correct answer. Very good, very good. Okay, everyone, can you quickly tell me what is the function of HCl? Right, what is the function of HCl? What is the function of mucus? And what is the function of pepsin? Now, I'm quickly revising this also because this is really very important from the exam point of view. Right? HCl actually help in killing the germs. Right? It actually helps us in killing the germs. And it activates the pepsinogen enzyme. Right? Remember? And once it activates the pepsinogen enzyme, it will become into the pepsin. Right? Very good, very good. Then mucus actually protect the inner lining, right? It protects the inner lining. This is very important. From the harmful effect from the acid. Absolutely correct. And at the end, we have the pepsin that actually help in the digestion of protein, right? It actually help in the digestion of protein. Are we clear? Very good. So with this, we are done. Right, when we have discussed about the juices and the enzymes. So here we have. Okay. Very good, very good. Let's move to the next question, everyone. And here we have a very common question. Yes, we don't have many MCQs questions, so we'll not be conducting the poll. If we have, we will definitely conduct a poll. What is a lymph and how it is different from the blood? See over here, it's a 2 marks question. And it came in the year 2018, right? Now, we usually tend to get confused with the word lymph, right? Now, can you quickly write me and tell me what is lymph? We have studied about it, right? Yes, right? Very good, very good. So we have discussed about the lymph. Now, lymph there's one thing that we have to remember is that it is colorless fluid. Absolutely correct. Tissue fluid or the colorless fluid. And it leaks out. It actually formed when it's the blood, right? Leaks out, and it includes only the it includes only the WBCs, right? And it forms an amazing system, and it provides a defense mechanism. Absolutely correct. Very good, everyone. So the tissue fluid which seeps through the walls of the capillaries. The components are white blood cells, lymphocytes, protein, and the plasma. And it is different from the blood because it does not contain the RBCs and the platelets, right? Are we clear? Yes, very good, very good. And this lymph system actually help us providing definitely the defense mechanism also, right? So it provides the immune system, body defense plays a very important role. And we know that there is a link with the fats globules. Absolutely correct, right? Yes, very good. Very good, very good. I don't know why you're saying that the stream is running late. I don't know what you're saying. You can go back and check, refresh your page. We started at 11:03, right? But it's perfectly fine.
Okay, so are we clear with this, everyone? And you can write about the blood. See, first important thing over here is that we should know what is RBCs and what is lymph. If you know that, you'll be able to write the answer. Yes, so I'm sure you would have seen this question, right, in your examination for either 1 marks or for 2 marks. So if you have to write the definition in the examination, you can just write that it is a tissue fluid or the yellow color, colorless fluid which is there, which seeps out from the blood vessels and form. It contains WBCs, lymphocytes, and it actually helps us in providing the immunity. Clear? This is how you can write about the lymph if they are asking for the definition. Clear? Very good, very good. So I hope that all of you are clear with this. Very good. Yes, you will get 100 marks if you pay attention, if you look at these questions, and we are revising them again and again. Okay, so here I'm revising lymph once again, everyone. So we know that lymph is a fluid that circulates throughout the body through the lymphatic system. They have the lymphatic system, right? And these lymph is formed when the interstitial fluid that we have, right, from the body tissues that comes and it get collected into the lymph capillaries. Are we clear? Very good, everyone. Okay, are we clear, everyone? Quick thumbs up. Yes, I've explained it again about the lymph. See, let's suppose if we have this blood vessel, right, and we know that some of it will leak out. It includes WBCs, right? It includes the plasma protein. Okay, this will be forming the lymph and they will be moving into the lymphatic vessels and eventually will form the lymphatic system. Okay, are we clear? Awesome. So it's a 2 marks question, everyone, and we have 2 marks in our pocket. बहुत ही easy है. It's kind of the Kaju Katli question. चलिए, let's take a look at the question number 3. List 4 functions of the human heart. Why is double circulation necessary in the human body? Now we have this question for the 3 marks and it came in the year 2019. Now how many of you are aware about that human heart has how many chambers? Yes, human heart has how many chambers? Jaldi, how many chambers we have in a human heart? Okay, interstitial fluid is nothing but the fluid which is moving, which basically is formed coming from the cell. A fluid which is coming out of the cell, right? And from that particular vessel that we have. Very good. So the human heart has 4 chambers. First of all, we have to tell about what are the functions of the human heart. So what are the functions that we have of the human heart? Right? What are the functions of human heart? Now definitely it's a pumping organ, right? We know that it's a pumping organ. Yes? It's a pumping organ. Apart from that, when we discuss about the main function, right? Now we know that it is pumping the blood. So we can correlate in such a way that we can say that it actually helps in providing a nutrient to the different parts of the body, right? Helps in carrying out the circulation, right? Helps in carrying out the waste material also. So the functions of the heart, right? We will try to connect with the blood because blood is the one who's actually getting pumped through the heart. So the functions of the heart will be, if we connect the blood over here, to circulate the nutrient, right? To provide oxygen to tissues, to remove carbon dioxide from tissues, and to maintain the electrolyte balance. Clear, everyone? Yes. Are we clear with this? Right? Very good. So if someone asks you in the examination, write the function of the human heart, this is how you can write. Very good. Provide the oxygenated blood. Yes, to the organs. Very good. To the different body parts. Very good, everyone. Awesome. Yes. So it's a disease that is caused, right, by a worm. Elephantiasis. किसी की कमी से नहीं होता. It is caused by a worm. Right? We have an organism which is responsible for it. You have it in your class 9th. Very good, very good. Electrolyte balance. Basically, we have the different types of ions in our body, right? I'm sure you would have talked about the ions, right? Electrolyte balance कम हो रहा है, हम ORS पीते हैं balance करने के लिए. So of course we have all of these electrolytes in the blood,
right? And of course, when the blood is getting pumped with the help of heart and it's moving to the different parts of the body, it is actually helping in maintaining the perfect electrolyte balance. Are we clear? Yes, very good. How the circulation of heart, I will be explaining you the circulation of the blood also. Very good. Yes, it actually plays in the osmoregulation. Basically, we do see that there is a maintenance and the movement of the blood, right? But osmoregulation will connect more to the kidney, though every body part, right? When we talk about, it is very important for every body part of our body. Very important for throughout the body, sorry. Yes, okay, bio is easy, right? Very good, everyone. Lymph याद नहीं हो रहा है तो again I will say, see, I know that lymph बहुत ज़्यादा confusing हो जाता है sometime. Please make sure you go back. थोड़ा सा पीछे जाइए. Watch a video for 2 minutes and I'm sure you'll be able to find the answer. ठीक है? Lymph की definition दी है उसे समझिए and then you remember what we have discussed. Okay. Now everyone, how many of you have doubt in double circulation? जल्दी से. Or tell me how many of you are the master of double circulation? How many of you know, okay ma'am, we know that what happened in the double circulation and we can easily write this in our examination. Raise your hand. Temperature also, absolutely correct. Raise your hand everyone. I can see bio stuff, bio is easy, but you tell me. Can you explain about the double circulatory system in your examination? Me. Mastered it, very good. Few doubts, okay. Few doubts are there. I can see majority of you have mastered the double circulation. But those of you who still have some doubt, we will quickly revise it and I'm sure all of you will be mastered of it. So okay everyone, focus over here. So we'll be looking at the point from the CBSE, what the CBSE can ask you in the examination. So I want all of you to pay attention. Okay, human have how many heart chambers? Yes, human have 4 heart chambers. Basically, human have 4 chambers. We have right auricle, we have left auricle, left ventricle and right ventricle. Are we clear with this? Yes? Very good, very good. We are clear with this, right? Awesome. Then we have lungs and then we have the body. Okay. Clear? Now what we are doing, we are understanding that how the double circulation is happening in the human body. So everyone, let's take a look over here. So when you inhale, what will happen? Inhale everyone, inhale. Right? So when you inhale, lungs will have the oxygen, right? And we release the carbon dioxide and we inhale the oxygen. So the oxygen that we have in the lungs, right, will be coming to the left atrium with the help of pulmonary vein. Yes or no? You remember this? Please make sure. These are the very, very important points, right? When we inhale, जब हमने सांस ली, ऑक्सीजन गई लंग्स में और जो लंग्स में ऑक्सीजन है, राइट, उसे ब्लड कैरी करेगा लेफ्ट एट्रियम तक. कौन कैरी कर रही है? कौन सी वेसल कैरी कर रही है? पल्मोनरी वेन. रिमेंबर दिस एवरीवन. हम बहुत स्लो जाएंगे इस पे, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन. नाउ पल्मोनरी वेन विल बी गिविंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम. देन फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम it will move to the left ventricle. Now left ventricle and the left atrium have 2 walls. We call that as bicuspid walls, right? It has 2 walls over here and these walls actually help in preventing the backflow of the blood. Right? बहुत ज़्यादा pressure होता है ventricles में, so these walls make sure कि blood वापस atrium में नहीं चला जाए. Are we clear? So the important function of these valves is that it makes sure that blood is not moving back to the atrium. Yes, you can draw this, but if they ask you to explain the double circulation, if they're asking you to explain the double circulation with the help of a diagram of heart, then you cannot draw this. If the question simply says, explain double circulation, you can draw this. And if you are really very good with the heart diagram, you can draw the rough diagram of heart and it can explain. Yes, are we clear? Very good everyone. So, now the blood is in the left ventricle and from the left ventricle the blood will move to the aorta, right, which carries the oxygen,
and aorta is the biggest artery in the human body, right? So arteries are the one that carries the oxygen rich blood. Arteries have thick walls because they can endure the pressure and they carry the blood with high pressure to the different parts of the body. Clear? I can see. Very good, everyone. See, I'm going really very slow. Everyone focus over here. I can see लोग बोल रहे हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ. अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, let's just focus over here. I will be explaining you in Hindi also. Yes, very good. And we are focusing on the CBSE point of view. Whatever you have in your CBSE and NCERT, we are discussing it over here. Okay. Now, we are clear with this left part, right? Are you clear, everyone? Quick thumbs up. Oxygen to lungs, right? From lungs, the pulmonary vein will be carrying the oxygen-rich blood to the left atrium. And from the left atrium, it will be moving to the left ventricle. Clear? And then from the left ventricle, it will be moving to the different parts of the body with the help of aorta, the biggest artery. Are we clear? Very good, very good, very good. Now, we know that we have CO2 also. Now, when the cells are doing various chemical reactions, they will be producing the waste, right? And this, in human body, the waste gas which is produced is which gas? Can you write in the comment section, everyone? Which gas, right, is eliminated by the cells? What is the opposite of oxygen, right? Oxygen gas hai, and there is another gas which we see when we inhale and exhale. CO2. So the CO2 gas, right, the CO2 basically is produced in different cells as a waste. And this will be moving to the right atrium with the help of vena cava. Are we clear? Very good. In that also, in vena cava, we have two, right? We have superior vena cava and we have inferior vena cava. Superior vena cava will carry the blood from the upper part and inferior vena cava will carry the blood from the lower part. They'll merge into the big vein, which is the vena cava, and that will be carrying the CO2, or also called as deoxygenated blood, into the right atrium. Clear? Now, from the right atrium, the blood will move to the right ventricle. And here they have the tricuspid valves. Which type of valves? Yes, I will tell you. This is the tricuspid valves, right? Are we clear? And over here we have the bicuspid valves. Everyone, are we clear up to here? Yes. No, there is not difference. So one is plural form and one is singular form. Okay? Very good. Are we clear up to here? So we have tricuspid valves and bicuspid valves. Very good. Very good. Now from the right atrium, the blood vessel, right? Okay, let me just put it over here. From the right atrium, the blood will go to the lungs, and over here which vein we have? We have the pulmonary artery. Are we clear? So here we have the exception now, everyone. Pulmonary vein and pulmonary artery. Clear? Yes. Everyone, are we clear? So these are the important points. Apart from that, there are two important valves that we have. Right? We have the valves between the left atrium and aorta, and we have one valve between the right atrium and the pulmonary artery. Clear? Though that is not in your syllabus, right? It's these semilunar valves that actually help in reducing or stopping the backflow of the blood. Are we clear? Yes, we call them as mitral valves. Very good, very good. समझ में आया सबको? अच्छा ठीक है, अब मैं फटाफट से हिंदी में बताती हूँ. Let's focus over here, everyone. So हम लोग देख रहे हैं हार्ट का सर्कुलेशन. ब्लड 2 बार बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, राइट? और हार्ट में 2 बार आ रहा है, इसलिए हम उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं.
When the blood comes to heart twice, we call it as a double circulation. So when we inhale, oxygen मिलता है, oxygen pulmonary vein के through जाएगा कहाँ पे? Left atrium में. So blood है, उसमें oxygen है, and वो left atrium में जाएगा. Left atrium से left ventricle में जाएगा, left ventricle से aorta के through पूरी body में जाएगा. Then vena cava will carry the CO2, the carbon dioxide rich blood or the deoxygenated blood to the right atrium. Right atrium से right ventricle और right ventricle से जाएगा pulmonary artery के through lungs पे. And when we exhale, right, we will be releasing the CO2. Are we clear? Aorta is the biggest artery. Absolutely correct. Clear everyone? And now many of you asking, ma'am, how we can write. So what you can do, draw this flow chart, draw this diagram, start with the left side, or if you want to write with right side also you can. Then break into the 4 or 5 points and you are sorted. See everyone, this question can come for 5 marks also. So if you write 4 points into each, right, then you are sorted. Are we clear? We don't have Menti today. How the circulation happens of nutrients. See, blood contains nutrient, yes or no? Right, we know that blood is the one that is carrying out the nutrient to different parts of the body. So when we are saying that blood is carrying that, how the blood is getting pumped? With the help of heart. So we can say that the main function, right, of the heart is to pump the blood. But when the blood is getting pumped, it is carrying the nutrient and which is circulating in the body. So we can say that heart plays a very important role in the circulation of nutrient. Are we clear? Yes, it can definitely be asked in your examination. They can ask you to draw the double circulation ka flow chart. See, the pattern that we have seen as of now, the CBSE is not asking you to draw the diagram. Very rarely the chances are very like 1% that they will ask you to draw the heart structure or the brain structure. Okay, they can ask you to draw the human circulatory system. Clear? Not, human excretory system. Very good. Are we clear? Quick thumbs up everyone. Take a screenshot of this. I'm moving aside. The important function of the valve is to make sure the blood is not moving back. That's the main function of it. Yes, are we clear? Very good everyone. Do take a screenshot of it. Amazing. Now there are 2 terms which are not mentioned in your textbook, but 2 terms we should know. What is pulmonary circulation and what is systemic circulation? So pulmonary circulation is the circulation which is happening from the lungs to heart. That is pulmonary circulation. Clear? And the systemic circulation is that where it is moving from the heart to the body. See everyone, pulmonary, we always connect pulmonary with the lungs. So pulmonary circulation from lungs to heart, systemic, all the systems are there, right? From heart to the body. Clear? Nobody will ask you brain structure, right, to draw in the examination. They can show you the brain structure, right, that the diagram that we have in our textbook, and can ask you question. Don't worry about that. Ma'am, which are AV valves? So AV valves are present, right? You're talking about the aortic valves, right? They will be present between the left ventricle and aorta. Yes, very good. Why it is necessary? I didn't get your question. Can you repeat it? See, we will be discussing about the control and coordination after some time. Okay. Moving ahead, everyone. See, this is how you can write your answer in the examination. Easy way. It's not in detail, but this is how you can write. Very good. I have answered your question. I can't repeat it again because we have already repeated it 3-4 times. Please go back and see that part. Yes, we are asking about the function of alveoli. Give me a minute and we'll discuss that. Here we go everyone. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of the multicellular organisms in the humans. State reason. 2 marks question. So we have discussed about the diffusion, right? Yes, I'm moving fast, but many of you have doubts, so I have to tackle those also. Everyone, what is diffusion? SA node is also called as, basically it is a node that we have in a heart that actually help in generating, passing the information, electrical impulse that we have, right? It actually forwarded, and because of that we see the contraction and relaxation happening in heart. It's not there in a syllabus, so don't worry. Very good. What is osmosis? And what is diffusion? So diffusion is nothing, right,
but a very simple process where we'll see the movement of the liquid or a gas from the higher concentration to the lower concentration. If you drop a ink in a glass of water, you will see the diffusion will be happening. Yes? Very good. Now what is osmosis? What is osmosis? Osmosis means we will see that the movement of water is happening from the higher concentration to the lower concentration through a semi-permeable membrane. Very good, very good. Yes, here we have. So the movement of the molecules from a region of higher concentration to the region of lower concentration is called as the diffusion. And why diffusion is not possible in the multicellular organism? Very good, as many of you are saying, because multicellular organisms have different types of metabolic activities, right? We are very huge in structure. We have various activities happening. Of course, our metabolic rate is very high and diffusion will not be able to provide that much amount of the oxygen. Secondly, our cells are not in directly contact with the outside, right? Very good. So here everyone, you can mention these 2 points. 2 marks question, 2 points. Due to the higher metabolic rate and the volume of the human body is very large and it cannot be diffused properly, right? Second point, this, it's not contact with the outside environment. Are we clear? We don't have any flowchart for the brain. No, we don't have. Very good. Everyone, are we clear? See, I can see. Everyone, let's just focus. Many of you are writing the answer over here. Awesome. I'm really very proud of each one of you. I'm sure that all of you are ready. Good. Yes. Very good, everyone. So, are we clear with this question? Smiley for all of us. Very simple. सेल हमारा अंदर है, राइट? हमारी बॉडी के अंदर है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है ऑक्सीजन के. So it's very impossible for diffusion to happen. Second reason, we have a very high metabolic rate. We need more amount of the oxygen. Diffusion is not that fast process. It's a very slow process. Hence, it's not possible in the multicellular organism. RA, RV, right atrium, left atrium, right? जो RV, right ventricle था, RA, right atrium था, LA, left ventricle था और LV, left ventricle, left atrium. Yes, difference between the inferior and superior vena cava. Superior vena cava carries the blood from the upper part of the body and inferior vena cava carries the blood back with the lower part of the body, from the lower part of the body. We all are warm-blooded animals because we can maintain our body temperature. Yes, very good. We are warm-blooded animals because we can maintain our body temperature. Okay. Are you ready for the next question? Yes? Good. Here we have question number 5, everyone. Okay, we have to state the role played by the following process of the digestion. Enzyme trypsin and enzyme lipase. List 2 functions of the finger-like projections of that are present in the small intestine. 3 marks question, everyone. Yes, very good, very good. Yes. Okay, in the board examination, if you are drawing, right, please make sure to use the pencils only, not the pen. Please make sure to use it. No, you cannot use different types of pencils in your board examination. Yes, you do have to take the signature from the external examination. They will be signing on your copy. Please do not use multicolor pen. बिल्कुल use मत करना. Okay? Now sometime they will say कि हाँ you can carry the black pen also, पर मत लेके जाओ. लेके जाओ तो use मत करो. Blue pen से ही लिखो. And for anything which you have to underline, pencil use करो. Yes, very good, very good. How much you should study for the diagrams? ज़्यादा नहीं. Look at all the diagrams in your textbook. Remember the labelings and their function. बढ़िया है everyone, and here we have the answer. So the enzyme trypsin is released by the pancreas and same as lipase enzyme. Trypsin helps in breaking down the amino acids from protein to the amino acid, and lipase help in breaking down the fats, basically the fatty acid and the glycerol. Are we clear? Yes. And in our small intestine we have these small finger-like projections which are called as villi. They actually help us in increasing the absorption of the food and they increase the surface area also. Are we clear? It's a very valid question, right? This is a very, very, very interesting question. I can see
about diffusion पे. I'm coming back over here, everyone. A very valid question, but alveoli में भी होता है exchange of gases by diffusion. But when you think about it, right, when we inhale, we are taking the oxygen, right, and it's not going to our cells directly. Now it's moving into the alveoli for sure, right, but the number of alveoli we have in our body is really very huge, right? Now it is very confined to the lungs itself, right? So it is actually helping for some part of the cells of our body. But we have trillions of a cell in our body. Do you think that diffusion is possible there? Ma'am, yes, you can underline with blue pen also. Blue pen के साथ भी underline कर सकते हो, पर blue पे pencil के साथ भी underline करोगे तो it will look good. Clear? Yes, very good. What is the function of amylase? It actually help in the breakdown of the carbohydrates. Pulmonary का मतलब माया कुछ नहीं होता. Pulmonary हम हमेशा lung से relate करते हैं. Though we have blood vessels, pulmonary vein and pulmonary artery, because वो lung से blood लेके जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं. Very good. Are we clear with this? Yes, I can see some random questions. Okay, ma'am, अब pen के ऊपर बात हो रही है. Everyone, let's just stay focused. I would request you to take only blue pen. 2-3 blue pen लेके जाओ and have your pencil. No sketch pen, no multicolor pen, no black pen, nothing which has any color. Just take blue pen and pencil. Black रखना है तो रख लो, but please don't use it, because what happens, there are very मतलब different set of information which is there in the market कि black allow है, black नहीं allow है. What I remember, black allow नहीं है. मैंने papers check करे हैं तो black हम नहीं allow करते. Clear? So please make sure you just carrying the blue pen. क्यों परेशान होना है ना? Multicolor pen लेके जाओगे, shading करोगे, it's not allowed in the examination. Right? Very good, very good. Underline करना है pencil के साथ में करो. Right? We have those pencil हमने जो बचपन में use की हैं. Use that pencil. ठीक है? And carry your blue pen. Very good. चलिए. Next question, everyone. But before that, this is how you can write the answer in your examination. See, I think you all saw that session that Arsh ma'am did, right? What are the things that you all have to carry in the examination? Please watch that session. I'm sure it will be helping you. Chaliye, next question, everyone. And here we have on the screen. We have to define excretion, name the basic filtration unit of the kidney, and we have to draw the excretory system. Everyone, easy peasy question, right? Such an easy question. What is excretion? What is excretion? Exactly, very good. एग्जाम पैड में एग्जाम आप लेके जा सकते हो, जो राइटिंग बोर्ड रहता है, ट्रांसपेरेंट राइटिंग बोर्ड. यस. क्यों टाइम वेस्ट करना? एग्जैक्टली क्यों टाइम वेस्ट करना शेडिंग करके? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ही मिलेंगे. शेड करोगे तो भी, शेड नहीं करोगे तो भी. सो अच्छे से आंसर लिखो एंड डोंट वेस्ट योर टाइम. Very good, everyone. So excretion is nothing but the removal of the nitrogenous waste from the human body is called as excretion, right? Name the basic unit, which is the nephron. So here we are, everyone. So we know that the structure and the functional unit of kidneys are the nephron, right? And the removal of the waste material, nitrogenous waste from the body is called as the excretion. Absolutely correct. Now, the third part of the question is saying that we have to draw the excretory system diagram and then we have to label the following organs, right? So here you will be drawing the excretory system diagram. So it's a very easy, basically you have to draw the kidneys, ureter, right? Then you have to draw the, right, draw the bladder, right, and the urethra. I'm just drawing the one part over here, you can draw the other part. Please make sure you're labeling all the important parts, right? Yes. So, urine is formed in the kidney. Long tube is called to collect the urine from the kidney is called as ureter, right? And store urine until it passes the urinary bladder. It's a very easy peasy question. Yes, I know. Okay. Kidney beans, yeah. Kidney beans also. Very good. They can ask you, very rarely they'll be asking you to draw the diagram, right?
This was a question which came in 2018. But if you look at the patterns now, right, the CBSE is not asking you to draw the diagram. Yes or no? I'm sure all of you have noticed this, right? Then in the sample paper, now the CBSE is not asking us to draw the diagram. Yes? Yes or no? Very good. So, even though, just in case if it comes, do practice the excretory system. Okay? Yes, very good. See, I would encourage you to focus on the chapter life process now. How do organisms reproduce, heredity, control and coordination will be following after this, right? So let's focus over here. Okay, very good. Let's move here everyone to the next question. But before that, this is how you can write the answer. Clear hai? Everyone are clear with this? Okay, there are two questions which are kind of a repetition. So I would like to take these questions over here. Okay, many of you have still doubt in the lymphatic system. So let's go back to the lymph system here. So, what is a lymph? Can you read this? Take a movement everyone. Take a movement and read what we have on the screen. Jaldi se. Yes, बिल्कुल pencil allow है बच्चे. Pencil are allow. Don't worry, pencil allow है. जल्दी से पढ़ो इसको, जल्दी से. What is lymph? जल्दी पढ़ो. See, I will be reading it also, but you also read it. Very good, very good. अरे धैर्य, ब्लैक पेन से हेडिंग लिख के क्या करोगे बताओ? क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए, हेडिंग लिखने के लिए इतना टाइम रहेगा आपके पास में कि ब्लैक पेन निकालोगे फिर ब्लू पेन निकालोगे? Tell me. See, we all have to be really very practical in the exam. Even if you write with blue pen और ऐसे हाईलाइट करके लिख रहे हो, डिजाइन बना रहे हो, कोई नहीं ध्यान देगा. राइट, रियलिटी बोल रही हूं. क्रेयॉन्स मत लेके जाना, कोई भी कलर पेन मत लेके जाना. एग्जामिनर फेंक देंगे. राइट, दे विल बी आस्किंग यू टू डिस्कार्ड देम. दे मे बी आस्क यू डस्टबिन में डलवा देंगे आपसे. तो प्लीज डोंट कैरी एनी कलर पेन, स्केच पेन, कुछ मत लेके जाओ. सी आई एम आस्किंग यू, आई एम जस्ट सेविंग यू लॉट ऑफ टाइम. वहां पे जाके यही सोचते रहोगे ब्लू करें ब्लैक करें. व्हाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम इन द एग्जामिनेशन? पेंसिल, 2 blue pens are enough for your examination. Right? See, if you want to waste your time, there are various ways to waste your time. अच्छा shading भी करेंगे, सब करेंगे, but why you want to? Question paper इतना बड़ा होगा that you have to focus in the solving it rather than wasting your time. So please don't do. Write in beautiful handwriting. Have proper gaps. Leave good gaps between one answer and the another. Underline the important keywords. These will be helping you in your good presentation skills, not the colorful pen. Yes. Chaliye. Okay. Those of you who have doubt in lymph, everyone focus over here. What is lymph? So lymph is nothing but a fluid, right? जो पूरी body में move होता है with the help of a lymphatic system, or the lymph is formed when the fluid which lies in all the blood tissues, right? जो blood के आसपास, ब्लड टिश्यूज के पास में और बॉडीज जो टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लिम्फ. क्लियर? ये कलेक्ट हो जाता है लिम्फ कैपिलरीज में और ये इवेंचुअली बोला जाता है लिम्फ. क्लियर? तनिष्क सही है, मत लेके जाओ ब्लैक पेन, मत लेके जाओ. ओके, आर वी क्लियर? सो लिम्फ एवरीवन, आर वी क्लियर विद इट? नाउ आई वांट टू क्विकली एवरीवन गिव द थम्स अप. जल्दी से. Yes, very good, very good. No smart watches. Not smart watches. Yes, they will spend a lot of time in checking. So please don't carry smart watches. क्यों चाहिए? Carry a normal watch. Good. So the lymphatic system, right? The lymphatic system हमारे blood में से, blood vessels में से, राइट, वी हैव अ लीकेज, सीपेज होता है थोड़े थोड़े ब्लड वेसल्स का, ब्लड सेल्स का, लाइक WBCs, प्लाज्मा जो फ्लूइड है, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, और ये एक्चुअली बना देता है लिम्फ. इट इज कंप्लीटली कलरलेस. ये लिम्फ पूरी बॉडी में मूव होता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम. ठीक है, अब इसके बाद में भी अगर लिम्फ में किसी को डाउट है, यू हैव टू गो बैक इन वॉच आवर अदर सेशंस. चलिए एवरीवन, आर वी क्लियर विद दिस?
I know I'm going a little bit slow क्योंकि बच्चों को बहुत सारे डाउट है. Yes? So again, जो भी बच्चे बोल रहे मैम हम लिम्फ हमेशा भूल जाते हैं. See, वापस स्लाइड पे जाओ. Again, final time. चलिए, each one of you take a screenshot of this. जल्दी से लो. जो यहाँ पे लिखा है उसे याद कर लो. भूलने की जरूरत ही नहीं है. कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है. If you still struggle, take a screenshot और यही लिखना. जल्दी से everyone take a screenshot. Clear, right? अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि मैम ब्लू पेन है ब्लैक पेन. ब्लू पेन बच्चे. डोंट कैरी द ब्लैक पेन. अननेसेसरी में टेंशन रहेगी. राइट? कैरी 2 ब्लू पेन. Okay, let's move ahead everyone to the next part. Here we have the next question. The next question over here is that explain with the help of a neat diagram, right, these steps involved in the nutrition in amoeba. It's a 5 marks question, came in the year 2015. Now they will not ask you. This question can come for 2 marks, but without the drawing. Or maybe they'll give you the drawing in the examination and then they'll be asking you to identify the steps. Are we clear? Yes? Very good. Yes. जो फ्लूइड टिश्यूज के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं इंटरटेरिशियल जो फ्लूइड जैसा आप बोल रहे हो. यस. अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना. क्लियर एवरीवन? सो हियर वी हैव, नाउ दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 2 marks. कि amoeba has the holozoic mode of nutrition because it engulfs the food inside and the digestion occurs inside the body of the individual. So the first step is ingestion. Similarly, that we have in the humans, right? We have the ingestion. What is ingestion, everyone? Ingestion is nothing but the intake of the food, right? Ingestion is nothing but the intake of the food. Then there comes digestion. Digestion happens in the food vacuole, right? Where the digestive enzyme will be breaking down the food. That is the next step, which is digestion. Then we have absorption. Absorption, what will happen? All the important nutrients which are digested will be moving, right, to the different parts and it will be absorbed by the body. Then we will be seeing assimilation, which is nothing but the utilization of the food to produce the energy. In various metabolic processes, the absorbed food will be helping us in the generation of energy, okay, helping in to perform the various chemical reactions. And at the end we have egestion. Egestion means clearing out the waste or removing the undigested food from the body. Are we clear? Very easy. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and the excretion, egestion. Super easy, right? Super easy. Awesome, everyone. So please make sure you remember this, right? Very good, very good. Bio, 30 marks, 25 marks. CBSE don't tell you that. But as compared to physics and chemistry, bio will have 2 or 3 marks more. Clear? That's why bio is easy and please focus on bio. Yes, in the examination they can ask you to label the diagram or maybe they will ask you to write the missing step. Very good. Awesome, everyone. Yes. Okay, let's move ahead, everyone. And here we have, this is how you can, this is how you can write the examination. Ascent of sap. Gauri is asking what is ascent of sap. So ascent of sap is nothing but the fluid which is there in the xylem that moves. Very good, everyone. So if you have still in doubt over here, so we are discussing about the digestion in the amoeba, right? And what we remember in amoeba? Amoeba has a holozoic mode of nutrition. That means that it takes the food inside the body and the processing of the food happens inside the body of the organism. First step is ingestion, taking of the food with the help of pseudopodia, right? Then we have the digestion, breaking down of the food. Then absorption of the food into the body, different parts. And assimilation, utilization of that food which is absorbed. And at the end, egestion, eliminating out or throwing out the undigested food. Why are tricuspid valves? Why or what are? So
So tricuspid valves are the valves which are present between the right atrium and right ventricle, and it prevents the backflow of the blood. OMR कहाँ से आ गया? We don't have OMR sheet in CBSE. Maybe you're discussing about something other examination. Yes, we don't have OMR sheet in CBSE for board examination as of now. Very good. Good everyone. Chaliye. Next question everyone on your screen. Next question on your screen, and here we go. Yes. Address my doubt, address my doubt. If we write answer correctly, then also by the quality of the answer there is chances of deducting marks. Quality or quantity you are asking? अगर आंसर सही है फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके मैम मेरे पास ट्रांसपेरेंट पाउच है बट वो कलर्ड है, नथिंग रिटन ऑन इट. इट इज अलाउ. संजय अलाउ है. ब्लूप्रिंट यूजुअली सेम रहता है सैंपल पेपर के. हाँ चिरायू will answer your question. Okay, there's a good question asked by Chirayu. What is the difference between the nephron and alveoli? What is the difference between? Can you quickly tell me? क्या difference होगा? जल्दी बताओ. What is the difference between the alveoli and the nephron? जल्दी जल्दी everyone. It's a very interesting question. So first of all, nephron are the structural and the functional unit of kidney. Yes or no? Whereas alveoli are present in lungs. Second important thing, helps in filtration of urine, right? Basically help with the filtration of blood, basically we can say that, right? Or help in filtration process. Filtration is done with the help of the nephron, filtration of blood, and at the end urine is produced. Whereas for the alveoli, diffusion of gases, or the other term, exchange of gases. Clear? And the last term, what we can say that it actually help in the breathing process. Right? Clear? Are we clear everyone? Yes? Yes or no? Very good, very good. This is how you can write everyone, and both of these questions are very important. Okay. Now, here we have a good question everyone. See what we have as the question is really very interesting. Let's take a look over here. We have these 5 points and we have to find the reason for it. Here we go. Yes. Very good everyone. Awesome. So here we have the question everyone. The ventricles have thick muscular valves in the atria, and the next statement we have is veins have valves whereas arteries are not. Let's spend some time over here everyone, because it's a common question asked in the examination. What is the difference between vein and artery? Or they can ask you in the reason for 1 marks, like we have asked over here, right? Okay, ventricles have thick muscular walls in atria. Is it true or not? What do you think? Right? Ventricles, the lower part of the heart chamber, has thick walls as compared to the atrium that we have on the top. Yes? Why? What is the reason behind it? Quickly tell me everyone, what is the reason behind it? Why the ventricles? Very good Tanishq. Because blood pressure is really very high. Very good everyone. Yes, awesome. Okay, I can see so many of you have given the answer. Can't read your names though. I think we have 1,000 of you are in the class everyone. Please make sure you hit the like button. And if you're new here, please do subscribe to the channel. We know that because the ventricles have to push the blood to the different part, right?
left ventricle have to push the blood to the different parts of the body, whereas a right ventricle has to push the blood to the lungs. So both of them have thicker walls. Okay? Very good. Veins have valves, whereas arteries don't, because veins have valves between. Can you see this? Right? The blood which is flowing inside the veins does not have that high pressure, and these valves actually avoid the backflow of the blood. Whereas in arteries, we don't have these valves because the blood is flowing really very fast and it does not recover any. Basically, if any barrier will be there, it will be creating issues in the body. So that's why arteries don't have valves. Are we clear? Yes, absolutely correct. So take a screenshot of this, everyone. We have discussed it earlier also. Yes, very good. Awesome. Clear, everyone? See, I can see many of us saying, "Ma'am, Hindi mein bolo, English mein." Let's not go there. I'm explaining in both the languages mostly. So let's stay connected and please focus over here. तो arteries and veins का जो difference है वो यहाँ पे है. Arteries की जो walls होती है वो काफी thick होती है क्योंकि blood उनमें high pressure से जाता है. Veins की walls पतली रहती हैं क्योंकि blood का pressure बहुत कम है. Veins के अंदर में we will see the valves, right? That will be preventing the backflow of the blood. Clear? Good. Okay. Next question over here, everyone. Now, the transport system that we have in the plants is really very slow. What is the reason behind it? Now, I'm sure you have seen plants, right? And in plants, we have two important systems or two important tissues that we have. We have xylem and we have phloem. Both of these, right? Xylem and phloem together gives the transportation of water and food all together. Xylem helps in the transportation of water and minerals, and phloem helps in the transportation of food. Right? Why the transport system in plants is really very slow? क्यों slow है? Because, जल्दी से बताइए. First important reason, that definitely the major part that we have in the xylem and the phloem is are dead. Second, of course, right, it has more of the dead cells as compared to the living cells. And the energy spent by these plants are really very low. So they don't require that much. Yes, the main reason is that they have more of the dead cells. And the energy requirement is really very low. Very good. Clear? Yes, very good. They have less demand of the energy, and that could be one of the important reasons for this. Very good, everyone. Chaliye, moving to the C part. Circulation of blood in aquatic vertebrates differ from the terrestrial vertebrates. Easy question. Now we have seen that we have the aquatic organisms and the organisms that stay on the land. दोनों के बीच में circulation में बहुत difference है. What is the reason behind it? Yes, very good, very good. Awesome, very good. I can see some very good answers. So the circulatory system between the aquatic vertebrates is different from the terrestrial one because, of course, in humans and in the fishes, what is the main difference? There's a difference of the oxygen requirement first of all, right? Yes, there's oxygen requirement for sure. Apart from that, we know that these aquatic organisms, right, they have a different way of taking up the oxygen, right? Of course, the fishes takes up the oxygen through the water, dissolved oxygen, right? And humans definitely take the oxygen from the atmosphere. So the circulation of the blood is very different, right, in terms of the organism also. Clear? Yes. Are we clear, everyone? Are we clear? Difference between transpiration and translocation. So transpiration is a process, right, which we see in plants, where we'll see the loss of water in a form of water vapors from the aerial parts of a plant, right? So excess water है, वो lose out होता है in a form of water vapor. Translocation is nothing but the movement of the food in the plants. Clear? Very good. Okay, next question, everyone.
During the daytime, water and minerals travel faster through xylem as compared to the night. What do you think will be the reason for it? Right? What do you think will be the reason for this? Okay, during the daytime, we will see that water and minerals will be moving at a very higher speed through xylem. Yes, yes. Very good, very good. Yes, absolutely correct. Because during the daytime, we know that the plants have transpiration happening, right? Transpiration is nothing but the losing out of the water in a form of water vapor. Because of sun, right, we know that photosynthesis is happening and we will see the opening and the closing of these stromata. So gaseous exchange is happening. Along with that, we will see the movement of the water molecule also. Very good. Sunlight, transpiration pull, absolutely correct everyone. So we can say that transpiration is happening through the stromata during the daytime, and transpiration create a pressure, transpiration pull, so that the water molecules can move through the xylem. That is the reason we will see that during the daytime, minerals and water will move faster. Good everyone. I can see ICSE, CBSE का बोल रहे हैं. We are not focusing as of now, but maybe in the future. If you look at the concepts are almost same. We will be doing that also. Very good. Night में photosynthesis नहीं होता. Yes, I know everyone. The chat can be a little bit distracting, but don't focus on the chat. Stay focused on the questions. क्योंकि ये question exam में आ जाएगा तो लगेगा अरे काश थोड़ा सा ध्यान दे लिया होता तो ये question हमें आ जाता. Yes, what is the difference between the egestion and excretion? So egestion is the removal of the undigested food, whereas excretion is the removal of the nitrogenous waste from the body. Very good. हाँ, cactus में होता है दो. Very good. Dark reaction. Yes. But if we talk about the photosynthesis, ऐसे directly, photosynthesis usually occurs in the presence of sunlight. That's why the word photo is there. Very good, very good. So now everyone moving to the answer part of it. See, I'm moving aside, take a screenshot. Yes. Do you think कि night में ही dark reaction होता है, दिन में नहीं होता? दिन में भी dark reaction होता है, right? Okay, everyone take a screenshot of this. Screenshot of this, right? These are the answers that we have just discussed. Okay. Very good, everyone. Very good. Very good. Ha. Okay. So there is a question. Acha, now you tell me, everyone. We have photosynthesis. Right? We have light reaction. And we have dark reaction. Okay. Right? You know this? What is photosynthesis? What is photosynthesis? Photosynthesis is nothing but the process by which the plants make their own food in the presence of, by taking up the carbon dioxide from the atmosphere, water from the soil, in the presence of sunlight and chlorophyll. And they will be making the oxygen and releasing the basically making the glucose and releasing the oxygen. Right? Yes, I've explained the formula also. Clear? The reaction is very important. Please always write the whole equation, the balanced equation of the photosynthesis. Clear? Now, photosynthesis can be further divided into two types of reaction. Light reaction and dark reaction. Light reaction, right, are dependent on light. See, if light is not there, light reaction will not happen. Whereas dark reaction are independent of light. It's independent of the light. Even though the light is not there, these reaction will take place. So, light reaction, there are very important things, everyone. Let's just focus over here. What are the important things that we will see in the light reaction? First, absorption of the light, right,
and this will be change, right? We'll see the change of the light energy into the chemical energy. Yes or no? Right? Very good, very good. Light reaction changing into the, right? Converting to the chemical. Yes or no? Very good. Then the second step is the breakdown or splitting of the water or the photolysis of water. Splitting of water is very, very important, right? After the splitting of water, the next step that we have is in the dark reaction, and that is the change of the carbon dioxide. We will have a reactions, and from there we'll have the carbohydrate. Are we clear? Yes, everyone, are we clear? See, I know we haven't discussed this question, but this is very important for 3 marks. Everyone, in your textbook you have 3 steps of photosynthesis. Yes or no? I don't remember the page number, but on the first page and the next page, right, if you see, there on the top of the page, on the left side of the textbook, right, ऐसे book open करोगे, left side के page पे you have the reactions. हाँ है ना वहाँ पे? Please go through them. 3 easy step as it is. Very good everyone. That is very, very crucial. Reduction of CO2 to the carbohydrates. Clear? Thank you for sharing the page number also. Page number 96. Super important everyone. Recently नहीं पूछा है पर इस साल पूछ सकते हैं. Clear? So please make sure you go through that particular question for sure. It's very, very important. Good. Chaliye. Now that we are done with this, can we move to the next question? Can we move to the next question? See, I can see बहुत सारे लोग Krebs cycle, NADPH. So yes, NADPH and NADPH energy molecules है. ठीक है, energy electrons, basically electrons, ये they actually help in carrying out the energy. Energy currency भी बोलते हैं, but not the ATP. Yes, very good everyone. Krebs cycle you will be learning in your higher classes. Good. Chaliye everyone, let's take a look at this. Next question everyone, we have a long way. अरे बायो ही पढ़ना है ना, बायो में भी अभी एक ही चैप्टर पे, we have to move very quickly. चलिए, what are the strategies of plants to get rid of their waste? 2 marks question everyone, it's an easy question. Plants किस तरीके से excrete करते हैं? Here we have of course photosynthesis का भी example देंगे, release of the excess salt, diffusion of the gases, loss of water, release of the raisins and the gums, and shedding of the leaves. Are we clear? Very good. है ना, ये बहुत easy question है. 2 marks में they can easily ask you. Yes. DK, you're asking what is the difference between photosynthesis in the normal land plant and the desert plant. वो syllabus में नहीं है अभी बच्चे. So we'll not be going into the details, पर अगर आपको सीखना है, right? So please go and watch our other videos. हमने उसमें detail में discuss करा है. But from the CBSE point of view, it's not there. So we'll not be going ahead into that now. अभी के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा वो. पर अगर आपको सीखना है, we have gone into the details and have studied in the previous video. Please go and watch that session. Very good, बढ़िया. Everyone, let's maintain the decorum of the class, right? अभी आपकी चैट्स को डिलीट नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक नहीं कर रहे, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी लिखोगे, right? You should understand there are thousands of you who are here in class, and each one of you have your exam to write. So please make sure to maintain the decorum of the class and stay focused. Everyone, the first chapter is done, life process. ठीक है, अब अगेन बच्चे पूछेंगे, मैम लाइफ प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सी वी हैव डिस्कस्ड, राइट, डाइजेशन में, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. डाइजेशन में एंजाइम्स एंड जूसेस फंक्शंस. क्लियर? In respiration, what is important? Alveoli exchange. And the pathway. Note down this everyone, pathway of air in the body. Nose to nostrils, to pharynx,
larynx, trachea, etc. ठीक है? Then in circulation, we know that double circulation is super important. Right, double circulation is very very important. फिर है veins versus artery का difference. Clear? This is very very important. अच्छा everyone, over here photosynthesis also. Photosynthesis supremely important. Okay, breathing is easy. Breathing is easy. Mechanism of breathing is really very easy. I'm just writing over here just for all of you to remember what you have to study. Breathing mechanism. Okay? And then, right, here we have villi also. मतलब basically digestive system का सभी important है, but special focus on the digestion part, functions of the enzymes. And last में excretion, structure and function of parts, and nephron के बारे में. Plant excretion can be asked for 2 marks. Clear everyone? चलिए, ये पूरा सारा, ये तो पूरा चैप्टर है, पर देखो ना, फिर भी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट. पूरा चैप्टर नहीं है, अभी भी बहुत कुछ मिस है इसमें से. शेयरिंग ऑफ फ्रूट्स भी हो सकता है. शेयरिंग ऑफ फ्रूट्स, हाँ मतलब, बट विल नॉट बी कनेक्टिंग इट डायरेक्टली. चलिए, ओके एवरीवन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हियर वी गो. यस, लेट्स टेक अ लुक. Diffusion of gases में exchange of gases in alveoli, oxygen and carbon dioxide. Here we go everyone, here we go. Which element make the red blood? Red, hemoglobin. Very good. Residual volume इतना important नहीं है बच्चे. It's not specifically focus नहीं कर रहा है. Okay, everyone quickly take a look. हाँ, अब क्या करें, handwriting यही है. Yes? Very good. Everyone, let's take a look at the question number 10. Here we go. This is the easiest chapter. और इस chapter में भी I will be telling you what is important, what is not. Clear? What is the main function of the following, everyone? What is the main function of sensory neurons? अच्छा, 1K likes are there. Happy everyone. Congratulations to you also. Again, a very important question कि handwriting जरूरी है exam में. I would say हाँ और ना. ठीक है? Good handwriting is definitely important. ऐसा नहीं कि पूरा कर्सिव अपने लाइफ में जितना भी सीखा है, ड्राइंग ऐसे ऐसे उसको सुंदर सुंदर अल्फाबेट बना के लिखोगे. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. अच्छी हैंडराइटिंग होना और ज्यादा टाइम स्पेंड करना हैंडराइटिंग पे, देयर आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. योर हैंडराइटिंग व्हेन यू राइटिंग शुड बी लेजिबल, दिखनी चाहिए, कोई पढ़ सके उसको, ऐसी होनी चाहिए. स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना बायो में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स. क्लियर वर्ड्स दिखे, थोड़ी जल्दीबाजी में लिखोगे तो वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. ठीक है, पर प्लीज डोंट स्पेंड योर टाइम इन मेकिंग एवरी वर्ड एज अ डायमंड. इट्स नॉट वर्थ इट. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट वर्थ इट. अच्छी क्लियर हैंड राइटिंग इसमें लोग पढ़ सके, इट्स गुड इनफ. ओके, सेंसरी न्यूरॉन. अच्छा, यू ऑल आर गिविंग द functions of all of this. So sensory neuron or motor neuron एक साथ में है, so let's discuss it. What we have over here, right? So we have the receptor, we have the receptors in our body for different parts, right? Sensory neurons will be receiving the information and will be carrying that information, right, to the spinal cord. So these are the neurons basically that receives the information. Motor neuron are the one that will be taking the information and will be acting on the muscles. Clear? Cranium, right? Of course. Right now, of course, don't look over here. So we are talking about the vertebral column now. Backbone, right? Bony covering of the spinal cord is called as the vertebral column. Inside that we have our well protected spinal cord. This is a bony structure. Spinal cord has nerves. Bhai, इस time पे I cannot ignore any one of you. I'm not calling out your name, but I can see your questions. Now cranium, everyone, that is nothing but the bony box which covers and protects our brain.
So very good, each one of you. I can see your answers. Yes. See, nobody is ignoring your chat. I'm just not calling out your name. नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस डायग्राम क्वेश्चन ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. Very good. Okay. Next question, everyone. See, take a screenshot of this. I'm moving aside. Take a screenshot, everyone. Right? This is very easy. Take a screenshot of this and you will be fine. Ha. Yes. Okay. Here we go to the next question. Now, I would love to spend some time over here because this is really very important. Very, very important from the exam point of view. Reflex arc continues to be more efficient for quick reaction. Justify the statement giving reason. Now let me ask you, I want you to write in the chat box and tell me what is reflex action and what is reflex arc. Jaldi say, I'm sure you know the difference between these two. हाँ, I know vertebral column is not given in your textbook, but we know that spinal cord की covering के लिए we have that bony structure. Okay? हाँ, I can see that many of you are saying, मैम spelling में issues होता है तो practice बच्चे. Write 2 or 3 times and I'm sure you'll be able to write it, or break the word into words that you can easily relate to. Right, everyone? Fast response to stimuli, sudden response, very good. Yes, very good. So reflex action, when we say, right, it is the involuntary and very instant response. Right? It's very instant response to the stimulus. Yes, that's very important about the reflex action. So it's an involuntary and instant response to the stimulus. Whereas the reflex arc, right? What we have in the reflex arc. Now in the reflex arc, there's one thing that you have to remember is that the reflex arc, right, is a nerve pathway, right? It's a nerve pathway which actually involved in a reflex action. Okay. See, are we clear? See, reflex arc is a pathway. Receptor, sensory neuron, spinal cord, then intermediate neuron, etc. further. Okay? Whereas reflex action is the involuntary, that means it's not under your control and my control. Very instant reaction to any of the stimuli. Hot, pot, needle, anything. Okay? Reflex arc is a pathway. Are we clear? What will be the reflex arc? It is a pathway. Yes, very good. Good, very good, very good. Okay, so remember these 2 points. Now let's discuss further about the reflex arc. So, this diagram is important, everyone. This diagram can come in your examination. ये diagram आ सकता है, तो please practice for this. Please do practice for this diagram. It can surely come in your examination. Okay, receptor. Receptors are present over here, right on our skin. If you touch something really very hot, they will be carrying the information to the sensory neurons. They will be sending the information to the sensory neurons, where they will be sensing that information. They will be sending the information to the spinal cord. Spinal cord, we have the neurons, intermediate neurons, or the relay neurons. They will be taking the information and they'll be passing it to the motor neurons, and motor neurons will carry the information to the effector that we have in the muscles, and we will move. Simple, right? If someone will see, if you can try this, everyone, I'm sure you're sitting with a pen or a pencil, do this. Can you feel a little bit pinch? Yes. नहीं, CNS नहीं लिख सकते, spinal cord लिखना पड़ेगा. Central nervous system is not directly involved in the reflex action. So we'll not be writing CNS. Right? We'll write specifically the spinal cord.
किरण आपका आंसर कर दिया बच्चे, right? I'm sure you can, if you do this right, you will be able to feel a little bit pinch. So the receptors are receiving that information, taking to the sensory neurons, and the sensory neurons is passing that information to the spinal cord. Relay neuron का क्या function है? Information transfer कर रहे हैं from one neuron, which is sensory neuron, to the motor neuron. Are we clear? Yes, very good, very good. Are we clear, everyone? Receiving, receptor means receiving. Affector means it's where it will be seeing the effect of it. Krishna Priya have answered the function. Relay neuron connect and help in the transfer of the information from sensory neuron to the motor neuron. Good. So this is how, everyone, you will be writing, and this is super, super important. Right? I'm making 2 stars over here because it's a 3 marks question. आ सकता है. अच्छा बच्चे ये भी बोल रहे मैम लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन नहीं आया. यस, वेरी गुड, ऑसम. चलिए, सो आर वी क्लियर? Exact definition of relay neuron or intermediate neuron, you can say that this neuron help in sending the information from the sensory neuron to the motor neuron. It acts as an intermediate, right? Is it in the between? It's connecting, it helping in the transfer of the information. Okay, chaliye. Everyone, this is how you can write the answer in the examination, focusing on what is reflex action is, then writing about what it consists of, the reflex arc, and mentioning more about the reflex arc and how it works. Clear? Awesome. Very good, everyone. Very good. Good, good, good. Not ignoring any one of your question. Yes, you will be getting a break. Once I'm done with this particular chapter, you will be getting a break. Next question, everyone. Question number 12. What is the function of each of the plant hormones? Very easy question. 3 marks question. It's a direct question. Right? Please write your doubts, Sejal. CNS and PNS. So, central nervous system, right, consists of a brain and the spinal cord. Where the peripheral nervous systems have the nerves, right? Very good. So, that's a major difference between these. And in the peripheral nervous system, of course, we have the different divisions altogether. Absolutely correct. Absolutely correct. So, everyone, what are the functions of the plant hormones? Here we have, right, and I am sure that you have seen these tables already. Do take a screenshot and remember at least 2 functions of each hormone. So, auxin. What is the site of synthesis of auxin? We will usually see the site of the secretion or the synthesis of the auxin in the shoot of the apical meristem and the young leaves. It is a very powerful growth stimulator. Basically, we will see the growth happening, right? Help in cell elongation, promote the apical dormancy, right? Delay the aging process, and includes in the parthenocarpy. Remember 2 functions. If you have difficulties in remembering all the function, remember only 2 functions of each. Okay? I know that it is difficult कि हम इतने सब कुछ कैसे याद रखेंगे? Just remember 2 functions of each. Clear? Then we have the gibberellin or the gibberellin, right? Now this particular hormone is synthesized in the meristem of the apical buds and roots, helps in the stem elongation, absolutely correct. It delays the aging process, help to break the seed dormancy, plays a very important role in the germination, right? And growth of the internodes by cell elongation. Are we clear? Yes, very good. Very good, everyone. Then we have the last one, which is the abscisic acid. It in the green fruits and seeds at the beginning of the winter period, right? And it actually, one of the important things we have to remember about the abscisic acid is that it accelerates the aging. It actually initiates the aging process. And it is a growth inhibitor. It stops the growth of the plant. These are 2 very important functions of the abscisic acid. Yes, are we clear, everyone? Take a screenshot. Yes, take a screenshot, everyone. This is very important.
Cytokinin is not asked in the examination. Abhi ispe, right? Abhi in this question they have just asked this. Yes. Parthenocarpy is nothing but the development of the fruit without the fertilization. Clear? Clear everyone? Fruit fertilization ke bina hi agar there is a formation of the fruit, we call it as the parthenocarpy. Okay, cytokinin is also a plant hormone. It promotes the cell division. And ethylene also is a very important plant hormone. It's a gaseous hormone, right? It actually helps in the ripening of the food. Very good. Aging is nothing but the aging process, right? Cells ज़्यादा divide नहीं करेंगे. Aging मतलब यही होता है कि आपकी अब उम्र हो रही है. The functions of the cells, right? We'll see that there's a gradual decrease in the activity, right? It will not be performing at a very the correct pace or a very higher pace. We also have the aging in our body, right? I'm sure you would have heard from people that, oh, ab hamari umr ho gayi hai. We're not that active because our body cells are not that active. That's simple, in simple words, aging. You will get the PDF on the Telegram. Clear, everyone? Bhadiya, thank you so much. Thank you so much for all the love that you're writing in the chat box. I'm perfectly fine. Ma'am, do plants make their same copies? So talking about the chromosomes, yes, they do also have cell division, right? And the genetic materials moves. So they do also make. Yes, very good. Yes, banana is example of that. Absolutely correct. Syngamy, ha. You will be learning that in the how do organism reproduce. अच्छा अब सब लोग यही बोल रहे हैं. Good, good. No, Jake, I'm not. Very good, everyone. चलिए, next question, everyone. This is how you can write. Please do take a screenshot of it. बढ़िया है. See, I think बढ़िया word comes very. Yes, बढ़िया word comes really very. It's kind of my like filler word. बढ़िया है. Okay, चलिए. We have to draw the diagram of neuron and name and label the parts. Now, this is a very easy question. 3 marks के लिए आया है 2019 में. I'm sure all of you know how to draw the neuron. आता नहीं आता neuron का diagrams, right? It's very easy. See, I am not an expert in diagrams. I don't know how. I remember that in my examination, my diagrams were never that beautiful. And there are so many students who will be drawing beautiful diagrams, right? And I used to think, हाँ भैया हमारे तो diagrams नहीं बनते हैं. But yeah, somehow with the time, I guess, right, we eventually realized कि हाँ ठीक है हम भी बना लेंगे. Important thing in the examination is to remember कि diagram गलत मत बनाना. Please make sure you're not drawing any diagram which is completely wrong. Clear? ऐसा कोई diagram please do not make which is completely incorrect. Okay, so over here what we have the dendrite, cyton or cell body, right? Something you can have the myelin sheet also. This is the axon. And of course over here we have the axon terminal. 4 important parts तो हैं ही. Please make sure you are drawing this. Clear? Diagram के लिए this question can come. This question can come. Easy है बहुत. To draw the diagram of neuron. Clear? Very good. Thank you so much. Very good, very good. Okay. See, we have done a session where we have discussed about all the diagram session. Please, you can go and watch this session. Very good, yes. हाँ, very good, DK. बच्चे हिंदी में भी बोल रही हूँ बीच में. Yes, I am. Yes. CR7. Okay, are we clear, right? So let's move ahead, everyone. So this is a very easy diagram and you can just draw this diagram. Clear, everyone? Good.
Okay. So of course we have myelin sheet which is present, right, which is present on top of the axon, right, and this particular sheet actually help in maintaining that the signal is not getting lost. And node of Ranvier, actually we have the small nodes, small gaps in between that make sure that the transmission is happening really very smoothly. Okay, these are two main functions of the two important parts. Yes, chalo everyone, you will get the break after we finish the control and coordination. Here we go. Different parts of a brain are associated with a specific function. We have to name the parts of a human brain which perform the following function. Yes. Good everyone. So here I am giving you, take a screenshot of this everyone. You can write cell ending also, but ideally cell word is very vague over here, right? Axon ka its ending. So we will write the nerve ending or the axon ending. Clear? Cell ending mat likhna, either nerve ending or axon ending. So everyone take a screenshot of this. So in our brain, when we discuss, right, we break into the three different parts, right? Forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain consists of the cerebrum, the largest part, right, that actually help us in various things. Our speech, our memory, all of that is controlled by the cerebrum. Yes, cerebrum, not bellum, cerebrum. Yes, two hemisphere we have, right and the left hemisphere. Yes, so these are really important part. Controls everything, your emotions, your memory, language, speak, listening, etc., etc. All of it. Then we have the midbrain. Now midbrain is of course in between the forebrain and the hindbrain. It connects, it actually acts as a bridge, right? And it usually, right, plays a very important role in connecting these forebrain and the hindbrain and actually help in the movement of head, neck and response to the visual and the auditory stimuli. Stimulus is nothing but the something that will be triggering a reaction. Light can be the stimulus, right? Sound can be the stimulus. Axon का function है कि axon जो information आई है dendrite से cell body तक आई है, axon उस information को लेके जाएगा till the nerve ending. Yes. Are we clear? Okay. Hindbrain everyone. Hindbrain has three parts. We have the pons, we have the cerebellum and the medulla, right? So, cerebellum is the one that actually helps in controlling helps in balancing the body structure, body balance altogether, right? This is a very common example I always use if we have this pen, right? If we have to balance it, this is happening because of the cerebellum. Very good. See, this session will be long, hopefully for 6 hours. See, I know that sometimes we get confused with cerebrum or cerebellum. So cerebellum se always remember bell se balance. Okay? Yes? And cerebrum. Okay? Very good everyone. Medulla controls all the controlling involuntary actions, right? Controls all the involuntary actions, majorly in the involuntary actions, heartbeat, breathing, swallowing, coughing, etc. Very good. I can see one student saying Hindi nahi aati kya? I can ask you the same question. You will be writing your answer in your English. How you'll be able to write? Everyone, see, I would encourage you. See, you all are the citizen of a country. We should not be discriminating against the languages. Right? You will be writing your answer in English. Please make sure to get a practice of writing in English and thinking in English. I understand that each one of us have a different mother tongue, and I would encourage you to use your mother tongue at your home when you're talking to your parents, friends. But in an educational platform like this, where your medium of the examination is English, we should be focusing in English. If your medium of examination is in different language, it's easy, then you focus on that particular part, right? So, everyone, let's just stay focused. Good. So, everyone, here we have sensation of the feeling full, right? When we eat too much, it's because of the hypothalamus, right? It's a part which controls the blood sugar and the way our intestine works, right? So, this is very important.
Then vomiting, medulla oblongata is the part which control all of these amazing activities. Then picking up the pencil, cerebellum, because balancing part. And riding a bicycle, again cerebellum. Yes. Very good, very good. Okay, so this is a 4 marks question. So this gives you an understanding of the whole brain part also. Clear? So please make sure you take a screenshot of this, or exam mein aayega, you can take a picture of it and you will remember this. Hypothalamus is there, bache, in the brain. Right? I'll show you where we have exactly. So hypothalamus, then we have the pituitary gland. I'll just show you the picture. Don't worry. Okay. This is how everyone you can write. Okay. What are the phytohormones? This is the same question about the plant hormones, right? Here everyone. So we have 5 plant hormones. Moving aside, we have already discussed the function of each one of these. So please do take a screenshot. Take a screenshot everyone. So we have all the functions. Please make sure you are taking the screenshot. Good, good, very good. Awesome. Now the other question in this particular part is that the plant is usually bending towards the light. That is because of the phototropism, right? We see that the growth movement is happening towards the light, causes the action of the auxin hormone, right? And of course that's how we'll see the elongation of the cell and it will bend. Important question from the exam point of view. Yes, very good. Okay, phototropism is nothing but when the light is actually making the changes in the plant, right? It's a stimuli and it is changing. For example, if there's a light, the plant will be moving towards a light. Hydrotropism is nothing but when of course the roots will be moving towards the water. Geotropism, it's because of the gravity the roots grow downwards. Clear? Phototropism, geotropism, hydrotropism and the chemotropism. Very good, very good. Are we clear everyone? Yes. I will be giving you a break in a minute. नहीं नहीं English में ही होती है. There is a different, I think there is an option later. Yes, very good. Okay, here we go everyone. Take a screenshot of this answer also. Jaldi se take a screenshot of this. Very good, very good. Okay. Yes. Okay, the function of the pons, right, which is there in the brain, controls our face expression, mostly involuntary functions that we have, right, respiration ka. Yes, all of those functions. Yes, very good. Good, good everyone. Okay, let's move ahead to the next part. Over here we have all of these functions. Take a screenshot of this everyone. Again, a very important part. Yes, I have explained what is the functions of the pons. Helps in controlling the swallowing, hearing, facial expression, eye movement also. Clear? Yes. Function of the pineal gland, right? It basically helps in maintaining the light and dark, the cycle that we have, right? And plays a very important role because there's a secretion of a very important hormone which is the melatonin, which actually controls the sleep cycle. Okay. So this is everyone. Over here we have the answer. Are we clear? Game or 10 I have just explained. The pineal gland basically helps in it secrete a hormone which is the melatonin and actually helps us in controlling the sleep cycle of our body. Good. Largest part of the body is of the brain is the forebrain. DK have just answered it, bache. I know brain part is confusing, Diya. That's why I would suggest you to go through the chart which I showed, right? The table. It has a function, and once you have that, please do read the textbook once, and I'm sure your doubts will be cleared. Okay, everyone, we have to name the hormones secreted by the following endocrine glands: thyroid, pituitary, and the pancreas. So here we have hormones which are secreted by the thyroid gland is the thyroxine,
and the calcitonin, right, which is not there in your CBSE textbook, so you can avoid it. If you want to remember, you can remember this also. Location each side of the trachea. Of course, it's a butterfly shaped structure that we have on the trachea. Function, it actually plays a very important role in regulating the metabolic rate, brain and the bone maintenance, right? So one important function of the thyroxine hormone and or the important function of the thyroid gland is to maintain the metabolic rate. Various metabolic reactions happen in the body and thyroid glands plays a very, very important role over there. DK and Saksham have answered both your questions. I would request you to go back to the video and see that. Yes. बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे. Okay, repeating it again, everyone. The function of the pons for the hindbrain part of the brain, they actually help in controlling the involuntary, basically, facial expression, breathing, then of course, eye movement. Okay, Saksham, I'm repeating it for you. Don't ask again, right? You will be spamming it. I've repeated it already quite a time. Pineal gland is a gland that actually helps in controlling the sleep cycle. It secretes a very important hormone, which is the melatonin. Okay? I will show you the table again. In a minute, bache. Avni, in a minute. Aditya, I have just explained that. Good. So, difference between cerebrum and cerebellum. Cerebrum is a part of the forebrain, whereas cerebellum is a part of the hindbrain. Cerebellum helps in the balancing of the body, posture of the body. Cerebrums control the learning, right? The way we process the language, sound, etc. Okay? Here, everyone, the next gland we are discussing is the pituitary gland. It's the master gland of the body, right? And I think many of you were asking about, ma'am, where we have the hypothalamus. Here we have the hypothalamus, right? It is definitely present in the brain, very chotu part, right? It's there in the brain, and of course we have the pituitary gland. It secretes the growth hormone, actually helps in the development of the bone and overall body. And pituitary gland, right, gives or secretes various important hormones that are really very important for the body. But the major one which we have in the CBSE that is usually asked is the growth hormone. Very good. If there is more secretion of it, we'll see the growth height of an individual will be really very high, right? What we call that condition as? Yes, what we call that as, which condition we call it as? Very good. Dwarfism, gigantism, yes. I'm sure you would have seen people will be very long, right? Because they have more secretion of the growth hormone. Dwarfism, when of course there's less secretion of the growth hormone. Absolutely correct. Moving ahead, everyone, we have the last one, which is the pancreas. So pancreas secretes insulin and the glycogen, right, glucagon. So both of these plays a very important role in maintaining the sugar level in the blood in our body. So insulin actually helps in helps in lowering the blood sugar level, and the glucagon helps in increasing the sugar level in the body. Very good, very good. You will get 100 में से 100 if you all pay attention to the class. How to avoid misreading in the examination? By utilizing your starting of 15 minutes in proper reading, right? Without getting distracted, reading word by word. Yes. Okay. So this is how, everyone, you can write this answer in your examination. Okay. With this, everyone, we are done with control and coordination part. So over here, what we have discussed some important questions that can come in your examination. So again, if we have to sum up the control and coordination, reflex action is super important. Reflex action, 3 marks question. Please do not miss that question. Can surely come in your examination. Then about the different parts of the brain and their function, very crucial, very important. Plant hormones and the phototropism, hydrotropism, etc. Clear? If you have still any doubt, we would request you to go and watch the previous videos that we have. And I'll just show you the chart that we have for the brain. Here, take a table. Basically, it's not a chart, it's a table. Yes, everyone! Okay. Here we go, everyone, to the last question.
question from my part, and then Aishwarya ma'am will continue with how do organisms reproduce. Here we have the question. Okay, wait, I can't read the chat from there. I'll stop over here and read. Yes, Aditya, glycogen is very different from the glucagon. Yes, they are different. Very different. You will be learning more about them in your higher classes, but as of now, yeah, they are different. Okay, everyone, let's take a look at the question. Ma'am, should we know the 3 parts of the... No, it's not important. If you know the 3 parts of the meninges, very good. Will not be asked in the examination. Yes, very rarely they ask those questions. It's not that important. Phytohormones, for the phytohormones, I would request you to go through the charts, right? The table that we have given, that will be helping you. Feedback mechanism. Yeah, feedback mechanism is something that they'll not ask you in the examination, but the chances are like 1 or 2%. So for example, if you go back, if we see this, that let's suppose in an individual, the sugar level is increasing, right? The sugar level is increasing in the body. So the pancreas will secrete the insulin, right? Okay, I don't want to waste your time, so I'll be just doing it over here. So if insulin is secreted by the pancreas to make sure to lower the blood sugar level. Now once that is done, right, once the blood sugar level is at a normal place, what will happen? It's not that pancreas will be, chalo main to insulin secrete karti rehti hu. No, right? From the body, right, of course, by the sugar level that we have in the body, the signal will go to the brain and brain will send the signal to the pancreas to stop the production of insulin. That whole action which is happening, there was a beginning, there is an end. That whole cycle is called as feedback mechanism. Clear? It can happen vice versa in both the cases. When the blood sugar level is low or when the blood sugar level is high. Yes. Okay, you are writing the answer for the next question. Very good, everyone. What is the main function of placenta? The main function of the placenta is to provide the nutrient from the mother's blood to the growing fetus, right? And of course, it's a very special tissue which is there, which is the placenta. It's a disc-shaped structure which is there in the mother's body, which is attached to the uterus, of course, with the blood vessels, right? Small villi. And there only we'll see the exchange of the nutrition, exchange of the gases. And this is connected to the umbilical cord, which is connected to the developing fetus. So the nutrient the fetus required and the gases which the developing fetus required, or all the waste will be also getting transferred with the help of the placenta. Yes. Everyone, female reproductive system. I know you know the answer and I will give you the break. Mukta, we have discussed where the plant hormones are synthesized. In the table we have mentioned the site of synthesis. So you have to go back and see that. It will be easy peasy. So the female reproductive system, everyone, we have ovaries produce the egg or the ovum. They release it and it goes to the fallopian tube or the oviduct. Fertilization happens in the fallopian tube, right? Uterus mate will get implanted, the zygote after the fertilization will get implanted into the uterus. Then of course the development will happen. Cervix, of course, is the entry point into the uterus, and vagina is also called as a birth canal. Good. So here we have the answers, everyone. Okay, I think with this, my part is done, everyone. Now the next part will be continued by Aishwarya ma'am. So before that, I will give you a break of 5 minutes. So everyone, okay, we will be meeting at 1 o'clock. 1 o'clock, it's fine. They want lunch break. Do you want a lunch break, everyone? So we can have a polls now. Do you want a break of 15 minutes or 1 o'clock is fine? So that we can then continue. Faster. We'll take lunch break now. Do you want lunch break? We will have the polls now, everyone, on the screen in a minute. So you can vote. So we give lunch break now so that later it will be 5-10 minutes. Yes. So everyone, I can see that still you have doubts from the life process and control and coordination. So I would request you to go back to the video and watch it. Right? Doubts from the how do organisms reproduce, heredity and our environment will be taken by Aishwarya ma'am. So please make sure, right, you're not repeating the same thing again. Okay.
Yes, lunch break. So I think we will have the polls now. 71% saying lunch break. 72, okay, now, okay, yeah. 71 of you are saying that you want lunch break. Badhiya hai, khana pina kha ke aao. Have the energy, but don't sleep after lunch. Have a light lunch, right? ऐसा नहीं कि एकदम ही छोले भटूरे खा लिए आज तो. और फिर मैम पढ़ाएंगे, फिर आप मैम से बार बार डाउट्स को पूछोगे, वो भी प्रोसेस कर करके. Very good everyone. You can read the NCERT also, it will be helping you in getting good marks. But अभी अगर लग रहा आपको कि if you have less time, please stay focused on the one shots. Bhadiya. See, nobody is forcing you to come here and study with us. If you want to leave, please do leave. But let's not talk negative about people and the teachers. Yes, nobody is asking you to stay here. If you want to stay, please do stay with us. If you want to come here and just talk rubbish, please. I don't want my children who are here for studies to get affected by any of the negativity that you're talking. Good, very good. Seems like we have the majority, right, ma'am? So we'll have a break. 1:15 everyone. So I'm putting a blank slide. We have a break. Break time. Enjoy everyone. We'll meet. It's a break time, right? And Put the slide. Acha. Okay, let me just write still. I'm just Class will start at 1:15, right, ma'am? Yes. Okay, everyone. So I will be meeting you later. So I hope that all of your doubts are covered, right? Still, if you feel that doubts are not there are still few doubts which are pending, go and watch this video again, and we have done one shots also. So now I'm leaving everyone. Bye bye. Yes. Ta-ra.
100 most repeated questions for science, where we will be taking you through the previous year questions. So good afternoon, everyone. Good afternoon. I hope that I am audible, I am visible, and I hope my screen and what I'm writing is visible to all of you. Yes, can I have a quick thumbs up in the chat? I am back. It's 1:15. I hope all of you had your lunch, and I hope that you have your water, your notebooks and your pens ready. Yes, ma'am ने डरा दिया. Ma'am का voice बहुत loud है, but I hope now that you're all ready and excited. Yes, exactly. There was a slight glitch in the voice, but I hope now all of you are ready. Everything is good to go. Yes? Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good to go. Give me a quick thumbs up in the chat. Give me a quick thumbs up so that I know that everything is good to go. Everybody's saying, ma'am, mute hai. It's not, right? All right. I'm audible. I'm visible. You're able to see me. Amazing. All charged up. I hope some of you are not pranking me randomly saying, ma'am, aapka voice nahi hai. But I hope now everything is clear. Yes, amazing. So are we ready to get started with the next 3 chapters? We have how do organisms, heredity, evolution, and then of course we also have our environment. So we are going to get started. I'm not going to take too much of time because I know Ankita ma'am has taken you through life process and control coordination. They were very big chapters, of course, right? And now how do organisms and heredity are easy chapters, and our environment is super duper simple, right? And yes, Gokul, thank you so much. Okay. Okay, I think sound is there. All of you need to increase the volumes in your phone. Okay, yes. Kindly stop spamming with everything that is not related to science. We're going to get started with the next question. That is question number 18. We're going to go dwell deep into the questions on how do organisms reproduce. So here's your question. There are 2 parts to this question, and this is for 2 marks. That means 1 point of difference. You will get 1 mark for this, 1 mark for this. First question is to differentiate between binary fission in amoeba and binary fission in leishmania. Right? So what is the main point of difference between binary fission in amoeba and leishmania? Today we are not going to only do bio, we will do chemistry and physics as well. Kriti ma'am and Saurabh sir are eagerly waiting, which is why I need all of you to stay focused in what I'm going to be teaching you today so that we can wind it up quickly and call Kriti ma'am. Yes, thank you for all the compliments as well that's coming on the chat. Okay. Structurally, they are different. Yes, very good. I can see some of you are saying, right, that in leishmania it is vertical division, and in amoeba we see that it can happen along any line, right? So now, very good. So leishmania has a whip-like structure, takes place through any plane and takes place through a single plane, right? So that is the first point of difference in question number 1. Exactly, right? So in part A, if we were to talk about the difference, right, when we talk about what is so different about binary fission in amoeba and in leishmania. Now, first and foremost, we know amoeba is a unicellular organism that has no definite shape, right? It has no definite shape. That means when the fission, when the parent organism undergoes splitting and gives rise to 2 daughter cells, we see that it can happen like this, it can happen like this, it can happen in any plane, right? So division or splitting will happen across any plane. That is very, very important that you write this. But in the case of leishmania, what do you observe? In leishmania, we see that it has a definite structure, right? So here we see that it has a definite structure and it has a whip-like flagella. So when binary fission has to happen, we see that this will happen across a specific, right? So we see that this will happen across a specific plane, or you can say that there is a definite orientation, right? So that is the main point of difference. Can there be more than 2 daughter cells? Yes, in fission there can be more than 2 daughter cells, and if there is more than 2 daughter cells, we call that as multiple fission. Why do we say binary? We say binary fission because in those cases we get only 2 daughter cells. Binary means 2, right? And in this case, when there are more than 1, right? So when we see more than 2 daughter cells are produced, we call this as multiple fission. And in multiple fission, what happens? We know that the nuclei will undergo division along with the cytoplasm, and we see that they will all form multiple daughter cells like this. They will all be enclosed within a cyst, and of course when the cyst ruptures, it gives rise to multiple offsprings, which is why in this case when you're writing the answer, have a look at it, right? Amoeba and leishmania are both unicellular organisms that divide
divide through binary fission. But what is the point of difference? In amoeba, we see that it is across any plane. In leishmania, we see that it divides across a definite plane, right? Yes, Tanishq, you are right. Now, of course, you will get 1 mark here. Now, moving on to the next one, if you see, malarial parasite, the question was, how does the reproduction take place in malaria? So, we know that it happens through multiple fission. And we know that here the nucleus divides, giving rise to multiple daughter nuclei, and which are surrounded by cytoplasm. So, here you will get 1 mark. So here, see, when we are showing you the answers, you should also understand how to write the answer and how marking distribution takes place, because that is very, very important. Yes, Tanishq Bacha, you are right. It causes Kala Azar, but a type of species of leishmania, right? And everyone, very quickly, I will tell you, I will primarily teach you in English, because as you know, by now you should be comfortable writing answers in English, right? Which is why I am spending some time, but wherever you are not able to understand, I will teach you that in Hindi, okay? Let's move on to the next question. Okay, next question. Question number 19. When you study a slide showing different stages of budding in yeast, you observe the following stages. You have 4 steps. Bud may get separated from parent body and develop into a new individual. The body of the bud develops and gives rise to another baby bud. The bud comes out in any direction of the body of the parent cell. Thus, they may form a colony. Now, you need to give the sequence, right? You need to write these 4 steps. So, these 4 steps depict budding. Now, you need to write it in chronological order. That means what comes first, what comes second, what comes third, and what comes fourth. So, everyone, quickly, please make sure you go ahead and let me know the answer. Spend some time here and tell me which of the following are correct, right? Yes, very good, everyone. Very good. Okay. Now, somebody is asking me to explain part B. Are you asking me to explain part B of the previous question? Yes? This is for CBSE mainly, BTS. Somebody was asking me. Okay, these videos will be available post the live stream as well, so don't worry about it. Now, you can see that there has been a lot of glitch between, a lot of you are saying between C and D, right? So, that means all of you have eliminated A and B. You know it's not A and B. Okay, all of you have eliminated A and B. Most of you, I would say, but here and there I can see some A's as well. But in this case, there is a confusion between C and D. So let's understand this, right? What is the first thing? I understand that first step is this. A bud comes out in any direction in the parent body. So when you look at yeast, right? So if this is a yeast, which is a unicellular organism, the first thing is that in any direction there could be an outgrowth or there could be a bud, right? So what is bud? It is nothing but an outgrowth from the parent body, right? Now it can come out in any direction. Now, once this is formed, what should be the next step? That the bud starts to develop, right? For those of you who got confused, bud should first develop. So, we see that there will be growth and we also know that there will be development and maturation of the bud. Now, once this has happened, right, so after 3, we have 2, then we know that the bud may get separated. See the statement, bud may get separated from the parent body and it will develop into a new individual, right? So, it can either separate out from the parent body and form a new individual, or it can remain attached and they will form a colony. So in this case, if you see, the correct answer is option C. Very good, all of you. Very good. Proud of you, giving you 2 stars for this. Now let's move on to question number 20. Riding bicycle is involuntary or reflex? Riding bicycle is voluntary. When you want to ride bicycle only, you will ride bicycle. No, it's not involuntary or reflex. I hope I have clarified your doubt. Colony means group, Dev. Yes, it means group, right? So we know that at times if there's a yeast, we know that they can form a colony or a chain like that. No, that is what we mean by this. Yes, now moving on to the next one. Question number 20, which is a 4 marker, right? So in this case, you will have the splitting of marks accordingly as well. 2 marks here, 1 mark here, 1 mark here. Yes? So first one that is there is you have a diagram based question given to you. Which diagram is this? Can you tell me? Yes? Which is the diagram that is given to you? Testis is mentioned. That means this right here is the male reproductive system, right? So this right here is the male reproductive system diagram. Now here all you need to do is you need to look at you have to identify A, B, C and D. Yes? Somebody is saying, ma'am, A is glomerulus. Who is telling me A is glomerulus?
Glomerulus is inside the kidney. No, it's a part of your nephron. So it will not be that. Very good. Yes, very proud of you. A lot of you are saying, ma'am, A is ureter. Why are you telling me A is ureter? For those of you who marked that correctly, very good. A is ureter because it is a tube that is coming from somewhere and it is joining the urinary bladder. Bladder is mentioned. So that means A right here is ureter. Now what do you have? You have B. Okay, what is B? Some of you have marked A as vas deferens. See, I'll tell you the trick to identify vas deferens, okay? The trick to identifying vas deferens is, we know vas deferens is also your sperm duct, and your sperm duct arises from the testis, right? So always trace the tube that comes from the testis and that loops over your bladder and joins the bladder. So in this case, this tube is coming from somewhere else. It's not coming from the testis. That means it's not your vas deferens. So here your D right here is actually your vas deferens. Or even if you write sperm duct, your answer will be correct. It will not be wrong, right? Now in this case, some of you are telling me, ma'am, C is vas deferens. That is wrong. D is vas deferens. What is B then? Now B is what is confusing here. Some of you are saying, ma'am, B is glands, right? Okay. B is gland. Okay, very good. Now here is the trick, right? Now gland you have 3 glands. But your textbook technically talks about only 2 glands. It talks about your prostate gland and it talks about the seminal vesicle, right? Now the thing is, how do you know what is seminal vesicle and how is prostate? Now between the 3 accessory glands that are there, prostate is the largest structure, right? And we see that seminal vesicle will have this tube-like structure like this. It will look like a sac, okay? But if it is a huge one, then it is prostate. So in this case, what is B? Seminal vesicle or prostate? No, 2 glands are mentioned. Prostate and seminal vesicle are mentioned. This will be not prostate. This will be seminal vesicle. Why? Because it has a sac-like structure, right? But if it is a huge ball-like structure, very huge structure that you see, because amongst the 3, prostate gland is the largest. So B here is seminal vesicle, right? This is seminal vesicle. C here is, of course, D you have identified as sperm duct or vas deferens. What is C? Last one left to identify. What is C? D is not epididymis. D cannot be epididymis because epididymis, always remember, is the structure which is attached to your testis, right? Because we know that the epididymis is found on the rear end of it, right? D is not epididymis. Epididymis is this part that I am highlighting in red. But D is pointing to tube leaving testis. That is your sperm duct. Very good. C here is urethra, right? So C here is urethra. Very good. So you have identified what is A, B, C and D. Now the second part of the question, let me go back, is asking you to identify and name the hormone which is secreted by testis. Which is the hormone that is secreted by testis? Jaldi, jaldi, in the chat, give me the answer. I know this is there. So as per this diagram, this is not a very accurate diagram, but as per this diagram, if you see, this big one here is your prostate gland, right? Ma'am, electricity कैसे खत्म करे? आप सौरभ sir से पूछिए, but of course, first and foremost, watch his one-shot session. That will definitely help you out. Very good. I can see the answers coming for this particular question, right? So we know that the hormone produced by testis is testosterone. What is the role of testosterone? Spelling is also very important. Please make sure you write the spelling correctly. Bio mein you will be losing marks if spellings are not proper, right? Now next one is, what is the role? Everybody's telling me, ma'am, testosterone, testosterone. Now you also tell me the role also. Jaldi, jaldi, when you give me answers, we can wind it up and we can call Kriti ma'am as well, right? Yes, very good. They regulate or they are responsible for secondary sexual characteristics, right? So they are responsible for the development of the male reproductive organ, that is the testis, and they are also responsible for the secondary sexual characters. Wonderful. Now next one is, state the functions of B and C in the process of reproduction. Now you need to write down the functions of B and C. What is the function of urethra? What is the function of seminal vesicle, right? So here you need to know the functions of these, yes? Now little bit indirectly they have asked you the function. Puberty changes in men, very good. Yes, you can write that as well, or secondary sexual characteristics, right? They provide nutrients, okay, they regulate the production, all right. Provides nutrition, yes.
Very good. Exactly. Very good. Very good. I can see the answers. Bacha, today we don't have menti. Next time we will keep it in mind. Okay? Yes. All right. Very good. So now, of course, when we talk about it, right, when we talk about the functions of seminal vesicle, we know that it secretes a certain fluid that forms the bulk of semen, right? That is what is ejaculated out from the male body. And along with that, it helps in transporting the sperms and provides nourishment as well, right? So this also provides nourishment as well. So 2 points you can write. Now, what do we talk about when we talk about urethra? What is the function of urethra in men? In the case of men, we know that urethra here actually serves as a common passage for sperms and urine as well, so that it can be taken out from the body. So here you will get 1 mark for identifying the different parts, 1 mark for writing the function on what is the hormone released is testosterone and its function, right? And 2 marks for this. So if you write it this way, you will get 4 marks as well. Why are puberty changes necessary? Because we know that during adolescence, the body needs to undergo changes to reach reproductive maturity, right? So that is why we know that testosterone here is the sex hormone that plays a very important role. And we also know that in the case of females, it is estrogen, right? Ma'am, can we say it provides fluids? You can say it secretes a fluid that allows in the formation of semen, right? But don't only tell ki that only seminal vesicle will release fluid that forms semen, right? So prostate gland that is there also releases certain secretions that makes for the chemical nature of the semen, right? Gives it that alkaline kind of nature, yes? Sperm is acidic or basic in nature. Sperm, if you talk about it, is a cell, right? You cannot really say it's acidic or basic. But overall, when you look at semen, it is slightly alkaline or basic in nature, right? So it's slightly there. Okay, very good, very good. Now shall we move on to the next one? Shall we move on to question number 21, right? What is semen? Semen is the milky fluid which is formed when sperms along with secretions of accessory glands are there. And semen is actually what is ejaculated out of the male body, okay? Very good. Is this case-based? No, it is not case-based. We will do case-based when we look at our environment, okay? Now moving on to the next question. Moving on to the next one. Name the mode of reproduction. Yes, your favorite part where you will get doubts. Name the mode of reproduction in the following organisms and state an important feature of each mode. Planaria, Hydra, Rhizopus. Okay. Then you have 3 subparts. Normally a question like this will come for 4 marks, right? 4-mark question. Gurpreet, vas deferens is nothing but another name for sperm duct, right? No menti today. There is no menti. Okay, very good. Yes, the first one that is there is regeneration. Yes, all right. We have regeneration in planaria. Everybody's telling me, ma'am, Hydra's budding. Very good. You're getting the answers. Hydra here is budding. Rhizopus, what do we have? Last one. Yes, Rhizopus. I need the last one. Very good. It is spore formation, right? So we know that reproduction, or these are all different types of asexual reproduction. Yes? Brilliant. Very proud of all of you. So now in this case, how many of you are confused? Now at this point of time, are we all clear with what is regeneration? Yes? Are we clear with regeneration and fragmentation? Give me a thumbs up in the chat. Ma'am, we are all good to go, right? We know what is regeneration. Yes? Very good, everyone. I can see the answers. Very proud of all of you, right? Yes, all right, amazing. Ma'am, planaria also goes for budding, right? But see, mainly in this case, we have an understanding, right? Ma'am, no. Okay, somebody's saying, ma'am, no. Most of you are telling me yes. Okay. See, let me quickly address this because I know, when Ankita ma'am and I were talking during the break, we were discussing how we should also talk about regeneration and budding, right? So, fragmentation and regeneration. Now we know that fragmentation that is there. I'm going to clarify this doubt once and for all, right? Fragmentation that is there is something we observe in multicellular organisms like Spirogyra, right? And what do we observe? When the organism becomes mature, the whole body will break into fragments, right? So the whole body is splitting into fragments and we see that each of it will become fragments like this. And each fragment, okay? Each fragment, I want you all to listen to me. Each fragment will grow into a new organism,
right? So that is what is happening here. But in this case, in the case of regeneration, like in planaria, and in organisms that exhibit the property of regeneration, we see that there will be certain specialized cells, okay? So we see that there will be certain specialized cells wherein if at all a part of their body gets cut or it gets damaged, then we see that in this case, each of it will go, because of these cells, it will be able to regenerate into a new organism, right? Why are they able to regenerate? Whether it's in the case of your lizard tail, your starfish hand, planaria, why is it able to do so? Only because of the fact that there are certain specialized cells, right? How is this different from budding that you observe in an organism like hydra, right? How is it different? Because in this case, like hydra, I know this looks like a coconut tree, but it's hydra. What do we observe? We see that there is a point from which there is a outgrowth, right? So we see that there is a outgrowth. There is no need of damage or there is no cutting and damage that is happening, right? Which is why in this case, we see that this is how budding is different, because at one point, it is forming an outgrowth. But there is no damage to the parent organism, right? So that is why we see here. Ma'am, lizard does not regenerate, lizard tail does that. Yes? Okay. Now I hope we are clear. Now moving on to the next one. We can develop new plants from the leaves of bryophyllum. Comment. What will you write for this? Ma'am, why is vegetative propagation considered to be a type of asexual? They wants to know. See, in this case, I will answer that question by talking about the third part of the question, right? Ma'am, fragmentation is seen in sugarcane. No. That we see in Spirogyra and certain other organisms, right? Fragmentation and what you do, that is not called as fragmentation. That's called as stem cutting probably. That is very different, right? Yes. Lymphatic system, everything Ankita ma'am has already taken, bacha. So I will go ahead with the next set of chapters, okay? And I've already explained it earlier. Ankita ma'am has taken it. So don't worry. Nidhi, you can rewind back. Small buds and leaves. Yes, very good. So this is the answer for the first part of the question. Second part of the question is we can develop new plants from bryophyllum. Comment. Because we know that in the case of bryophyllum, at the edge of the leaves, right? So we see that at the tips of the leaves or the margins, there are certain notches which are present, right? And in this case, what do we see? Each of these notches that are there can grow into a new organism, right? We see that it is able to grow into a new organism. So in this case, we call this as a type of asexual reproduction or vegetative propagation. Yes, very good, very good. Now moving on to the third one, and I'm going to answer some of your questions there also. List 2 advantages, or why are we doing vegetative propagation? Why is vegetative propagation so important? Simply because vegetative propagation is a way, right? Or vegetative propagation is a method where we use the vegetative parts of the plant. Very quickly in the chat, can you tell me what is the example of a vegetative part or what are vegetative parts? Yes? Vegetative parts of the plant is what we use for vegetative propagation. So I need you to tell me the answer. Yes, I will tell you differences between budding and fission also. SBR, just give me one moment. Mitosis, meiosis also, I will do it very quickly, right? Okay. Yes, Sanjay, I think I missed. There was a lot for me to read, so I'll just quickly go through it, right? Yes, root stem leaves, they are your vegetative parts because technically your root stem leaves are not directly involved in reproduction, right? They have other functions to do. But in some cases, we can utilize these parts and we can grow new organisms, which is what we understand as vegetative propagation. Now, why should we use vegetative propagation? Why can't we just do normal sexual reproduction? Because we know most, like especially the flowering plants that are there are sexually reproducing, right? But why do we do it? Because we know that in this case only one parent is involved, and we know that at times if the seed is dormant, the seed is not giving us, we can use the vegetative parts. And we also see that the plants which are grown through vegetative propagation can bear flowers or fruits faster than those which are produced from seeds. And at the end of the day, we also understand that we will get a offspring. So we see that we will get an offspring or a young one
which is going to be identical. So if there are some characteristics that we like, then we can retain it, right? And of course, at the same time, it is cheaper, easier, and a rapid method. So very, very simple and easy, right? For those which have lost seed producing capacity as well. So now, of course, very quickly, I'm going to do a quick recall of asexual reproduction. So we know that fission is a process where a parent organism will split and it will give rise to offsprings, right? It will give rise to an offspring. So one parent will split and give rise to offspring. Now, if it is binary fission, then we see that you will get only 2 offsprings, right? But if it is the same time, if it is multiple fission, then you will get many, right? That is what we understand. Now, next up, we have budding, right? So, what do we understand by budding? So, in the case of budding, we see that there is a parent organism, right? And from the parent, we see that there will be one outgrowth, right? So we observe one outgrowth that will be there, and this outgrowth is what we call as a bud, and this bud will undergo various changes, development, maturation, all of it, and it will give rise to a new offspring, right? So this is what we mean by budding. Now next one that is going to be there is spore formation, right? Now what is spore formation? Now spore formation we mainly see in organisms like fungi. I'm just going to write it at the bottom to make more space. So we see that in this case, we see that, there is formation of spores in structures called as sporangia, right? So we know that there are spores which are produced, which are present inside structures known as sporangia or sporangium, right? And what do we see? We see that each spore can grow into a new organism, right? And it can give rise to a new fungal organism. But here we know that conditions have to be favorable, like it should be moist, there should be some, warmth as well, right? So these are all some favorable conditions. Now next up, of course, we have fragmentation, right? So here we have fragmentation. Now in fragmentation, of course, what do we see? We see that parent organism will break into fragments, right? And we see that each fragment that is there will give rise to a new organism, right? And last but not the least, we have regeneration. So I'm going to use this little space to write. So regeneration is wherein we see that during some unfavorable conditions, if a part of the body gets cut or it gets destroyed, right, we know that there are certain specialized cells, right? So we see that there are certain specialized cells which will give rise to a new one. I have written all the modes of asexual reproduction. Quickly take a screenshot, everybody. Take a screenshot. All the differences between fragmentation, regeneration, all of it is on screen. Take a screenshot and give me a thumbs up. In the chat very quickly, all the differences are there. I have written it at one go so that you will be able to get an understanding, right? And let me know if you find this helpful. All the differences are on screen. Yes, Parsh, answer is there. Everything is done. Grafting is basically, Adya, when you take stalk and scion and you get a new one, right? Natural is when you use natural methods like potato, bryophyllum, they are all natural ways, right? But at the same time, when you talk about artificial, your layering, grafting, they are all artificial. Yes, okay, very good. All of it is on screen, right? This is going to definitely help you out. These are key pointers that I have written, right? So, if planaria is cut, so what is spore? Spore is basically, it's a small structure that can regenerate into a new one, right? Okay, done. Now let's go on to the next one, right? We will move on to the next set of questions. Yes? So when you're writing the answer, you will have to write. And see, again, the question asked you to write one important feature. So you will have to mention all of that as well, right? So you need to mention all of these points also as you write it down. And then again, if you see when you're writing about bryophyllum, you'll have to talk about how there are buds which are present on the edge of the leaf. This is a key point. Now moving on, advantages, they are asking you to write any 2. I have given you 4. Write any 2 out of this, you will get marks and the PDF will be available. Okay. Example of bisexual flower, it is your hibiscus. Okay, moving on. Everybody, we have a lot more questions, another 13 questions to cover. We'll pick up the pace, okay.
In flowering plants, the pollen grains are transferred to stigma by pollination, but the female germ cells are present only in the ovary. Explain with the help of a label diagram and only concerned parts how the male germ cell reaches the ovary. So what are you going to draw here? Can you tell me which diagram are you going to draw? Yes? Quickly, okay Bishal, stalk is always at the bottom, scion is always on top. And when you wrap it together, stalk, lower stalk, higher scion. So think about stalk as, like money or something like that. I mean, easy way to remember, right? I mean, not related to the concept, but yeah. Which one are you going to draw? Vegetative propagation. Ma'am, ovary or ovule? Ovary becomes fruit. Yes? Chemotropism diagram. Yes. Okay. Pollen tube germination. Yes. Very good. So here you have to draw the pollen tube germination which is there in your textbook, right? Make a point of it. Now you need to draw two pistils. I'll tell you what you have to draw, right? So first and foremost, draw two pistils. Label it as A and B. Draw the pistil. Very simple structure. It's a flower vase that you have to draw, right? Now after this, what will you do? First, you will put one pollen grain here which has landed, right? And then you will draw little like this. And in the second diagram B, you can draw the whole one which has germinated here. Now inside, you just need to draw the ovule and keep it, right? So that is something that you need to take care of. Very simple, easy diagram that you can draw. And when you are writing the answer to this, they are also telling you explain with the help of a diagram. That means you will get 1.5 marks for the diagram, okay? 1.5 marks here for the diagram. And here 1.5 marks on what is happening during pollen tube formation. So what is happening during pollen tube formation? We know that in pollen tube formation, pollen grain will land on the surface of the stigma, and we know that pollen grain has the male gamete, right? And we know that pollen tube germinates and passes through the style, and finally it will reach the ovary and the ovule, right? So are we clear on what to do with this? Very simple. 1.5 marks you will get here also. 3 marks in your pocket. Okay, what is sepal? Sepal is the green leafy parts that you find, right, which protects the flower during the bud stage, right? Yes, very good, Inya, very good. Yes, okay. Mama, I did not understand vegetative propagation. Bacha, Vrindavan, vegetative propagation is when basically your vegetative parts, at times your root, your stem, your leaf, all these parts have the ability to give rise to a new organism, right? So that is what we understand as vegetative propagation. Tomato plant comes in vegetative propagation. Most often than not, it reproduces sexually, right, through seeds. Yes? So mark distribution are also clear. Don't color your diagrams and waste your time. Okay? Yes. Okay. PDF will come in Telegram. Moving on to question number 23. Let's pace it up, bacha. We need to also learn chemistry and physics also, right? Okay. Why can fertilization not take place in flowers if pollination does not occur? 2-mark question. Somebody is asking me, ma'am, what is male germ cell? Male germ cell is also male gamete, right? Another name for male gamete. Yes, okay. Here all you need to write about is what would happen if pollination does not happen. Very simple, easy peasy. 2 marks your pocket mein essay you will get, right? Ma'am, what is double fertilization? Seen in plants wherein we know that there is fusion, right? So we see that there is fusion of, we have 2 male gametes and fusion takes place twice, hence double fertilization. Disadvantage of vegetative propagation, because at times even the fact that your offspring is going to be identical to the parent may not be ideal, because at times what would happen is that, you know, we observe that if there are some characteristics that we don't like, then that may also have an impact, right? Okay, very good everybody, very good. Just give me one moment. Okay. Yes, very good. No fusion, exactly. So pollination basically facilitates the fact that
pollen can reach from anther to stigma. Pollen grain as your male gamete. If pollination does not happen, male and female gamete will not meet, and if male and female gamete does not meet, fusion will not take place. Do we have to color diagram? No, right? 2 points you write, you will get 2 marks. So for fertilization in flowers, it requires both male and female gametes. And if pollination does not occur, then fertilization cannot take place, right? Yes, very simple and easy. Moving on very quickly, we are going to go to the next set of questions. So if you see from this, we've had a look at all the questions from how do organisms reproduce, right? We are done with how do organisms reproduce. Now we are going to heredity and evolution, right? Now in heredity and evolution, before I get started, I am going to go ahead and I'm going to revise the important terminologies, right? Quickly I am going to take, because my aim is that by 2:15 at least we should wind up the biology questions, okay? Heredity evolution questions are very simple, but because you keep getting confused with terminologies, we are going to be doing this faster, right? Yes, we'll pick up the pace, right? Now important terminologies for all of you to understand. I need 5 minutes of your time, right? 5 minutes of your time in focus I need, okay? Give me a thumbs up telling me, ma'am, I will pay attention to you is what I need you to tell me. Mitosis, meiosis, bacha, I remember that I have to give you the answer to this. I will give it to you. Yes? Everyone listen, okay? So now these are important terminologies that you need to know. Starting with the most basic one on what is a character, right? So we keep saying that we have that character, this character, and all these things that are there. So what is a character? A character is nothing but it is any inheritable feature, right? So this is any inheritable feature. That means whichever can go from parent to offspring is what we call as a character. Now in this case, we know that there are certain characters. So if I have to give you an example of character, any inheritable character, I'll give you a simple example, that is hair color, right? So hair color is an example. Now here we see that hair color can come in alternate types. I have black hair, you have white hair. I have black hair, someone else has white hair, you may have brown hair, right? So we see that there are alternative forms, right? So alternative forms of a character is what we call as a trait. So here if hair color is a character, then we see that brown hair, black hair, right? So I'm just writing black and brown here. They are all the alternative forms, right? Now at the same time, we see that all of this, we observe that there is transmission, right? So in this case, what do we observe? We see that heredity, or when we say it is heredity is nothing but it is the transmission of characters from parent to offspring. That is what we understand as heredity, right? So as simple as that. Now how exactly are these characters getting transferred, right? Pay attention, okay? Now we know that all the information of these characters are present in the gene, right? So all the information is present in the gene. What do we mean by gene? Gene is a segment, or we see that it is a sequence of DNA. What is DNA? Genetic material, right? So we see that if this is the DNA, let me just draw this, a certain sequence or a part of the DNA will code for a particular character. So a segment or sequence of DNA that codes or has the information, right? Has information about a character, right? Or codes is a better word about a character is what we call as gene. Now basically all genes that are there, for hair color there will be one gene, for maybe hair type there will be one gene, right? So we'll have different kinds, right? But at the same time, right, what do we observe? We see that in this case, we see that there are alleles, right? So just like how characters and traits are there, we see that we have gene and allele. Others, this is not a recorded video because otherwise how else would I see your comment, right? So in this case, what do we see? Yes, in this case, we see that alleles are the alternative forms, right? Alternative forms of gene is what we call as allele, okay? Very simple and easy. Yes, very simple and easy. Now moving on to the next one very quickly, right? Now we have alleles. Now some alleles are dominant, some are recessive, right? Are genes and alleles the same?
Gene is something that codes for a character, right? Alleles are the alternative forms that are there, right? One is dominant, one is recessive, that are there is what we understand as alleles, right? Very simple. Are we clear so far? Adarsh Bacha, kindly stop spamming on the chat, right? Please stop spamming on the chat. Now we have dominant and recessive also, right? So we see that dominant is one which will, a dominant trait or a dominant allele is a character or it's a trait which will always express itself in both homozygous and heterozygous form, right? So that is what we understand as dominant. But what about recessive? Recessive will express itself only in the homozygous condition. So this is what we mean as dominant and recessive. Then we have genotype and phenotype also, right? So what is genotype? Genotype is basically, it is the genetic makeup, right? So we say that it is the genetic makeup of the organism. So phenotype that is there is basically, we talk about it as the observable features, right? So we see that these are the observable features. Then of course we have one more thing to understand and remember, we have monohybrid and we have dihybrid. So monohybrid is a cross that we consider where only one character is concerned, right? Dihybrid is when two characters are concerned, or we take two characters. So are we all clear? Yes? Are we all clear with this? In the chat very quickly. Yes? Give me a thumbs up. For those of you, this is a quick revision of it because I know when I take the questions, you guys will keep asking me same definition, right? Which is why here I am taking time to explain this. Ma'am, homozygous, heterozygous, definitely, right? So what is homozygous? Homozygous is when there is a similar pair, right? So when we have a similar pair of alleles is what we call as homozygous. Heterozygous is when there is a dissimilar pair. Okay, that is what we mean by this. Very quickly, take a screenshot if you need it to be. Take a screenshot right now, right? How many laws did Mendel introduce? 3 laws, okay? Yes, very good, very good. Take a screenshot. Ma'am, how to remember bio? Ma'am, allele kya hota hai? Allele hota hai alternative forms of the gene, right? Now moving on to the last one, which is on Mendel's law. We have 3 laws of Mendelian laws. We have law of dominance, law of segregation, and we have law of independent assortment. Law of dominance mainly we learn through monohybrid cross. We learn law of independent assortment through dihybrid, and we understand law of segregation as well. Okay? Yes. Do you need me to write the laws so that you remember? Do you have 3 minutes of time to tell me so that I can write the laws, or you are fine with the laws? Ma'am, laws to pata hai, abhi questions karenge. Yes? Yes or no? Just give me yes or no in the chat. Okay. So I'm going to quickly do this. We are going to be looking at the Mendelian laws. After this, we are going to look at the questions directly. We will move little faster also. Right? So what is the first one? We have law of dominance, right? So what did law of dominance say? Law of dominance suggested that when there are contrasting characters, right? So when there are a pair of contrasting characters, that means I can have it as TT, right? Assuming they are a pair of contrasting characters, no? Now in this case, the trait that expresses itself is called the dominant one, right? So that is what we understand is called as the dominant one, and the other one is we see that the other one is the recessive one, right? So here we also say that there is one which will always express itself, which is called as the dominant one, and the other one which will always not express, which remains unexpressed, is what we call as the recessive one, right? Now moving on to the next one, which is law of segregation, right? So law of segregation. Now what does segregation mean? To separate, right? So what do we understand? We see that during gamete
formation, right? So when gametes are formed, right, we observe that two members, okay, that means basically your alleles that are there which are in a pair right now, right? So two members or two members of a factor, or you can say that the two alleles, I'll make it simple for you, okay? So we see that the two alleles will separate, right? They will not blend, but they will separate during gamete formation. And when they separate, they can come back together during zygote formation. That is what it is, right? Now, last one that is there is very simple, which is law of independent assortment, right? So, in law of independent assortment, what do we observe? We observe that especially in dihybrid crosses, right? So in dihybrid cross, what do we see? We take two characters, no? We'll either take round and yellow, green and wrinkled, two characters we'll be taking. So when we take two characters, we see that distribution of alleles, right? Or distribution of alleles of one character is independent of the other character. So very simple, where round goes will go somewhere, the round allele and maybe color allele, right? The way it goes does not depend on each other, right? So that is something. So with this we have revised everything, all done. Now quickly we will pace it up and go to the questions, right? Fatafat we will move on. Now question number 23, all easy ones. In a cross between red color and white colored flowers, when plant with red color flowers of F1 generation was self-pollinated, the plants of F2 generation that were obtained had 75% of red flowers and 25% with white flowers. Explain the inheritance of traits in the above cross with the help of a flow chart only, right? So in this case, what do we see? Which law are we doing? Yes, we will revise it in the questions also. So this right here, as you know, is what we will apply, or which law are we going to apply here in the chat? Which law are we going to apply and explain? You saw that there were red and white, right? So you had red and white flowers. These were the parents. Now in the question they have told you that in F1 they got red flowers, okay? And in F2 they got 75% red and they got 25% white. So we are going to explain mono-hybrid cross, yes, but we are applying the law of dominance. Very good. We are applying the law of dominance here. This is a mono-hybrid cross, not a dihybrid cross. Dihybrid cross questions will have things which say round and yellow, right? Or they will say wrinkled and green. Two characters will come. But here they have only said red and white. So you can assume, and you can start off by saying that, let's say, or let's assume that red color is given by this and white color is given and denoted by this, right? So in this case, when you are writing, you have to do the cross, right? Look at the cross, everybody. This is what is there. Anand, I missed your question, bacha. Not that I purposely ignored it, right? Chat is moving very fast, so I'm very sorry, but you can send it to me once again. So you can start off by saying that parents have red versus this, right? So R and R and chotu R and R. And we know that the gametes will be formed in this manner. And if this is the case in your F1 generation, you will get a heterozygous red flower, right? So all the flowers in F1 are red. But when we move on to the next generation, we self the F1 plants. So you have to draw the Punnett square, very important, right? So you will have to draw the Punnett square and you will have to represent, and that's how at the end of it, you will get the genotypic ratio, which is 1:2:1. That means one which is homozygous dominant, one which is heterozygous dominant, and one which is homozygous recessive, right? Okay, yes. So now, of course, moving on, you have phenotypic ratio, which are the observable features, right? So if these are the observable features that are there, right? So if these are the observable features, you know that there will be 3 red and 1 white, which is nothing but your 75% and 25%, and this is the law of dominance. Okay. Ma'am, I wanted to know in both if you could draw box diagram. So if they are,
if they ask you to only write about double circulation, box diagram is okay. Easy peasy, right? Just draw that. But if they specifically say draw the anatomical diagram, then you will have to draw the heart diagram, right? So are we all clear? You will get this for 3 marks. You have to draw the cross. Be very careful about doing this. Yes? Are we clear? Very good. Okay, let's move on to the next one. So this is the law of dominance, right? Where in heterozygous condition, we know that only one character expresses itself while the other one remains suppressed, right? Segregation mein bacha, Ashwati, basically what happens is that if you see here the characters are segregating during gamete formation, right? So this is what we understand as law of segregation. But in law of independent assortment, when you have something like this, RRYY or RRYY, right? It is not that these two will go together and these two will go together, right? We see that during independent assortment, we see that the characters can segregate randomly. They can come like this, they can segregate in this, they can assort themselves in different way, right? They can become this way, they can come like this, or they could be like this, or they could be like this, right? So this is what we understand as independent assortment, right? Now independent assortment mein the focus is on the combination, right? So it is on the combination of how alleles assort themselves, right? But in law of segregation, it is during formation. We are just stating that they will segregate. That's all. Okay. Moving on to the next question, number 24, right? Question number 24. This could be interpreted as a case-based question, right? Sex of an individual is determined by different factors in various species. Some animals rely entirely on environmental cues, while some other animals, while in some other animals, the individuals can change their sex during lifetime, indicating that the sex of some species is not genetically determined. However, in humans, it's largely determined genetically. So this is a case-based question. Now you have 3 parts and you're going to get 3 marks for this. So in what way are sex chromosomes X and Y different in size? Name the mismatched pair of sex chromosomes in humans. Very easy, 1 mark. Write the number of pairs of sex chromosomes present in humans and in which one do we find the perfect pair. Simple, 1 mark. Last is citing, you have to give 2 examples wherein we see that sex of an individual is not genetically determined, right? So this is little different, okay? Yes, all right. So now, of course, Adiba, I would have missed your questions, bacha, because I am reading this here, which is why I would have missed it. But let's quickly move on, right? So in this case, we know that we have a total. In the case of humans, we have 46 chromosomes, right? Or we have 23 pairs, out of which we have one last pair. The last pair that is there is what we call as the sex chromosomes. Now we know that we have X pair we observe in females, right? Now in females it will be XX and XY will be in males, right? And we know that in the case, so if you have to write the number of pairs or pairs of chromosomes wherein we have a perfect pair, that will be your XX, while the other one that is there is XY. Yes? Now the last question is asking you to talk about how, apart from in humans, other animals, we see that it cannot be, determined, based on genetics, right? It can be based on temperature. So what would you write? What are the examples? Exactly, pranjals, snails and crocodiles, right? So snails and crocodiles that are there and even turtles, they exhibit sex determination where it is dependent on temperature. Very simple and easy. So when you are writing the answer, so that I can go back to the question. First part is asking how are X and Y different in size. So X chromosome is normal sized while Y chromosome that is there is relatively shorter in size. And autosomes are all your other chromosomes, Shilpi, your first 22 that is there, right? So the first 22 pairs that are there are your autosomes, okay? Yes, very good. So now in this case we see that Y is shorter in size. Now the 23rd pair or the mismatched pair in humans is XY that we observe in males, right? Going on to the next one, right? Name the mismatched pair of sex chromosomes in humans. Now B part says, write the number of pairs of sex chromosomes present in human beings. How many pairs are there? We have only 1 pair of sex chromosomes. Now they are asking us to identify the perfect pair.
right? Which is the perfect pair? We find it in females, which is XX, right? So very simple and easy. Last part of the question is asking us to talk about how in some cases they cannot be determined genetically. So then you can talk about how in some animals like crocodiles, snails and turtles, we see that we will be observing that based on temperature and other factors, we will be able to determine the sex of the organism. Yes, Aditya, after this session, you will be a boss at it, right? Very proud that you will be able to gain good percentage. Simple and easy. Yes? Are we all clear so far? How is the Josh? We are on the 25th question and after this, all questions are easy. All of them are easy. I can pace it up also. So shall I pace up my speed or do you want me to go slower than this? I'm just checking with all of you who are there live with me, right? Okay. Yes, all right, very good. Ma'am, how is XX perfect? Perfect because they are of the same type of chromosome, right? XX is perfect because they are the identical pair in terms of structure function. Yes? Okay. Phenotypic is when we call the ratio. Phenotype that is there is basically when we talk about the observable characters. I will pace it up. Okay, fine. Everybody's telling me, ma'am, अब तो हमको पता चल गया कि क्या करना है, तो we'll pace it up. Next one is to draw a flow chart. Yes, I'm going to increase my speed a little bit more. Okay. Draw a flow chart to show that sex is determined genetically in human beings. Very good. So now here we are talking about the sex determination flow chart, right? So when you do the sex determination flow chart, what you need to do is to first write out male and female. Right? Now once you do male and female, you then need to write down the genetic composition, right? How many chromosomes are there? So the chromosome number you need to write. Now once you write the chromosome number, you write 44 plus XY in males, 44 plus XX in females. Now once you do that, the next thing you need to do is to write about the gametes, right? What is the chromosome number in gametes? So in gametes, we know that the number becomes half, right? Now when the number becomes half, right? We see that in the case of males, some sperms will have 22 plus X, while some sperms will have 22 plus Y. But in this case, we see that all the ovum will have 22 plus X, right? Now in this case, when we cross, if a 22 plus X sperm fuses with the egg, we will get a girl. But if 22 plus Y sperm fuses with the egg, there will be a boy. So there are 50% chances of either of a offspring or the zygote being either a male or a female, right? So this is how you will have to draw the flow chart. This is going to be a 4-mark question. That means that the flow chart is very, very important, right? And you need to conclude by telling how 50% will be males and 50% or the chances of it being a male or a female will be 50-50. So very simple and easy. Moving on to the next one. Question number 26, right? So here, a Mendelian experiment consisted of breeding pea plants with violet flowers to pea plants bearing white flowers. What will be the result of F1 progeny? You need to give me, you need to tell me 2 marks, right? 2 mark ka answer hai ye. So you have to just tell me what is the color in F1. Ma'am, what to do after this video? After that, you have to go prepare for English exam. Yes, IUDs that are there are contraceptive devices. They are intrauterine devices, example being copper T. All you Naruto fans, stay focused in class. Yes? Please stay focused. Now we know that violet that is there is a dominant trait over your white flowers. So if violet is dominant, what will we get in F1? Yes, what will we get? We know that violet is dominant over white flowers, which means that all of them will be violet in F1 generation. Why will it be F1? In F1 generation, how is it violet? Because it will be in the heterozygous condition, right? So if it is in heterozygous condition, dominant trait will always express itself over recessive. Very good. So when you're writing the answer, you can show the case and you can write this point as well. 2 marks easily for this. Moving on to next one, question number 27, next part. If we cross a purebred tall pea plant with a purebred dwarf pea plant, we will get some plants in F1 generation. Now if we cross the pea plant of F1 and we obtain pea plants in F2, what would the plants in F1 look like?
4 options from which you need to identify the correct answer. Madhu, maintain the decorum of class. Yes. Ma'am, would there be mention of dominant gene? There would be, but if they don't mention it, you should know. Like violet is dominant over white. You should know that tall is dominant over dwarf. These are basic things that you should know, right? Yes, very good everyone, very good. Yeah, you can write it like that also. Yes, I can see majority of you have given me the correct answer. When it is purebred, that means it is a homozygous condition, right? Homozygous cross that is happening. That means F1 may, they will be heterozygous. 1 mark for this. Next part is also an MCQ. State the ratio of tall plants to dwarf plants in F2. They are saying tall to dwarf. That means they are asking you for the phenotypic ratio of a monohybrid cross. That is what they are asking you in this question, right? But if the same thing, right, if they tell you ki ma'am, okay wait, I can see some mixed answers. They're saying tall is to dwarf. This is what is given to you, right? What would you get? Yes, very quickly. Confusion between option A and B. But in this case, it is option B. Because they're saying tall is to dwarf, right? And we know that in F2, you have 3 tall and 1 dwarf. But if the question had said state the ratio of dwarf is to tall, then okay, 1 is to 3. But they'll never ask you like that. Now let me tell you and add on one more point also, is that if they tell you to identify the ratio of homozygous tall is to homozygous dwarf, right? If they ask you to identify this ratio and they specify the genotype, right? Then make sure you do 1:1 and not 3:1, right? Because they have mentioned homozygous here. So be very, very careful on the question, right? Pure always means dominant, a homozygous, right? While when you say, if they don't mention if they've not mentioned pure, then you can also consider the possibility of it being heterozygous. Very good, all of you, very good. I'm going to put big star mark for all of you for doing such an amazing job. Moving on to the third part of question number 7, right? Yes, amazing. Okay, brilliant. Now moving on to the third part. State the types of plants which are not found in F1, but they appeared in F2. Okay, which kind of plants did not appear in F1, but they came in F2 generation, right? So if they came in F2 generation, what was the reason? Very easy. There is only one law in the play. Okay, only one law in the play that has started, right? All you need to do is about this one law. Everything is all about that. Homozygous bacha is when you have similar, right? Similar pair. While if it is dissimilar, it is heterozygous, right? Dissimilar pair of alleles. Very good. Which plant did not come? It was the dwarf plant. Dwarf plant did not come in F1 generation. And what was the reason? Can you tell me? Yes, dominance, right? Or that means simply because in the F1 generation, all plants were tall because all of them were in heterozygous condition. And when in heterozygous condition, we know that the tall plant will express itself based on law of dominance. Amazing. So proud of all of you for doing such a brilliant job. Not easy at all, but you have been brilliant at this. So of course with this you will get 3 marks, right? So in totality the question is for 3 marks. Moving on to question number 28, right? Very quickly. With the help of one example each, distinguish between acquired and inherited, and why are these traits or experiences acquired during the entire lifetime of an individual and not inherited. So basically differentiate between acquired and inherited and why so. Now when you talk about acquired traits, we know that they are those which we acquired during our lifetime. We know that it cannot be passed because we know that there are no changes made to the genetic material, right? But at the same time, inherited traits are those which are passed on from generation to generation. And we know that hair color, skin type and many more, they are all examples of that, right? So this is one thing that you need to do. And those of you telling me deleted, it is not deleted, it is there in your syllabus.
So if you get this for 3 marks, you will have to write this down on the difference between acquired and inherited. Cannot be passed to progeny, can be passed. No changes to DNA, changes to DNA. Example, right? And why they cannot be passed? Simply because the changes are not made on the DNA. Very simple and easy. Now let's move on to the next set of questions. Question number 29. Jaldi ho jayega. Another 5-10 more minutes and done. Okay? Alright. Moving on. A blue color flower. Now you know the answer to this. Okay? You don't need explanation also. A blue color flower which is denoted as capital B is crossed with a white flower denoted like this. State what is the color of the flower you should expect in F1 generation. Now I'm telling you, all of you bachas are going to be pro in this, right? Pro at genetics. I know. By now for all these questions, you should all be able to get the answer because it's very simple. No, they've already given you that blue is dominant over white by telling you this. Yes? Okay. Anand, bacha, what happened? You are not asking me your doubt once again. I'm waiting for you to ask me the doubt. But unnecessarily, please don't, it may disrupt the decorum of the class. Very good, it's going to be blue because blue is dominant. What is the percentage of white flowers in F2 generation if F1 is pollinated? So you are saying that F1 may be pollinated it. What should we get? Very good, I've seen the answer. It is 25%, right? It's 75 and 25%. State the expected ratio of genotypes of... See? They're asking you to identify the ratio of homozygous blue flower is to heterozygous blue flower. What is the genotype here? So you will get 2 marks here. Yes? What would it be? Very good everyone, very good. Somebody is telling me 3:1. Everyone telling me 3:1. All 0. 0 marks. 0 marks for telling me 3:1. What should it be? Yes, I saw the answer. 1:2:1 is also wrong. 1:2:1 is also wrong, and I'll tell you why. Because they have not asked you for recessive trait. So that 1 is not needed, right? That 1 that is there is actually not needed at all, right? So now in this case, we see that it is 1:2. That is the answer, right? Answer is 1:2. So if you write all of this, of course you have the explanation, but if you write all of this, you will get 4 marks. Very simple and easy. And with this, of course, we are done with heredity evolution. Heredity chapter. 5 questions from our environment. I think Anand was asking me a question from this particular chapter, bacha. I will clarify your doubts. So now, in 5 minutes, fatafat ho jayega. Kriti ma'am ko hum bulayenge or we will get started, right? Yes, let's get started. So you have 4 questions. This is a very easy one. Easy peasy. 1 mark you will get, right? You have 4 ecosystem, pond, forest, aquarium, crop field, out of which is a natural ecosystem. Which are natural ecosystems. Ma'am, how 1:2? Because in a monohybrid cross, what will you get? You will get B, 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 B in this manner, right? Now here you have 2 of them, which are heterozygous, while 1 here is homozygous dominant, which is why in this case we see that it is 1:2. If you write it as BB is to BB. Now we're talking about natural ecosystem. Pond, forest, aquarium, crop field. Yes, very good everyone, very good. In this case, the correct answer here is option C. Because pond and forest is natural, these 2 are artificial, right? So this is the correct answer. Okay, alright. Now of course, moving on to the next question, which is also a MCQ question. A system of interdependent food chain, right? A system of interdependent food chain represents what? Food web, trophic levels, ecosystem or community. Yes, everybody, quickly. See, myometrium and endometrium are different layers of the uterus, right? They're different layers of the uterus. Okay, I'll explain. My biomagnification is there, right? It's there. I have a question on that also. Alright everyone, very good. The correct answer here is option A, that is food web. Now we have 3 case-based questions from this particular chapter, right? Case-based questions will come
put a star mark from this chapter, so pakka it will come. So you need to be prepared for this, right? Now here in this chapter, food chain, energy flow, and ozone formation and biomagnification you should know. And this question, I'm not reading through the paragraph, right? I am not going ahead and reading through the paragraph, but in this particular question, you need to, it talks about how there is accumulation of chemicals, right? Now, based on this, the question is, why is there a maximum concentration of pesticides in human beings, right? Why is there a concentration of pesticides in human beings? Now, you need to quickly tell me, give me the brief answer. More than enough, we have revised the whole science syllabus we'll be revising right now. Very good, because humans fall on the last trophic level. Exactly, right? Because of biomagnification. So now let's understand what is biomagnification. Now we know that food chains exist, and what is food chain? It is a linear sequence of who eats who, right? So it's a linear sequence of who eats who here. Now what happens is that if at a lower level, okay, let's say at some lower level, yes, especially in aquatic ecosystems we observe this, right? If there is some toxic substances, normally your pesticides, your heavy metals, all those, you know, effluents, when all that industrial waste and all goes into the water, we see that all of this kind of scatters around and these small phytoplankton will feed on it, right? So what happens is that if this is a phytoplankton and this is a toxic substance, it will get accumulated within the organism, because the organism does not know, once it has entered into the body, it's not able to get rid of it. So it will now start to accumulate within the body, right? Now when this organism will start to feed, right, it's constantly feeding on one organism to the other, this will get accumulated. Now for a zooplankton or maybe for a fish, it will not eat one, no, it will eat many of this. So when it feeds on many such organisms, then this will also get accumulated, right? So we see that at every one, right, as it goes from one on top of the other, it keeps getting accumulated at every level. And because humans fall towards the last trophic levels, we see that maximum accumulation takes place at that point, right? So what is magnification? As we go up, the amount of it magnifies, it becomes more and more, right? Which is why maximum concentration that is there is observed in the humans, right? Now, of course, food chain is a linear sequence. Food web is when many interconnected food chains are there. Yes? Okay. Now, the next question that is there is asking us, give one method which could be applied that will reduce the intake of pesticides, right? There's a question on 10% law. I will do that. Manisha, I will do dihybrid cross as well. But first, let's quickly finish this, right? Okay. Now, very quickly, what can we do to get rid of it, right? What can we do? We can, of course, first and foremost get rid of the peels, because we know that we spray pesticides, wash it properly, right? So that is what we understand by this. So you will get 2 marks for writing this, right? So you'll have 2 marks here and 1 mark for the second part of the question when you write it. Now there is a third part to this also, right? I think the first part was 1 mark, sorry. Various steps of the food chain represent what? Okay, that is your question. Food web, trophic levels, ecosystem, or biomagnification. So here, various steps in a food chain. So these are all different steps, no? What do they represent? They are not saying that food chain, they are not saying interconnected. Understand that. They are not saying interconnected food chain. So whoever is giving me food web as the answer, wrong. Okay. Yes, very proud of all of you. Brilliant students, right? They are all trophic levels. Exactly. Now moving on to the next one. With regard to various food chains operating in an ecosystem, man is what? Man is a consumer, man is a producer, man is both producer and consumer, or man is producer and decomposer. What is man? Is man a producer? Somebody is telling me some answers like that. Okay. What is man? Man, I can see answer C. First is consumer. I can see saying man is producer. What is a producer? Producer is an organism which produces its own food, right? So we see that man should be somebody who is, man produces his own food.
Of course not. Man is a consumer. Correct answer is option A. I think you guys got confused with where consumer is falling into picture. All of this totally you will get 4 marks. Moving on everyone, question number 33. 2 more questions and we're done with biology, right? Biology took a lot of time this time because a lot of tough questions were there. Again, this is case-based question, right? You have to read through the case-based in your exam, but due to less time, I'm going faster, right? Students in school listen to newspaper and all of that. Okay, we are talking about garbage here, right? Now suggest 2 measures to manage the garbage we produce, right? Very easy questions. You know the answers to this. What are the 2 ways? First and foremost, we need to separate your wet waste and dry waste, right? We need to make sure we separate biodegradable and degradable. Then we need to make sure that we are reducing our usage of plastic. Make sure we use, we reuse polythene bags, right? So this is something that you need to go ahead and do. Now the second thing is asking us to, second question is, as an individual, what can we do to generate less garbage? Very good. To recycle, to reuse, right? And of course to reduce our consumption, right? So how can we, this is how we go about it. Manisha, I have already discussed dihybrid cross, bacha. I have not gone in detail of it, but in dihybrid cross, basically when there are 2 characters, we know that they will independently assort, and of course in F1 generation, of course we know we get a heterozygous combination, but in F2 we see that we get about different possibilities of combination where the phenotypic ratio goes on for 9:3:3:1. So I hope I have clarified your doubt. And the last one is list 2 values the teacher instilled in his students in this episode. What was the teacher talking about? In this case, awareness about social issues and finding solution to environmental problems. So this is how you'll write the answer and make sure you mention all of it so that you will get 4 marks. And yes, you will get a break before we jump into chemistry. So don't worry about it. I'll give you a break, okay? Last 2 questions to clarify the remaining doubts, right? Last 2 questions, one is on energy flow diagram, right? So mention 3 information you get from energy flow diagram, yes? So what do we mean by energy flow diagram? Energy flow diagram talks about how energy flows in a food chain, right? So we know that in a food chain there is transfer of energy, yes, and we know that it follows the 10% law. First and foremost, we know that only 1% of the energy from the sun is actually utilized by the producers, and then they make their own food, right? But as it goes from one level to the next level, only 10% of the energy actually gets transferred. And we see that the energy does not go back, but it goes in one direction, which is why here we see that it is unidirectional, right? It's unidirectional, only 10% is utilized here, right? And of course in this case, right, we see here that if at all some toxic substances there, somebody was asking me, ma'am, how to define biomagnification. If at all there are certain toxic substances that gets accumulated at a lower levels, they can get accumulated across the food chain, right? And it magnifies as it goes across, which is why in this case we call this process as biomagnification. So you need to write these 3 points, and if you write this, you will get 2 marks. Very simple and easy. Yes? Last question. So last question, and I'm going to do ozone part and I'm going to wind it up, and I'll give you a 5-minute break before Kriti ma'am comes in. List 2 reasons to show the existence of decomposers is essential for the ecosystem, and state with reason any 2 possible consequences of elimination of decomposers from the earth, right? Very simple and easy. Ma'am, why is it unidirectional? Because the energy cannot go back. See, if you think about it, right, once we eat the plants, there is no way in which the energy that I got from the plant is going to go back to the plant, right? So we always see that it's going only in one direction, right? Very simple and easy. Now, of course, moving on, right? We know that we're talking about existence of decomposers. We know that decomposers are organisms which break down dead and decaying matter. Whether it be a producer, whether it be a primary consumer, whatever it be, it breaks down the complex substances into simple forms, right? And why are these decomposers necessary? Because first and foremost, by the process, because this breakdown that they do of dead and decaying matter is what we call
called as decomposition. And when we do this, it helps us in getting nutrients, it makes sure that all the dead organisms will be gotten rid of, right? And we also know that the decomposers help in the accumulation of garbage, right? So that is what they do. Second point is state with reason any two possible consequences of elimination of decomposers. So if we get rid of decomposers, what would happen? We know that there would be no recycling of these nutrients, and we know that there would be dead organisms that would get accumulated, right? So that is what is going to happen. Now, before I wind up on our environment, ozone formation is also very important, right? And we know that ozone is necessary. Ozone is a layer which is part of the stratosphere that protects us from harmful UV rays. And normally at that condition, we know that UV rays actually break down oxygen to form oxygen atoms. Now, when an oxygen atom reacts with an oxygen molecule that is there, it gives rise to ozone. So, these are the two steps which are involved in the formation of ozone, right? See, in the case of insectivorous plants, right, when you say it is not technically unidirectional, right, when you think about it, even in an insectivorous plant, where is it? It's getting certain nutrients, right? But in that case also, yes, you can say that maybe an insect would feed on it later, but then like when you talk about it, right, it's a further more process, because not a lot of organisms feed on those insectivorous plants also, right? So on the same group of it, which is why it's a very tricky space that is going to be there. Trophic level is the level, it is a specific level which is there in the food chain, right? So trophic level refers to a specific level of the food chain, wherein we know that you could either have producer, consumer, and so on and so forth. Yes? And for those of you who are still more confused about heredity and evolution, either check out the one shot which has been done by Ankita ma'am on the channel, or you can check out the crash course that I have done that will definitely help you out, okay? So with this, of course, everyone, we are done with biology. We are going to move on to chemistry, and I'm going to be handing it over to Kriti ma'am. But before that, of course, everyone, I'm going to give you a quick break, all right? Even if you feel like you don't want it, I'm going to give it to you. We will resume at 2:45, all right? So Jessima, we'll have the message put on screen also. You may think you don't want the break, but you will definitely need the break, okay? 2:45, let's have a break, right? Yes, we have good number of students here, and I'm sure you guys will be enthusiastic. Or if you want, we can resume at 2:50 also, right? We can, if you do you want to do it at 2:50 or 2:45 is good? Yes, I feel like it's a good 10-minute break. 10 minutes ho jayega, fatafat. So all the best to all of you. Lots of love to everybody. You guys are amazing for staying so far, so long, and a long way to go. But we will finish 100 and you will be masters in this chapter throughout your session, right? So don't worry about it. I'll see you soon. All right, everybody. Bye-bye.
So you have already revised 35 previous year questions. Biology questions आप सबने मास्टर कर लिए हैं. How many of you feeling confident now कि मैम बायो का पेपर तो बहुत अच्छा जाने वाला है? Let's see. Hi Dev, Vani, Mahi, so many of you here. Quickly, loads and loads of thumbs up if you feel that yes ma'am, the bio part is perfect now and we are all set to get started with the chemistry bit. Hi Adiba, no voice. Can you all hear me? Not audible, not audible. A lot of they're saying ma'am, voice is not audible. Guys, give me a quick thumbs up if you can hear me, if you can see me. Fatafat se, if you can see me, if you can hear me, quickly. Loads and loads of thumbs up. Can you hear me? I hope now you can hear me. Yes? Chalo, awesome. Some of you are writing, ma'am, still not audible. But most of you are saying ki ma'am, the voice is working fine now. No voice, no voice. जो बच्चे no voice कर रहे हैं, just एक बार check कर लो, क्या पता फोन की वॉल्यूम आपने धीरे करी हो. Oh, they are pranking. अच्छा मैम, you're perfectly audible. बढ़िया है. सही है, मतलब मूड सबका यहाँ पे लाइट हो चुका है. प्रैंक तुमने कर लिया है, अब मेहनत करने का टाइम आ गया है. So let's get started with chemistry. अच्छा, कितने बच्चों को डर लगता है? केमिस्ट्री से डर लगता है? I was actually confused. I was like, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, how do you people know कि मैं बोल क्या रही हूँ? Because you're posting all the thumbs up out there. चलो बढ़िया. Voice but no voice, हाँ. Now I know. Now the secret is out. A lot of you like chemistry, awesome. तो बच्चा chemistry में हमें full marks लाने हैं. अभी के अभी हम सारे important PYQs मास्टर कर लेंगे. देखो बिट बाय बिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में जब आप अच्छे से पुराने जो क्वेश्चंस है देख लोगे, बोर्ड का पैटर्न समझ लोगे, देन देयर इज नो स्टॉपिंग. देन तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे साइंस में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द केमिस्ट्री बिट एंड लेट्स डू वन थिंग. लेट्स हैव अ पोल क्वेश्चन. पोल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Let's have the poll in the chat. Let me see how many of you are actually very energetic right now. Okay, so in a double displacement reaction such as a reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution, what exactly is happening? Option A says exchange of atoms हो रहे हैं. B statement is exchange of ions हो रहे हैं. C statement is precipitate form हो रहा है. D statement is कुछ insoluble salt है जो produce हो रहा है. ये चार statements given है. You have to pick up कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. डू वी हैव द पोल इन द चैट? यस, तो फटाफट से आंसर भी मार्क कर दो. यस, a lot of you saying quickly. Let me also see how many of you are going to get the correct answer. इन्होंने आपको बता दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, मतलब दो कंपाउंड्स है और दोनों कंपाउंड्स आपको दे दिए हैं. आपको सिर्फ इन्फ्रेंस बतानी है अब इसकी. व्हाट इज हैपनिंग, देव ऑलरेडी टोल्ड यू. आई थिंक 5 seconds आर मोर देन इनफ टू फिगर दिस आउट, इजंट इट? पोल एंड करते हैं. लेट्स एंड द पोल. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड द करेक्ट आंसर. Chalo, let's see. Let's end the poll in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. All right, let's see. 68% of you marked option D, which is the correct answer. Very well done. देखो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पहली बात तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में भी गिवन है. सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है बेरियम क्लोराइड से.
एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, एटम्स नहीं हो रहे, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं यहाँ पे। और क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब जो ये बेरियम सल्फेट है ये एक्चुअली में एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। मतलब क्या हुआ? ये इनसॉल्युबल होगा, जिसे हम रेसिड्यू भी कह सकते हैं। तो यही आपको बताना था कि इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो वी हैव ऑल दीज आयंस प्रेजेंट, बेरियम क्लोराइड, सल्फेट एंड सोडियम, ये चारों आयंस आपके पास प्रेजेंट है। आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट थी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये बिल्कुल ठीक है। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यस। डबल डिस्प्लेसमेंट में इसका टाइप क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है, प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। ये वाला क्या है? प्रेसिपिटेट है। और इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, बिल्कुल बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। केमिस्ट्री हलवाई मैम, वेरी गुड, गुड टू नो दैट। यस बच्चा, द इक्वेशन इज राइट देयर। एटम्स आर नॉट एक्सचेंज, यस यश। चलो, let's have the poll again. Moving on to the next question. When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained. And the sulfuric acid so formed remains in the solution. ये कैसा रिएक्शन है? ये 2020 में आया है, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आया है। क्या ये कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डीकॉम्पोजिशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है? द पोल इज देयर, यू कैन मार्क योर आंसर। Is it, Sanjay, you feel that it's very easy? See, if you're finding previous year questions easy, then nothing like it. That means आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। Oh, chemistry is not that easy, some of you are saying. कोई बात नहीं, let's solve these questions together. आपका confidence और increase हो जाएगा। किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है? Everyone, come on. You can see the poll. Let's understand the question. मैं सिर्फ कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूं, उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर। कीवर्ड देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हमने पास किया कॉपर सल्फेट से और एक पीपीटी बन गया। आप सोचो, मेनी ऑफ यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर, बट मेनी ऑफ यू आर ऑन द रॉन्ग आंसर ऑल्सो। दो ऑप्शंस में कंफ्यूज। सो स्वीट ऑफ यू आशीष। Yes, Swami Kumar Rao, there is a poll in the chat, बच्चा। How to score Guddev अच्छे से रिविजन करके, ठीक है? चलो, let's end the poll. I think a lot of you have marked the answer. See, you have to be very quick. हम पोल जल्दी से लाएंगे और जल्दी से वो चले भी जाएगा, तो जल्दी से आपको मार्क करना है। That's how you'll work on your speed also. तो concepts finger tips पे होने चाहिए अभी, okay? And I can see, oh, B and D में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे बच्चा, ध्यान से समझेंगे डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है जो रिएक्ट कर रहा है एक कंपाउंड से, ठीक है, जिसके बाद हमारा एक अलग टाइप का कंपाउंड बन जाता है और एक अलग टाइप का एलिमेंट बन जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दोनों सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे कंपाउंड्स होते हैं। दोनों सब्सटेंसेस क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड्स होते हैं। तो कंपाउंड ही कंपाउंड से रिएक्ट करता है। कंपाउंड 1 मान लो कंपाउंड 2 से रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कंपाउंड 3 एंड कंपाउंड 4। दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट। तो याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज लाइक दिस, कि जब भी हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे। दिस इज द मेन थिंग टू रिमेंबर इन दिस, ठीक है? दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे। अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट क्या है? कंपाउंड है। इससे हमें हिंट मिल गई कि बात डबल डिस्प्लेसमेंट की हो रही है। एंड हम श्योर किससे हुए? इस प्रेसिपिटेट वर्ड से हो गए, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सो देयर यू गो। हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, कॉपर सल्फेट इज CuSO4। दोनों कंपाउंड्स है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यू कैन सी एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट है। किस टाइप का? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये, क्योंकि क्या बन रहा है? ये ब्लैक प्रेसिपिटेट भी तो बन रहा है। तो वी हैव क्रॉस चेक दिस दैट दिस एक्चुअली is going to be a double displacement reaction. Ma'am, I marked B, but later I realized it's D.
दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. समटाइम्स वी नो द आंसर बट हम फटाफट करने के चक्कर में गलत कर देते हैं. तो बच्चा ये सारे क्वेश्चंस आज आपको एक सूडो एग्जाम एनवायरनमेंट समझ के सॉल्व करना है. मानो तुम एग्जाम एनवायरनमेंट में हो, आप कैसे करोगे? उतनी सीरियसनेस के साथ, उतनी डेडिकेशन के साथ हमें करना है. ठीक है, तैयार हो? नेक्स्ट पोल लाए. चलो लेट्स हैव द नेक्स्ट पोल. बच्चा कलर ब्लैक प्रेसिपिटेट गिवन है आपको कॉपर सल्फाइड का. ठीक है, यस बच्चा, रीशा आपको मिल जाएगा पीडीएफ. बच्चा वेरी गुड. सी whenever we talk about double displacement reaction, एक बच्चा पूछ रहा है मैम इसमें रिएक्टिविटी देखनी है कि नहीं देखनी है. डिस्प्लेसमेंट में आप रिएक्टिविटी देखते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट में आप रिएक्टिविटी नहीं देखते हो. एक्सचेंज होंगे ही होंगे आयंस. ओके, चलो लेट्स हैव द नेक्स्ट पोल इन द चैट एंड क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन मतलब आप समझो 2020 में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कितने हद तक तो आंसर छुपा हुआ है. मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये आपको बताना है. तो कोई बात नहीं, हम फटाफट से बता देंगे. मैम केमिस्ट्री इज वेरी इजी. सो स्वीट ऑफ यू शिवानी एंड वेरी वेल डन. कीप वर्किंग हार्ड बिकॉज ऑफ यू. चलो जल्दी से. At least 70% of you should get the answer right. इतना तो हम कर सकते हैं. 70% I'm giving you the target. Minimum 70% of you need to get the answer right. Is it 1:1, 2:1, 4:1, 1:2? क्या होगा करेक्ट आंसर? चलो देखें. Thank you so much बच्चा. Thank you so much all of you. All right, चलो let's end the poll in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's see if you have marked the correct answer or not. Good afternoon all of you, the ones who've just joined in. Very warm welcome bachcha. Correct. So let's see where are the results of the poll. So the poll has ended. I can see some 500 kids have already marked the answer. Good. I told you 70% plus should get this right. 70% is the exact number. जिन्होंने 2:1 मार्क करा है. बच्चा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर का. मतलब क्या हो रहा है? वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. जब हम ये कर रहे हैं, ध्यान से देखो, वाटर क्या होगा? डीकम्पोज कर जाएगा. वाटर किस 2 एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है. अगर हम ध्यान से देखें, इस O2 के आगे इन अ वे तो 1 ही है ना. तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ये तो डबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन. मोल रेशियो अगर आप कंपेयर करोगे तो वो डबल ही हो गया. तो यहां पे जो आपको गैसेस दिख रही हैं, इनकी वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में बोलो या मोल की रिस्पेक्ट में बोलो, आंसर वही रहेगा. क्या रेशियो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की? 2:1. अच्छा, सम ऑफ यू आस्किंग मैम हाउ टू रिमेंबर दैट हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो है एनोड पे होता है. वेरी सिंपल वे. आई टेल यू वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर दिस. सी, कैथोड इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना? ये सबको पता है. अब हाइड्रोजन को अगर मैं H+ लेके चलूं और ऑक्सीजन को मैं ऑक्साइड आयन की फॉर्म में लिख दूं, तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? तो इस वे में आप याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जा रहा है और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे जा रहा है. इसके बाद कभी भी आप इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था? करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी, दैट इज 2:1. नाउ वी विल गेट पोल्स आफ्टर सम टाइम. दोबारा से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा से वील गेट सम पोल क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू. गेस वर्क इज सुपर्ब ना? हाँ मुझे भी यही लग रहा है. बढ़िया चल रहा है गेस वर्क भी. ओके, नाउ इन 2021 a 1 mark का क्वेश्चन वाज देयर, एंड अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आई नो ऑल ऑफ यू विल गेट फुल मार्क्स. व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? पहली बात तो आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है. रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं? इन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है. क्या है? इन्होंने बता दिया रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, बस यू हैव टू टेल क्यों है क्विकली. वेरी गुड अंशिता.
Anjita is saying, ma'am, because energy is released. Very good, Vaishnavi. Very good, Ganesh. Yes, Runa. Good, Arya. Good, Vikas. Very good, all of you. Energy क्या हो रही है? Energy release हो रही है. अब अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे respiration की, let's talk about glucose. C6H12O6 reacting with oxygen. तो glucose किससे combine कर रहा है? Oxygen. और क्या form कर रहा है वो? कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप यू कैन सी, राइट? H2O. और बहुत सारी एनर्जी इस केस में क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. अ लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज इन द प्रोसेस. क्योंकि रिलीज हो रही है, एग्जिट कर रही है. एक्सोथर्मिक का मतलब हीट जो है वो क्या कर रही है? वो एग्जिट कर रही है. EX. इस वे में आपको याद कराया था ना. एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी एग्जिट कर रही है, रिलीज हो रही है. तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है किस फॉर्म में हो रही है? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये रिलीज हो जाती है. सो अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यू हैव टू मेंशन दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट इज बेसिकली रिलीज इन दिस प्रोसेस. क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है. एंड यू कैन सपोर्ट योर आंसर विद दिस इक्वेशन एज वेल. Ma'am, after doing this, will we get good marks? 100% you'll get way better than what you would have got otherwise. हो सकता है कि आपके 100 में से साइंस में 80 बन रहे हो, ये सॉल्व करके आप 95 तक पहुंच सकते हो. हो सकता है आपके 60 बन रहे हो, ये सॉल्व करके आप 80 तक पहुंच सकते हो. ठीक है, तो ध्यान से करेंगे. यस भास्कर. कृति बच्चा मैम, हाँ करेक्ट अक्षित. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है. दैट इज द कैच. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2010 में लॉन्ग बैक ये 2 मार्कर क्वेश्चन आया है. व्हाट हैपेंस व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. आपको पहले बताना है कि क्या होगा. देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज यू हैव टू स्टेट द फिजिकल कंडीशंस जब ये रिएक्शन नहीं होगा. And you have to write the balanced equation and name the type. क्या होगा? क्या लगता है? Ma'am, in this type, how many questions are there? Ashish, there are going to be 100 questions. Heat evolve होगा. Think again. We have sodium sulfate reacting with barium chloride. What do you think is going to happen here? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह रहे हैं कुछ बच्चे, सही है. कुछ बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं. सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2. तो ये वाइट पीपीटी बन गया किसका? बेरियम सल्फेट का. एंड सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में. एक्वस मतलब इट इज इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म. ये डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है. अब कब ये रिएक्शन नहीं होगा? ये रिएक्शन तब नहीं होगा जब ये जो रिएक्टेंस है ये कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में है. बच्चा येलो पीपीटी नहीं है, ये व्हाइट पीपीटी है. ये और ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं. ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है. ठीक है, ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे. जब इनको मिक्स किया तो एक व्हाइट पीपीटी बन गया. अब ये कब रिएक्शन नहीं होगा? अगर हमने इनको सॉलिड फॉर्म में लिया तब ये रिएक्शन नहीं होगा. बच्चा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं. मतलब हमने क्या किया? हमने बेरियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, हमने सोडियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है. अब इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशंस को हमने मिक्स करा है. रिएक्शन तब नहीं होगा अगर हमने दोनों को सॉलिड फॉर्म में ले लिया. सो फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है देन दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. अच्छा, नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन. सो देयर यू गो, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. बैलेंस आप कर लोगे यहाँ पे आसानी से. नेम द टाइप. टाइप तो हमें पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट. टू बी वेरी स्पेसिफिक, व्हाट इज द टाइप? टू बी वेरी स्पेसिफिक, व्हाट डू यू थिंक इज द टाइप? मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में फर्दर, इज इट न्यूट्रलाइजेशन, इज इट प्रेसिपिटेशन, व्हाट डू यू थिंक? हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव वी डन? वी हैव डन अराउंड 40 क्वेश्चंस बच्चा. हाँ, पीपीटी बन रहा है तो क्या होगा बताओ? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या टाइप हुआ? प्रेसिपिटेशन हुआ. वेरी गुड. सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर. यस बच्चा, पीडीएफ मिल जाएगा. बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ जब हो रहा है तो एक वाइट पीपीटी बन रहा है बेरियम सल्फेट का.
ये आपने लिख दी इक्वेशन यहाँ पे। रिएक्शन कब नहीं होगा? अगर हम उनको सॉलिड स्टेट में रखेंगे तब एक्सचेंज नहीं हो पाते आयंस। किस टाइप का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है, क्योंकि क्या फॉर्म हो रहा है? एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। डोंट फॉरगेट टू बैलेंस दिस इक्वेशन। बहुत बच्चे पूछते हैं मैम बैलेंसिंग करनी है क्या? इक्वेशंस की बैलेंसिंग करनी है? इफ दे आस्क यू, if they ask you to balance, then balance. If they ask you to write the physical state, then write the physical state. Otherwise you can skip that, but balance कर ही लेना। Physical state you can still skip unless asked. Next question. Decomposition reactions require energy in the form of heat, light और electricity. हमें कुछ भी break करना है, कुछ भी decompose करना है, मुझे पेन तोड़ना है, मुझे energy चाहिए। तो पहली बात तो decomposition reactions usually क्या होते हैं? Endothermic होते हैं। कैसे reactions होते हैं usually? एंडोथर्मिक। यूजुअली यू हैव टू राइट वन इक्वेशन जहां पे हमने हीट सप्लाई करी है, एक जिसमें लाइट करी है, एक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करी है। 2018 में ये 3 मार्कर क्वेश्चन आया है। जस्ट इमेजिन कि कैसे फ्री के 3 मार्क्स है, जिसके सेट में ये क्वेश्चन आ गया, यू विल बी सो वेरी हैप्पी। इट्स एक्चुअली वेरी मासूम क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। मोस्टली यही होता है। ठीक है, तो अगर थर्मल डिकॉम्पोजिशन की बात हम करते हैं तो वो होता है हीट की प्रेजेंस में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में आप डिकम्पोज कर सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फोटोलिटिक डिकॉम्पोजिशन होता है लाइट की प्रेजेंस में। जैसे आपने AgCl सिल्वर क्लोराइड ले लिया, वो सिल्वर क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकॉम्पोजिशन में हमने यूज किया इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि वाटर का केस अभी हमने देखा था। सो यू कैन मेंशन दीज 3 आर द इजीएस्ट इक्वेशंस टू रिमेंबर। मैम गेमर सिंह फेरस सल्फेट भी तो होता है। हाँ बच्चा, फेरस सल्फेट भी होता है। सो यू कैन मेंशन यहाँ पे फेरस सल्फेट की भी आप डिकॉम्पोजिशन, थर्मल डिकॉम्पोजिशन दिखा सकते हो। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन जाएगा। ठीक है, अब यू कैन शो दिस वन। यस हर्षल, लेड नाइट्रेट भी दिखा सकते हो, वो भी थर्मल ही है। अगर आपको लेड नाइट्रेट दिखाना है, दैट इज ऑल्सो थर्मल, you can show that also. Lead oxide, NO2, O2. अच्छा, इसमें ब्राउन फ्यूम्स किसकी वजह से हैं ये भी बता दो साथ में। ब्राउन फ्यूम्स जो हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं वो ब्रेक कर रहा है, ब्राउन फ्यूम्स दिख रहे हैं, वो किसकी वजह से? व्हाट डू यू थिंक? किसकी वजह से आ रहे हैं वो? थिंक अबाउट दिस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो रिमेंबर दिस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। अच्छा, फोटोलिटिक में यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट सिल्वर ब्रोमाइड। आप AgBr की भी इक्वेशन दे सकते हो लाइट की प्रेजेंस में। क्या हो जाएगा? सिल्वर और ब्रोमीन बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। एंड जहां तक हमारे थर्ड इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, अगेन यहां पे आप वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हो। आपने NaCl का भी देखा है मेटल्स नॉन मेटल्स में, यू कैन गिव दैट एग्जाम्पल एज वेल। मोल्टन फॉर्म में आप कुछ भी ले लोगे अगर, यू कैन गिव दोस एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट वाटर सबसे इजीएस्ट है टू रिमेंबर। सो देयर यू गो। सो दिस इज हाउ योर आंसर शीट शुड लुक लाइक। मतलब आप ये समझ लो, ये जो आपके 1, 1, 1 टोटल 3 मार्क्स हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इजी टू रिमेंबर है ये आदर्श। इवन आप नोट करोगे HCl की भी ऐसी ही होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात कर रही हूं, एसिड नहीं। ठीक है मैम, इज इट नेसेसरी टू बैलेंस द इक्वेशन? बच्चा बैलेंसिंग पूछी है तो करनी ही है। अगर सिंपल लगता है तो कर दो, अगर टाइम कंज्यूमिंग लगता है तो लास्ट के लिए छोड़ देना। थर्माइट रिएक्शन आएगा बच्चा, अभी थोड़ी देर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, इन दिस रिएक्शन MnO2 प्लस HCl का रिएक्शन हो रहा है। मैंगनीज क्लोराइड H2 मतलब वाटर एंड क्लोरीन बन रहा है। कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है? फटाफट से बता देंगे। कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है? यस कुणाल, लेड नाइट्रेट दे सकते हैं। विच कंपाउंड? बच्चा थर्माइट आ जाएगा, अभी क्वेश्चंस में कराएंगे, डोंट वरी।
विच कंपाउंड, बच्चा थर्माइट आ जाएगा अभी, क्वेश्चंस में कराएंगे, डोंट वरी. 3 marks in your pocket for sure, yes. वेरी गुड. HCl जो है आपका वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है. गुड. बच्चा मैंने एक बात कही थी, हमेशा आपको रिएक्टेंट साइड देखना है. आंसर देने के लिए रिएक्टेंट साइड देखना है, प्रोडक्ट साइड तो देखना ही नहीं है. तो इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है. अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है. MnO2 जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन. ठीक है. मगर अगर मैं HCl की बात करूं, HCl से वो बन रहा है Cl2, मतलब क्या यहां पे लूज हो रहा है? यहां पे हाइड्रोजन लूज हो रहा है. सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. So very well done, you people have figured out which is the substance getting oxidized, which is the substance getting reduced. So there you go, MnO2 जो है वो reduce हो रहा है, HCl oxidize हो रहा है, और आपको define करना है oxidation and reduction based on this. So oxidation क्या होता है? तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है या हाइड्रोजन लूज हो रहा है. रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन गेन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन लूज हो रहा है. यहां पे आप देखो, इस इक्वेशन में हमने ऑक्सीडेशन को विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन समझाया एंड हमने रिडक्शन को विद रिस्पेक्ट टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन समझाया हुआ है. दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डेफिनेटली यस. हाउ टू नो कि मैम एनोड कैथोड पे कौन सी गैसेस रिलीज होंगी? बच्चा गो बैक 10 मिनट्स पीछे जाओ, आपको दिख जाएगा आंसर. चलो, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर. आपने बता दिया HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO2 रिड्यूस हो रहा है एंड यू हैव डिफाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस ऑक्सीडेशन है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन होता है. नेक्स्ट, identify the type of chemical reaction taking place in each of the following cases and write a balanced equation. आपको टाइप बतानी है और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है. 2019 में आया 3 मार्क्स का. ऑल दीज 3 मार्कर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी स्कोरिंग. बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ध्यान से देखो. मुझे नंबर 1 बताओ यहाँ पे क्या है? जिंक का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ हो रहा है टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर. क्या टाइप है? बैलेंस इक्वेशन मैं आपको बताऊंगी, टाइप आप मुझे बताओगे. बच्चा अल्कोहल तो सिर्फ कैटेगरी आप बता रहे हो फंक्शनल ग्रुप की. फर्दर आपको उसको नेम करना है. इथेनॉल है, मिथेनॉल है. कुछ बच्चे कह रहे डिकम्पोजिशन, कुछ बच्चे कह रहे डिस्प्लेसमेंट. ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे. वेरी गुड. डिस्प्लेसमेंट देखो, एक आपको एलिमेंट दिख रहा है, एक आपको कंपाउंड दिख रहा है. मैंने आपको इजी वे बताया है. एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है. दैट्स योर हिंट कि क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. और जिंक की अगर हम बात करें, जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? वो कहीं ना कहीं सिल्वर से ज्यादा है. वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है. वो सिल्वर को उसकी जगह से हटा देगा और क्या बना देगा? जिंक नाइट्रेट बना देगा और सिल्वर विल बी लेफ्ट बिहाइंड. सो ये कैसा रिएक्शन हुआ है? दिस इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. अच्छा, नाउ टेल मी अबाउट द नेक्स्ट वन. एंड एवरीवन प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू बैलेंस दिस. देखो हर जगह पे यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन. सेकेंड क्या है? पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट. टेल मी दिस वन बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गेट कंफ्यूज. बहुत बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मैम डिस्प्लेसमेंट होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगा. तो देखो इस क्वेश्चन में ये करके, इफ यू आर एबल टू आंसर दिस करेक्टली, यू नो द आंसर देन. डबल डिस्प्लेसमेंट होगा पार्ट नंबर 2. वेरी गुड. पोटेशियम आयोडाइड, इट्स अ कंपाउंड reacting with lead nitrate, that's also a compound. compound हमें हिंट मिल रही कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. we've cross checked the products. yes, exchange of ions हो रहे हैं. तो आपके पास क्या बन गया? आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और लेड आयोडाइड बन गया. ये जो लेड आयोडाइड है ये एक्चुअली में येलो प्रेसिपिटेट होता है. बहुत बच्चे बेरियम सल्फेट को येलो पीपीटी बोल रहे थे. यहाँ पे लेड आयोडाइड का जो है दैट इज द येलो पीपीटी दैट इज बीइंग फॉर्म्ड.
ठीक है, सो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, ये इन अ वे डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड उसमें भी टू बी वेरी स्पेसिफिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ. कैसा रिएक्शन हुआ? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, एक येलो इनसॉल्युबल रेजिड्यू बन रहा है लेड आयोडाइड का. यस, डू नॉट मेंशन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप प्रेसिपिटेशन है. You can in the bracket mention कि double displacement है, to be very specific it is a precipitation reaction. Yes, बिल्कुल, 3 marks in your pocket again. So this is how you have to present your answer. ध्यान से देखेंगे, आपने reaction दिखा दिया, balanced equation लिख दी और type लिख दिया. Second equation के लिए भी आपने balanced equation लिखी है, you have balanced it and you have mentioned the type. ठीक है, यहां तक क्लियर है? आशीष टेलीग्राम पे क्रिस्टल क्लियर, ऑसम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2020 में 3 मार्कर आया हुआ है. 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What change takes place on heating? ध्यान से समझेंगे. कॉपर लिया हमने और उसे हमने हीट किया, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ऑक्सीजन वहां पे कहीं ना कहीं हमारे रिएक्टेंट साइड पे है, कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड. तो क्या चेंज आया हीटिंग पे? ये चेंज आया कि पहले जो कॉपर ब्राउन कलर का होता है, हमने कॉपर की वायर्स देखी है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है. जैसे ही हमने उसे हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. चलो, अब इस कॉपर, अब हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, इस कॉपर ऑक्साइड से कर देते हैं. ठीक है, कॉपर हमारे पास यहां पे है, इस कॉपर ऑक्साइड से हमने हाइड्रोजन पास कर दी. जैसे ही हमने हाइड्रोजन पास करी, हमने नोट किया कि वो जो कॉपर है वो हमें वापस मिल गया. तो वो जो ब्लैक सब्सटेंस था वो वापस से किस कलर में कन्वर्ट हो गया? ब्राउन कॉपर प्लस H2O. तो यू हैव टू गिव द केमिकल इक्वेशंस. ये दोनों आपको इक्वेशंस देनी है. ठीक है, आपको नेम बताना है. क्या क्या नेम है? दिस इज कॉपर, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड वाटर. ठीक है, एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. कलर क्या हुआ हमारा? कॉपर ऑक्साइड का कलर है ब्लैक एंड कॉपर का कलर है रेडिश ब्राउन. ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर. मैम, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है बच्चा? लाइट ब्लू. यस, यस आरव, बिल्कुल. सो देयर यू गो, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर. आपको क्या क्या करना था? What change is taking place ये आपको बताना था. चेंज हमने बता दिया with the help of these two equations. So you've given the equation, you've given the name. आपने name दे दिया, एक जगह कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, एक जगह कॉपर बन रहा है, and you've given the color as well. तो ये black है and ये brown है, and with this you have in a way gained 3 marks. अच्छा, इस चैप्टर में अब डर लग रहा है कि नहीं? हाँ, एक्टिविटी वाला. ये रुद्रांशु, करेक्ट. डर लग रहा है इस चैप्टर में कि नहीं लग रहा? अगर नहीं लग रहा तो नहीं, बहुत सारे स्माइली हो जाएं चैट में, क्योंकि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQs, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए हैं. एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के. अब हम PYQ सॉल्व करेंगे. वी विल स्टार्ट विद दिस 1 मार्कर क्वेश्चन दैट इज देयर, दैट केम इन 2020 वाला पेपर. So let's do one thing. Let's have the poll in the chat. एक poll ले आते हैं. MCQ questions में I get to know how much you people know. ठीक है, एक poll ले आते हैं chat में. And secondly, you all can meanwhile give me loads of smileys and thumbs up if chapter 1. अब डर नहीं लग रहा मैम, chapter 1 के ऐसे questions आए हुए हैं, हम 100% आंसर कर लेंगे. Very good all of you. चलो, let's have the poll in the chat now. बिल्कुल. Let's start with the next question. That is question number 45. Chemical formula of plaster of Paris is CaSO4.2H2O, CaSO4.H2O, CaSO4.half-H2O, CaSO4. आपके पास चैट में पोल आने वाला है, आप उस पोल में अपना आंसर मार्क कर सकते हो. You can mark the answer.
Yes, so you can see the poll and you can mark the answer. Let me also see acid bases and salts जो इतना कलरफुल चैप्टर है, जो केमिस्ट्री को इतना कलरफुल बना रहा है, उसमें आपकी मास्टरी कैसी है? नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. That's why we are here. हम ऐसे ही नहीं बोलते we've got you covered. We've actually got you covered. We are actually here with 100 most important questions. And imagine the kind of practice you people are getting today. Ma'am, to me this question is अच्छा बच्ची हो गया. अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है, बट देखो 2020 में आया हुआ है. I think a lot of you marked the answer, and we don't need more time to answer this, है ना? तो let's end the poll. 5, 4, 3, 2, 1. Let's end the poll. Let's see what you people have marked. चलो, poll is over. देखते हैं आप लोगों ने क्या मार्क करा है. Let's look at the results now. Yes, बच्चा, पोल एंड हो गया है. I hope 70% plus students have got this right. Very good, 88% of you marked this. देखो एक चीज तो सबसे पहले I'll tell you, इसमें most common mistakes जो हैं वो क्या हो सकती है ऐसे questions में. सबसे पहले बहुत बच्चे POP को क्या लेकर चलते हैं? कॉपर सल्फेट समझ लेते हैं. That is wrong. पहले तो समझो कि कैल्शियम सल्फेट की बात हो रही है, कॉपर सल्फेट की नहीं हो रही. दूसरे बहुत बच्चे इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट समझ लेते हैं. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. वो भी गलत है. वो क्या होता है? वो जिप्सम होता है. तो ये जो हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जिसको हम जिप्सम कहते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 373 केल्विन पे जब हम हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, प्लस ऑफ कोर्स 1.5 H2O इज सेपरेट. ठीक है. ये जो है हमारा, ये पीओपी है, और ये जो है ये क्या है? जिप्सम है. ध्यान रखेंगे बच्चा, डाइहाइड्रेट इज जिप्सम, जिसमें हेमी हाफ है वो पीओपी है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस, वेरी गुड. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स अगेन हैव द पोल. फिर से पोल लाते हैं चैट में. बच्चा जिसकी भी कॉन्सेप्चुअल सेशंस मिस हुए हैं, देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन द चैनल. प्लीज गो हेड, सारे वन शॉट सेशंस देखो. सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर्ड हैं, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड है, पीवाईक्यूज ऑलरेडी कवर्ड है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज अभी कवर हो रहे हैं. सैंपल पेपर इज देयर, प्रैक्टिस पेपर इज देयर, और लॉट ऑफ थिंग्स फॉर प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगी वहां पे. द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड. हाँ जी, देखो हमें ये एसिड चाहिए होता है थोड़ा सा डाइजेशन के लिए. अब आपको ये बताना है कि क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है कि एसिटिक एसिड है. क्या है करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से. रॉक सॉल्ट का भी क्वेश्चन है, डोंट वरी. जो बच्चे कह रहे हैं मैम रॉक सॉल्ट क्या होता है, उस पर भी क्वेश्चन है. चलो लेट्स एंड द पोल. पोल एंड करते हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज इनफ टाइम इस क्वेश्चन के लिए. दिस इज बच्चा CBSE एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है यहाँ पे. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बच्ची हो क्या? सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं क्या? बट यू शुड बी हैप्पी. 2020 में देखो, 2020 आई थिंक वाज अ गुड ईयर इन दिस रिस्पेक्ट, वेयर द क्वेश्चंस आर वेरी मैनेजेबल. Alright, let's see. So, for this question, 89% of you marked hydrochloric acid. Very good. देखो, HCl क्या करता है? HCl हमें डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में आप देखते होगे, लैक्टिक एसिड मिल्क, कर्ड, इन सब में है. एसिटिक एसिड विनेगर में है. HCl जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, मगर अगर एक्सेस हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो एसिडिटी भी कॉज कर देता है. अगर एक्सेस में होगा तो एसिडिटी भी कॉज कर देगा, और अगर एसिडिटी हो गई तो हम क्या लेंगे? हम एंटासिड लेंगे उस केस में.
क्या लेंगे हम? एंटासिड लेंगे, चाहे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लें, बेकिंग सोडा ले लें, ठीक है। तो कौन सा एसिड है जो डाइजेशन में हमें हेल्प कर रहा है? इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl। जो बच्चे इसको HCl लिख रहे हैं उनको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। बच्चा केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपर केस में लिख लो कि लोअर केस में। अगर आपने CO लिखा तो ये कार्बन मोनोक्साइड है, CO विथ स्मॉल o लिखा तो कोबाल्ट है। बी वेरी केयरफुल कि आप कैसे लिख रहे हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर-अल्कली प्रोसेस एंड राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। अगेन 2023 मार्क का क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, in this chlor-alkali process what is being formed? बन क्या रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। किसकी प्रेपरेशन की बात हो रही है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। आपको बताना है क्लोर-अल्कली प्रोसेस के जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें हमने इनिशियली क्या लिया है? हमने लिया है ब्राइन। ब्राइन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड NaCl इन वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल गए। हमें क्या 3 प्रोडक्ट्स मिले? बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फॉर द वंस हु आस्क मी मैम इज दिस इक्वेशन इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस क्लोर-अल्कली प्रोसेस का। 1 2 3 ये हमारे तीनों प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। अब आप नोट करोगे क्लोरीन जो है वो एनोड के पास हमें मिलता है, हाइड्रोजन कैथोड के पास मिलता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर कैथोड हमें मिलता है। इनके एक एक यूज लिखने हैं आपको। हाइड्रोजन की कैलोरिफिक वैल्यू कितनी हाई होती है, तो हमें पता है कि वो एज अ फ्यूल तो यूज होता ही होगा। प्लस मार्जरीन जो बटर जैसा दिखता है उसमें भी यूज होता है। क्लोरीन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। PVC प्लास्टिक्स में भी यूज होता है। NaOH आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, पेपर मेकिंग में, हमने कार्बन में भी पढ़ लिया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स में भी काम आता है। सोप्स बनाने में ऑल्सो इट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। हाँ, हाई कैलोरिफिक वैल्यू ग्रेड 8 में पढ़ा था ना, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब हम इसे बर्न करते हैं, जब हम इस फ्यूल को बर्न करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। बिल्कुल, तो बस इसके साथ यही हमारा आंसर खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था ये चैप्टर 2 से। आपको तीनों प्रोडक्ट्स बताने जो हाफ मार्क के होंगे। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको हाफ मार्क मिलेगा, क्लोरीन गैस लिखने का हाफ मार्क, हाइड्रोजन गैस लिखने का हाफ मार्क, एंड 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इनके यूजेस लिखने के। तो हाफ। सो टोटल क्या हुआ? टोटल आपके 3 मार्क्स हो गए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, मिही बटर जैसा होता है वो, ओके। यस, टू मेक सोप्स काशवी, बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट? बहुत बच्चे सोडियम कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा को सेम समझते हैं। वॉशिंग सोडा जब हम उनसे पूछते हैं वो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, बट ये सेम नहीं होते। पहले तो जिसको नहीं पता वो इस क्वेश्चन को समझो। व्हाई इज क्लोर-अल्कली प्रोसेस नेम्ड एज? विहान, क्योंकि उसमें क्लोरीन भी प्रोड्यूस हो रहा है और एक एल्कली भी प्रोड्यूस हो रहा है, NaOH प्रोड्यूस हो रहा है ना, that's an alkali, that's soluble in water, okay, that's why we are naming the process as chlor-alkali. Coming back to this question, पहली बात तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कैसे बनेगा? फटाफट से चैट में जल्दी से बताएंगे मुझे। बिल्कुल, वाटर ऐड कर दो, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दो। सोडियम कार्बोनेट में जब हम वाटर ऐड करते हैं, मतलब डेकाहाइड्रेट हो रहा है ये। कितना वाटर ऐड कर रहे हैं? 10 H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 10 है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। ये वॉशिंग सोडा होता है। तो आपने बता दिया हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। गिव इट्स इक्वेशन, आपने इक्वेशन भी दे दी। किस टाइप का सॉल्ट है? अब देखो, टाइप जब पूछते हैं ना, आपको दोनों बातें मेंशन करनी है। पहली बात तो ये कि ये हाइड्रेटेड है, इनहाइड्रस नहीं है, हाइड्रेटेड है, इसमें पानी
इंक्लूडेड है, एनहाइड्रस मतलब उसमें वाटर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हाइड्रेटेड है। दूसरा, अगर आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की बात करते हो, वो बेसिक इन नेचर है। कैसे पता चल रहा है? अगर मैं सिर्फ सोडियम कार्बोनेट की बात करूं, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में थोड़ा सा रफ वर्क करो। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड से बना होगा, है ना? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड मतलब बेसिक होगा नेचर उसका, तो उसमें जब वाटर ऐड करोगे अल्टीमेटली तब भी वो क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। तो वॉशिंग सोडा का नेचर भी क्या है? बेसिक है। और ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंशन अबाउट द फैक्ट दैट इट्स हाइड्रेटेड। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस दैट कैन बी रिमूव्ड यूजिंग वॉशिंग सोडा। तो याद रखेंगे जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो हम रिमूव कर सकते हैं वॉशिंग सोडा की हेल्प से। हार्डनेस का मतलब क्या? लैदर फॉर्म नहीं हो रही। हार्डनेस का मतलब नो लैदर इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है? हार्डनेस का मतलब क्या होगा? नो लैदर इज फॉर्म्ड, फोम नहीं बन रही, झाग नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट है? कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट है और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है। परमानेंट हार्डनेस में आप लेते हो कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ठीक है? सो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉशिंग सोडा। टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए अगर पूछेंगे तो बच्चा बॉइलिंग मेंशन कर सकते हो। अगर टेम्पररी हार्डनेस है उसको रिमूव करना है तो बॉइलिंग, परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करना है तो वॉशिंग सोडा, ठीक है? ये याद रखेंगे। सो देयर यू गो, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसे सोडा ऐश भी कहते हैं, इसमें हमने वाटर डिसॉल्व किया, कितने 10 मॉलिक्यूल्स करें तो हमारे पास वॉशिंग सोडा आ गया। आपने इक्वेशन लिख दी, आपने बता दिया बेसिक सॉल्ट है और हाइड्रेटेड भी है, ठीक है? और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, अगेन मैम लैदर क्या है? झाग बनना, फोम, ठीक है? टैन जोश बच्चा कुछ भी नहीं है, आप वाटर को ब्रेक करो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है? वाटर पास कर रहे हो। नाउ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2019 में 3 मार्क्स का देखो क्या क्वेश्चन आया। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम लड्डू क्वेश्चन है। व्हाट इज द पीएच स्केल मेजर? पीएच स्केल क्या मेजर करता है बच्चा? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है। क्या करता है? H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है। रेंज क्या है? 0 से 14। बहुत बच्चे 1 से 14 लिखते हैं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। 1 से 14 मत लिखना, ध्यान रखना 0 से 14 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। जो वैल्यू लोएस्ट है वो क्या हुई? मोस्ट एसिडिक हुई। जो वैल्यू हाईएस्ट है वो क्या हुई? मोस्ट बेसिक हुई। तो सिग्निफिकेंस भी हमने बता दिया। हाँ, हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन, पीएच का मतलब क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस। सोरेनसन ने ये स्केल हमें दिया है मेजर करने के लिए। 0 से 14 की रेंज है। 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक नेचर की तरफ हम जा रहे हैं, 7 से ज्यादा बेसिक नेचर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल अगर कम हो गया, 0 हो गया तो मोस्ट एसिडिक, बिल्कुल बढ़ गया 14 हो गया तो मोस्ट बेसिक। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर। यू हैव टू टेल दैट द पीएच स्केल मेजर्स द एसिडिक और बेसिक नेचर, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे वो बताता है। रेंज 0 से 14 है। हाईएस्ट वैल्यू मतलब मोस्ट बेसिक, लोएस्ट वैल्यू मतलब मोस्ट एसिडिक। किस किस के इसमें 3 में से 3 आने वाले हैं? मुझे फटाफट से चैट में बताओ। इफ यू गोना गेट 3 आउट ऑफ 3, सार्थक 0, फटाफट से थम्स अप होना चाहिए चैट में, जल्दी से बताएंगे। मैम बेस को अल्कली बोल सकते हैं अगर वो बेस सॉल्युबल है इन वाटर में, देन यस। जलेबी क्वेश्चन, जलेबी तो नहीं, जलेबी तो थोड़ी टेढ़ी होती है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलो, हाँ, जैसे जैसे पीएच 7 से कम होता जा रहा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक्स बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। इफ एट होम योर मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, तो कैसे इफेक्ट हो जाएगा? कैसे केक का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा और क्यों हो जाएगा? जल्दी से चैट में। गुड, बिटर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। देखो, हमने अगर बेकिंग सोडा यूज कर लिया तो उससे केक क्या हो जाएगा? बिटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
जब आप बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हो तो क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, जो कैसा है? बेसिक इन नेचर है। कैसा नेचर है? बेसिक है। क्यों? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, बेसिक नेचर हो गया इसका। तो केक को क्या बना देगा? बिटर बना देगा। तो हम बेकिंग सोडा नहीं यूज करते केक बनाने में, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। अच्छा, अब इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में? कुछ भी नहीं करना, माइल्ड एसिड ऐड कर देना, जैसे कि टार्टारिक एसिड। जैसे ही हम ये ऐड कर देंगे क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, केक जो है वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी क्यों हो रहा है? जैसे ही इस बेकिंग पाउडर को आप हीट करते हो या वाटर से मिक्स करते हो, देखो हम केक बनाने के लिए ओवन में रखते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड सम हीट, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। और यही जो गैस है ये रिस्पॉन्सिबल है केक को राइस कराने में, स्पॉन्जी बनाने में, सॉफ्ट बनाने में, फ्लफी बनाने में। ठीक है, so this is the reason why the cake is soft and spongy. So this is how you have to mention the answer. आपने बता दिया कि अगर हमने बेकिंग सोडा लिया तो बिटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बन रहा है वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, ये क्या हुआ? बेसिक इन नेचर हुआ। बेकिंग सोडा को अगर बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करना है तो टार्टारिक एसिड ऐड कर देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो केक को स्पॉन्जी बना रहा है। बटर क्वेश्चन था मैम, यार ये तो बड़ा सही कमेंट है मैम, ये तो बटर क्वेश्चन है। हाँ, स्पॉन्जी, सॉफ्ट, फ्लफी सब एक ही बात है। राइस बेसिकली करा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स? टेक मैग्नीशियम एज मेटल एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो, जब भी आपको रेफरेंस के लिए भास्कर HCl, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बच्चा आएगा, वो भी आगे। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स? यू हैव टू टेक मैग्नीशियम एज द मेटल। नाउ व्हेनेवर दे टेल यू कौन सा मेटल लेकर चलना है, ये चीज अच्छे से याद रखना कि उसके रिस्पेक्ट में ही आप इक्वेशंस लिखो। ठीक है, चलो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है तो बैलेंस करना नहीं भूलेंगे, एंड मेथड बताना है उस गैस को आइडेंटिफाई करने का जो रिलीज हो रही है। मेटल कार्बोनेट लेंगे या बाइकार्बोनेट लेंगे? पहली बात तो याद रखना, बाइकार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात है। ठीक है, तो मैं इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी कह सकती हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकती हूँ, इट्स द सेम थिंग। जब मैं एसिड्स के साथ रिएक्ट कराऊंगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये हमारे 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। चाहे मैं कार्बोनेट लूं चाहे मैं बाइकार्बोनेट लूं, मेरे प्रोडक्ट्स तो सेम है। क्या अलग है? जल्दी से बताएंगे मुझे चैट में, अलग क्या है? सेम तो मैंने बता दिया, प्रोडक्ट्स आर द सेम। दोनों केसेस में मैग्नीशियम क्लोराइड, सेम सॉल्ट बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। अलग क्या है? क्यों इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है? व्हाट डू यू थिंक? नो डिवाइन, नो बच्चा, रोज इज फूल। अच्छा, बढ़िया। लाइम वाटर टेस्ट तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन हो गया। एवरीबडी सिंग मैम एवरीथिंग इज सेम। मैम हीट में कुछ फर्क है? नहीं बच्चा, ना सब कुछ सेम है ना हीट में फर्क है। डिफरेंस देखो कहां है। अगर मैं बोलूं सेम क्या है इन दोनों इक्वेशन में, सेम क्या है? प्रोडक्ट्स सेम है। सेम क्या है? प्रोडक्ट्स आर द सेम। डिफरेंट क्या है? जिस अमाउंट में वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो डिफरेंट है। ध्यान से देखेंगे, बैलेंसिंग, ये सेम बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स आर द सेम। अब अगर मैं बोलूं अमाउंट अलग है, तो यहां पे देखो अमाउंट, इसको मैं 1 बोल सकती हूं। अमाउंट, जिस अमाउंट में वो बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो अलग है। सो याद रखेंगे, 1 सिमिलैरिटी 1 डिफरेंस इन दीज 2 इक्वेशंस। जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हम एसिड से करा रहे हैं, सेम क्या है? हमारे प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं। डिफरेंट क्या है? जिस अमाउंट में वो बन रहे हैं वो अलग है। क्वांटिटी, यस करेक्ट,
वो अलग है। अब जो गैस रिलीज हो गई है वो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, सब बच्चों ने पहले बता दिया। मैम लाइम वाटर टेस्ट कर देंगे इसका। लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है लाइम वाटर? लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मिल्की किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। मगर अगर इसमें आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दिया, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाय कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोनेट से कैल्शियम बाय कार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो बाय कार्बोनेट होता है ये सोल्यूबल होता है, तो जो ये मिल्कीनेस है, ये जो मिल्कीनेस है, इसको क्या हो जाएगा? ये डिसअपियर कर जाएगी। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। मिल्कीनेस डिसअपियर कर जाएगी जब भी हमने ये एक्सेस में लिया है। तभी आप लैब में जब ये एक्सपेरिमेंट करते हो, आप ये नोट करते होगे, जब हम ये लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हाट डू वी नोटिस? वी नोटिस कि हमने लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, हमें मिल्कीनेस दिख रही है, बट देन सडनली डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि उस मोमेंट क्या हो रहा है? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास हो गया, तो कार्बोनेट की जगह बाय कार्बोनेट बन गया जो सॉल्युबल होता है, और मिल्कीनेस को टाटा सी बाय बाय कर दो। तो जब आप ये लैब में परफॉर्म करते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये लो बच्चा, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर। इस वे में हम आंसर को प्रेजेंट करेंगे। जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाने के लिए। दोनों इक्वेशंस आपने मैग्नीशियम के साथ दे दी है। फिर आपने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए हम उसे लाइम वाटर से पास करेंगे, तो लाइम वाटर टेस्ट करेंगे जो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि वही से ही हमें अमाउंट पता चलेगा कि अलग है। यस मिहिर, CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सी वी आर ऑलरेडी डन विद हाफ द क्वेश्चंस। तुम्हें कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं? मैम थोड़ा टफ लग रहा है, कोई बात नहीं, समझते ही चलो। दिस इज अ क्वेश्चन दैट्स अ 2 मार्कर, मतलब ईच पार्ट कैरीज हाफ अ मार्क। हर पार्ट का हाफ मार्क है। 2016 में आया है, 2016 में आया हुआ है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू ड्रॉप व्हेन यू ड्रॉप सम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड टू द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब्स? अब देखते हैं कि क्या है, ठीक है? नो बच्चा, आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन, डोंट वरी। मैम इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैम इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आर यू श्योर? सो दिस इज समथिंग दैट यू पीपल आर आस्किंग। बच्चा ये वो हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रिपीटेडली, ये कर लोगे तो मेजर चंक आपके बोर्ड एग्जाम्स का इससे होगा। बट ऐसा नहीं है कि इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, इसके बाहर हो सकता है। बहुत ज्यादा सिलेबस आपका है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, बट ये करके आप अपने बहुत सारे मार्क्स सिक्योर कर रहे हो। ओके चलो, फिनोप्थिलीन में अगर हम एसिड डालते हैं, एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, तो क्या होगा? वो कलरलेस से कलरलेस ही रहेगा, मतलब वो जो ओरिजिनल कलर उसका कलरलेस है, ठीक है? एसिड में वो कलर चेंज करेगा नहीं, उसमें भी वो कलरलेस ही रहेगा। डिस्टिल वाटर में अगर हम डालेंगे, डिस्टिल वाटर में वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, वो डिसॉल्व कर जाएगा कंप्लीटली। क्या है वो? सॉल्युबल, ठीक है? तो क्लियर सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा अब ये क्या है? ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड होता है ना? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ऑरेंज करेगा। डोंट मेंशन रेड हियर, प्लीज बी वेरी केयरफुल, रेड मत लिखाना। स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या होगा? देखो हमारे पास एसिटिक एसिड है, दैट इज CH3COOH। इसका रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। और ये जो CO2 गैस हमारी फॉर्म हो जाएगी, इसकी वजह से ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएंगी, मतलब
बहुत जल्दी से गैस इवॉल्व हो जाएगी, स्पीड से इवॉल्व हो जाएगी, कुछ आपको साउंड भी सुनाई देगी, रैपिड एवोल्यूशन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। हर्षल नो, ऑरेंज बच्चा। ऑरेंजिश येलो फिर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर। फेनोप्थलीन में क्या होगा, इट विल रिमेन कलरलेस, एसिटिक एसिड डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, येलोइश ऑरेंजिश सा कलर देगा, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ब्रिस्क एफोवेसेंस आएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। ये तो बहुत सिंपल है, फटाफट से मुझे चैट में बता दो। सोडियम क्लोराइड किससे ऑब्टेन हो रही है, क्या एसिड प्रेजेंट है उसमें, क्या बेस प्रेजेंट है, NaCl। देखो यहां लिखो Na, इजी वे, यहां लिखो Cl, Na का बना दो बेस, Na का बेस क्या होगा, OH, Cl का बना दो एसिड, तो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, सो सिंपल। मैम आप ब्रेक दोगे, बिल्कुल केमिस्ट्री खत्म होते ही आपको ब्रेक मिल जाएगी। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, तो बस आपको सबसे पहले बता देना है कि कौन सा एसिड बेस हम यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaCl बन रहा है। एसिड एंड बेस आइडेंटिफाई कर लिया, अब टाइप बताना है। टाइप है न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगी वो क्या होगी, वो न्यूट्रल होगी, वो क्या होगी, वो न्यूट्रल होगी। When is it called rock salt and how is it formed? रॉक सॉल्ट कैसे बनती है और उसे रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो ये नेचुरली अकर करता है सी वाटर में और रॉक सॉल्ट की तरह, कैसे, इसके लार्ज क्रिस्टल्स अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स की तरह हमें मिलते हैं। अब हम इसे रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं, जब इनमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड हो जाती है, मान लो कि मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है, ये इंप्योरिटीज हैं। जब इनमें कुछ इंप्योरिटीज जो हैं वो ऐड हो जाती है, ओरिजिनली तो व्हाइट कलर का है NaCl, पर जब इसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड हो जाती है तो इसका कलर हो जाता है ब्राउन, और तब हम इसे क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। कैसे बनता है, जब जो सी है, जो बहुत पुरानी, बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, वो सी जब ड्राई अप होती है, जब उसमें कहीं ना कहीं इवेपोरेशन हो रहा है, सो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट आर फॉर्म एंड सीज ऑफ बायगॉन एजेस, मतलब दे आर एग्जिस्टिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो जो सी है उसका जब पानी इवेपोरेट करता है, वो जब ड्राई होता है, पीछे क्या रह जाता है, आपके पास सॉल्ट रह जाता है, ठीक है। व्हाई इज इट ब्राउन इन कलर, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज बच्चा, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर। Mention the acid, mention the base from which NaCl is formed. Nature बताओ कि न्यूट्रल है। रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं, इम्प्योरिटीज उसमें जब ऐड हो जाती है और वो ब्राउन हो जाता है कलर में, तब उसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। कैसे बनता है, सी से जब आप देखते हो वहां पे इवेपोरेशन हो रही है पानी की, पीछे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। यस भास्कर, करेक्ट। चलो लेट्स हैव अनदर पोल क्वेश्चन, बिकॉज विद दिस वी आर डन विद द सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQs भी आपने कवर कर लिए। मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर नाउ। थर्ड चैप्टर की PYQs हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स हैव द पोल क्विकली इन द चैट। Copper utensils slowly lose their shiny brown surface and gain a green coat on prolonged exposure to atmospheric air. This is due to the formation of what? तो मेटल्स नॉन मेटल्स हमने स्टार्ट कर दिया। पहला क्वेश्चन आपके पास एक 1 मार्कर MCQ आ चुका है। क्या लगता है, क्या ये कॉपर सल्फेट की वजह से है, कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, किसकी वजह से ये हो रहा है? मैम इज NCERT सेशन एंड दिस सेशन इनफ टू गेट गुड मार्क्स? यस बच्चा, बट अपने कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए ना, आप कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके राज, हाँ जी, चलो फटाफट से इसका आंसर मार्क करिए। स्पीड के चक्कर में गलत कर दिया। मैम वीक एसिड, बच्चा
एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा. एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा. एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा. दोनों ही वीक है तो न्यूट्रल बनेगा. चलो लेट्स एंड द पोल. अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी मार्क द आंसर. पोल को एंड करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने आंसर क्या मार्क किया. या बिल्कुल. थर्ड चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया बच्चा. 4 तो चैप्टर्स है केमिस्ट्री में. यू पीपल आर लकी क्योंकि चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हट चुका है. थैंक यू बानू. यस पार्वती. ऑलराइट, आई कैन सी around 55% of you've marked option B, but a lot of you marked option A also. Copper sulfate. First of all, copper sulfate is blue in color. ठीक है, and in the question they have given green, so this is already ruled out. The ones who are thinking it's copper sulfate. Correct answer is copper carbonate. ना cupric oxide है ना cuprous oxide है. ठीक है, ना CuO है ना Cu2O है. कैसे देखते हैं. ये क्या बात हो रही है? करोजन की बात हो रही है. कॉपर मेटल की डिग्रेड होने की बात हो रही है, करोजन की बात हो रही है. अब इसमें ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमारा कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है. क्या फॉर्म करता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट. क्या फॉर्म करता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स बेसिक कॉपर कार्बोनेट. और इसी की वजह से हम देखते हैं कि वो ग्रीन कलर आ रहा है. कौन सा कलर आ रहा है? ग्रीन कलर आ रहा है. कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, यस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक कॉपर कार्बोनेट दैट्स ग्रीन इन कलर. ठीक है, yes, basic copper carbonate. So correct answer B था. चलो let's have the poll again. Which of the following statements is true about the position of metals in the activity series of metals? चलो फटाफट से करेंगे ये वाला सॉल्व. गायत्री, ब्रेक आपको मिलेगा आफ्टर वंस वी आर डन विद ऑल केमिस्ट्री क्वेश्चंस. ठीक है, सेजल ग्रीन कलर उसकी वजह से नहीं होता ना. कॉपर ऑक्साइड अभी हमने पीछे देखा है, ब्लैक इन कलर है. लेट्स हैव द पोल इन द चैट फॉर दिस वन. which one of the following statements is true about the position of metals in the activity series of metals? Copper is below hydrogen but above lead. Iron is below lead and zinc. मतलब iron जो है वो नीचे है lead के भी, zinc के भी. Zinc is below magnesium but above aluminium. Magnesium is below calcium but above aluminium. इनमें से कौन सा सही है? Only if you know the reactivity series. Reactivity series आपको पता होगी तो आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर दोगे. And I can see some of you have already marked the answer also. चलो टाइम्स अप. इतना ही टाइम देंगे आपको. रिएक्टिविटी सीरीज माइंड ऑफ फिंगर टिप्स में होनी चाहिए. लेट्स एंड द पोल एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू मार्क द करेक्ट आंसर. लेट्स एंड द पोल एंड देखते हैं करेक्ट आंसर मार्क किया है. ऑलमोस्ट 40% ऑफ यू मार्क्ड ऑप्शन डी बट अ लॉट ऑफ यू हैव मार्क्ड द अदर ऑप्शन ऑल्सो. देखिए आई कैन सी, जस्ट अ मिनट, 39% ने डी मार्क किया. ए बहुत बच्चों ने मार्क किए. कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन बट अबव लेड. अच्छा चलो रिएक्टिविटी सीरीज दिखा देते हैं. कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन, हाँ ठीक है, बट इट्स बिलो लेड ऑल्सो, इट्स नॉट अबव लेड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही थी? आयरन इज बिलो लेड, ये तो वैसे ही गलत हो गई, लेड के नीचे थोड़ी है. थर्ड स्टेटमेंट क्या थी? जिंक इज बिलो मैग्नीशियम, ठीक है, एंड अबव एल्यूमिनियम, ये भी गलत हो गया. जो लास्ट स्टेटमेंट थी आपकी वो बिल्कुल ठीक थी. लास्ट स्टेटमेंट कह रही थी जो मैग्नीशियम है हमारा वो कैल्शियम के नीचे है और एल्यूमिनियम के ऊपर है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी. तो करेक्ट आंसर क्या था आपका? ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर. लेट्स हैव अनदर पोल क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. दिस इज अगेन अ 1 मार्कर क्वेश्चन. लेट्स हैव द पोल इन द चैट.
ठीक है. Please stop calling me. Yes, that's the way to learn it. Please stop calling me a cute zebra in the lunch break. Hey, call me something good, please. बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको बताता है नेचर और स्ट्रेंथ के बारे में उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, कि वो एसिडिक है कि बेसिक है और कितना एसिडिक और कितना बेसिक है. ठीक है, चलो लेट्स हैव द पोल इन द चैट. व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, तो क्या होता है? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, या फिर ध्यान से पढ़ेंगे, ऑक्सीजन एंड आयरन हाइड्रोक्साइड ऑफ फॉर्म, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया हुआ है. H2 and Fe3O4 मतलब फेरिक ऑक्साइड बनाया हुआ है. हाइड्रोजन एंड Fe2O3 मतलब हाइड्रोजन और फेरिक ऑक्साइड. इनमें से क्या होगा? जल्दी से सोचेंगे और आंसर मार्क करेंगे. चलो, लेट्स एंड द पोल बिकॉज आई नो आपने कौन से दो ऑप्शंस मार्क करे हैं. लेट्स एंड द पोल. बच्चा, पहली बात तो आप याद रखोगे, अगर कोल्ड वाटर की बात हो रही है या हॉट वाटर की बात हो रही है तो हाइड्रोक्साइड बनता है. क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है. अब आयरन जो है वो मीडियम रिएक्टिविटी का है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करेगा पानी के साथ. तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो रूल आउट हो गए. ना हाइड्रोक्साइड बनेगा, ना ऐसे कि रिएक्शन नहीं होगा. स्टीम के साथ क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है. अब यहां कंफ्यूजन होना फिर भी ठीक है. आई कैन सी बहुत बच्चों ने सी और डी, 56% ने सी मार्क करा है, कुछ बच्चों ने डी भी मार्क करा है. तो पहले ए और बी तो नहीं होगा. आई होप दैट इज क्लियर. आपका क्या बनेगा? Fe3O4 बनता है. तो जब आयरन का रिएक्शन स्टीम से होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनता है, दैट इज Fe3O4 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है. और ये ब्लैक होता है कलर में. ठीक है, इसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है. और जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम यहाँ पे Fe2O3 क्यों नहीं बना? Fe2O3b बनता है. Fe3O4 एक्चुअली क्या है? इसमें FeO भी है, इसमें Fe2O3 भी है. ऐड करो, आयरन टोटल कितना आ गया? 3. ऑक्सीजन कितना आ गया? 4. तो Fe3O4 बन गया. ये इसमें दोनों है. इसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं. मैग्नेटाइट का भी यही फॉर्मूला होता है ना. चलो, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. रिएक्टिव है ना पीयूष, दैट्स व्हाई. लड्डू क्वेश्चन. चलो बढ़िया. नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स? अगेन अ 1 मार्क का क्वेश्चन. आयनिक कंपाउंड्स में आयंस बन रहे होंगे. क्या बन रहे होंगे? आयंस बन रहे होंगे. पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन, नेगेटिव चार्ज है तो अनायन. यही होता है. अब आयन कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से. तो जिन कंपाउंड्स में कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं. अगर मैं सोडियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 11 है तो 281 कॉन्फ़िगरेशन हो गई. क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 17 है तो 287 कॉन्फ़िगरेशन हो गई. उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ठीक है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, वो भी स्टेबल हो गया. तो Na+ जब बनता है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 28. और Cl- जब बनता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 288. कैसे बन रहा है ये कंपाउंड? ट्रांसफर से बन रहा है. तो इसे हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. क्योंकि एनी एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम से ट्रांसफर हो रहे होंगे. बट क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा होगा, तभी 2 क्लोरीन एटम्स हैं. हाँ, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है कार्बन के कंपाउंड्स में, अभी करेंगे वो भी. क्लास 9 लेजेंड्स आर हियर. चलो बढ़िया है. All right, next question everyone. You have to give reason and this is a very simple question. 2019 में 2 marks का आया, 1 mark for this part, 1 mark for this part and very very cute question. सबसे पहला part, मैम should we study electron dot structure? Yes, पूछ सकते हैं बच्चा एग्जाम में. ठीक है. Give reason. Platinum, gold and silver are used to make jewelry. क्यों ये ज्वेलरी बनाने के लिए काम आ रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये जो तीनों मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, ये लस्ट्रस है. मतलब क्या है? ये शाइनी है. शाइन है इनका. ज्वेलरी शाइनी अच्छी लगती है ना, तो शाइन है. अच्छा, इनकी रिएक्टिविटी भी कम है. लो रिएक्टिविटी की वजह से ये
किसी और सब्सटेंस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, हमारी स्किन के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ऊपर से ये डक्टाइल भी हैं, ये मैलिएबल भी हैं, मतलब आप इनको वेरियस शेप्स दे पाते हो जो ज्वेलरी में हमें चाहिए। तो इस सब की वजह से हम इसे ज्वेलरी में यूज कर रहे हैं। so many reasons are there, you can give any 2 reasons because 1 mark का क्वेश्चन मतलब half plus half. नेक्स्ट, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। अब ये दोनों क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ये जो मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये विगरसली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ एंड दे कैन कैच फायर। बहुत विगरस रिएक्शन है, आग लग सकती है। टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स हम क्या करते हैं, इन्हें ऑयल में रखते हैं। तो बस आपको यही मेंशन करना है। यू कैन मेंशन ओवर हियर 2 रीजन देना क्यों हम ये मेटल्स यूज कर रहे हैं, चाहे आप रिएक्टिविटी के लेके बोलो, चाहे आप लस्ट्रस को लेके बोलो, मैलिएबल, डक्टाइल, कुछ भी लेके बोलो, 2 रीजंस देना। यहां पे आप इक्वेशन भी दे सकते हो। आप सोडियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हो तो आप ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। या आप पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो, सो यू कैन मेंशन दिस एज वेल, ठीक है। इक्वेशंस भी लिख सकते हो। कैन नॉट बी स्टोर्ड इन वाटर, बिल्कुल भी नहीं, वाटर से तो रिएक्ट कर रहे हैं वो। नहीं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस नहीं है इसमें बच्चा, इस वाले पार्ट में ब्रिस्क एफर्वेसेंस नहीं है। माने अगर बिल्कुल प्योर है तो लिक्विड, ओनली इफ इट्स वेरी प्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम, वेयरएज कॉपर जो है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अच्छा, सिल्वर हमारा क्या हो रहा है, सिल्वर हमारा ब्लैक हो रहा है, कॉपर हमारा, वेयरएज कॉपर ग्रीन। You have to name the substances present in air which are basically responsible for these changes and write the name of the products form. Just tell me this thing कि silver के केस में what is responsible. इंदिरा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आप देखते हो ना बहुत रैपिडली, तब, ठीक है। चलो, yes, very good, sulfur compounds, yes, and कॉपर के केस में moist कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो सिल्वर के केस में क्या हो रहा है, सल्फर कंपाउंड्स जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिस्पॉन्सिबल है सिल्वर का टार्निश करने में। सिल्वर क्या हो रहा है, टार्निश हो रहा है, ब्लैक इन कलर हो रहा है, ठीक है। और क्या है नाम उस प्रोडक्ट का जो बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, क्या बन रहा है, सिल्वर सल्फाइड बन रहा है। सिमिलरली यू कैन मेंशन अबाउट कॉपर ऑल्सो। कॉपर मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब हमने पढ़ा था ये कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन मतलब बेसिकली मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हो रहा है तो क्या बन रहा है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन रहा है, जिसका कलर क्या है, जिसका कलर है ग्रीन, ठीक है। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रोडक्ट बन रहा है किसकी वजह से, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंशन द आंसर। यस नाजिया, करेक्ट। सो यू हैव टू मेंशन अबाउट द सिल्वर आर्टिकल्स जो ब्लैक हो रहे हैं सल्फर कंपाउंड्स की वजह से, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड बन रहा है ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। कॉपर वेसल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो रहा है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद मॉइस्चर। और क्या बन रहा है, आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन रहा है जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है। सो दिस वाज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। बेसिक कॉपर, श्रुति मेंशन कॉपर ऑल्सो, बेसिक कार्बोनेट नहीं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन जो बच्चे बोल रहे थे, मैं भी नाम नहीं ले रही, नाम आप मुझे चार्ट में बताओगे। हाउ आर ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स जॉइंट एंड गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। चलो जल्दी से बता दो। हाउ आर ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स जॉइंट, नेम बता दो मुझे, किस रिएक्शन की बात हो रही है।
बच्चा ब्रेक आपको और 15-20 मिनट्स में आपको ब्रेक देंगे, डोंट वरी। मैम व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? बच्चा जब आपको रस्टिंग दिखानी है तो आप आयरन का रिएक्शन, लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, मैं आपको यही दिखा देती हूं। अगर रस्टिंग की बात होती तो आप आयरन का रिएक्शन दिखाओगे ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, बट हमें नहीं पता कितना मॉइस्चर है तो हमने XH2O ले लिया। वो क्या बना देगा? Fe2O3.XH2O। लेट मी राइट इट हियर। वो क्या बना देगा? Fe2O3.XH2O। ठीक है, रस्टिंग की अगर हम बात कर रहे हैं। चलो, वेरी गुड। मीनवाइल ऑल ऑफ यू आंसर्ड मैम, थर्माइट रिएक्शन की बात हो रही है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख रहे हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, वो डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को, Fe2O3 से वो हटा रहा है और आयरन बन रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रही है। अब ये हीट जो है बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है, इनफैक्ट ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि ये जो मेटल हमें मिल रहा है मोल्टन फॉर्म में मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, और यही मोल्टन आयरन जो है इससे हम ज्वाइन कर रहे हैं रेलवे ट्रैक्स को। तो आपको यही मेंशन करना था। क्या रिएक्शन है? थर्माइट रिएक्शन है। जो हमें रिएक्शन में आयरन मिल रहा है वो हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? मोल्टन फॉर्म में मिल रहा है, जिससे जो गैप्स है वो हम फिल करके ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स को इन अ वे ठीक कर रहे हैं। इक्वेशन आपने यहां पे दे दी, ठीक है। हाँ, मोल्टन फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, तभी वो सॉलिड नहीं बन रहा, वो मोल्टन फॉर्म में बन रहा है, जिसको आप लिक्विड लिख सकते हो। ये रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओर ऑफ मर्क्यूरी एंड राइट द बैलेंस, ओके, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। सबसे पहले मुझे सिर्फ ओर बता दो क्या है। इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। 2019 में 3 मार्क का क्वेश्चन है, मेटलर्जी से आप डरते हो, डरने की कोई बात नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या है ओर मर्क्यूरी का? जल्दी से। दो तरीके के आंसर आ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ओर जो है वो सिनेबार है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम अमेलगम है। प्लीज नोट, ये ओर है, ये अलॉय है मर्क्यूरी का, ठीक है। ये ओर है मर्क्यूरी का, ये अलॉय है मर्क्यूरी का। तो कंफ्यूज नहीं होना, अमेलगम नहीं लिखना, हमें बात करनी है सिनेबार की, ठीक है। अच्छा, अब मर्क्यूरी जो है वो रिएक्टिविटी में, रिएक्टिविटी कैसी है इसकी? रिएक्टिविटी है इसकी लो। तो इसे क्या करना है? बस हीट करना है हमें, ठीक है। इसके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हमें हीट करना है, तो कर देते हैं। सिनेबार HgS आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड है, आपने उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया। फर्दर हीट करोगे यू विल गेट मर्क्यूरी, और यही लिखना है आपको एग्जाम में। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर। तो सिनेबार आपका और हो गया मर्क्यूरी का। आपने दोनों स्टेप्स बता दिए, याद रखना है कि इसमें बस हीट होता है, ठीक है। सो बैलेंस करना मत भूलना इक्वेशन को, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन पूछी है, लो रिएक्टिविटी है, और जब भी लो रिएक्टिविटी होता है हमें सिर्फ हीट करना होता है ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। नहीं श्रुति, रोस्टिंग, हाँ इस केस में आप देख रहे हो रोस्टिंग हो रही है, सल्फाइड और हो गया ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर्स। अब कार्बोनेट ओर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? जल्दी से। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग निधि अभी आने वाला है आगे। वेरी गुड, कैल्सिनेशन, बिल्कुल सही। देखो यहां पे हमें गिवन है मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, तो जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं या तो वो कार्बोनेट ओर की फॉर्म में या सल्फाइड ओर के फॉर्म में। कार्बोनेट है तो आप कैल्सिनेशन करोगे, अगर सल्फाइड होता तो आप रोस्टिंग करते। बट अभी
हमसे पूछा नहीं है, ये हमसे कार्बोनेट और पूछा तो हम कैल्सिनेशन मेंशन करेंगे। इससे हमारे पास ऑक्साइड आ गया मेटल का, हमें उसे रिड्यूस करना है, फाइनली हमें मेटल मिल जाएगा, फिर हम उसे प्योरीफाई कर देंगे, रिफाइनिंग कर देंगे, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, कैल्सिनेशन। यस, तो अब आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। अब कॉपर अगेन, अगर हम कॉपर की बात करें, इसकी भी रिएक्टिविटी लो है, आपको इसके केस में भी बस हीट करना है। तो आपने क्या लिया, आपने कैल्कोसाइट या फिर इसको कॉपर ग्लैंस भी कहते हैं, जो ओर है कॉपर का, उसको आपने हीट कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया। उसको फर्दर आपने हीट किया, आपको मिल गया कॉपर मेटल। पीडीएफ, हाँ बच्चे, इसको कॉपर ग्लैंस भी कहते हैं, कैल्कोसाइट भी कह सकते हैं। मैम 15 मिनट्स ब्रेक आफ्टर केमिस्ट्री प्लीज। ओके जी, डन, यू विल गेट द 15 मिनट्स ब्रेक, डोंट वरी। यस, अच्छा, आपको लेबल डायग्राम भी बनाना है यहाँ पे, you have to draw a diagram also, लेबल डायग्राम बनाना है आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। तो ध्यान रखेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड है, उस पे आप इम्प्योर कॉपर रखोगे। जो नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड, उस पे आपने प्योर स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप रखी प्योर कॉपर की। इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिया सॉल्ट सोल्यूशन, दैट इज कॉपर सल्फेट। अब जैसे करंट पास करोगे क्या होगा, एनोड से रिएक्शन स्टार्ट होगा। एनोड से पहले जो मेटल है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो जाके डिसॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में। तो कॉपर जो है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर आयंस बना रहा है। वो कॉपर आयंस कहाँ चले गए, आपके इलेक्ट्रोलाइट में चले गए। उतने ही कॉपर आयंस रिड्यूस हो जाएंगे, कहाँ जाके रिड्यूस हो रहे हैं, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और उतना ही कॉपर आयंस रिड्यूस होके कॉपर बना देगा और वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो जितना कॉपर आपका एनोड से निकला है आयंस की फॉर्म में, उतना ही कॉपर आपका डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे। आयंस को जब रिड्यूस कर दिया तो कॉपर ने ऑक्सीडेशन हुई, Cu2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, कॉपर आयंस जो थे उन्होंने गेन करे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर डिपॉजिट हो गया। मतलब एनोड पतला होता जाएगा, कैथोड मोटा होता जाएगा। जो इम्प्योरिटीज है, जो सॉल्युबल है, वो तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्युबल डिसॉल्व कर जाएंगी। जो नहीं है वो एनोड के नीचे क्या बना देंगी, एनोड मड। सोनी मोस्टली यूज Fe2O3 एक्सेप्ट जब आपको वाटर के साथ रिएक्शन दिखाना है, ठीक है। यस, एब्सोल्युटली, यस, स्टार्टिंग स्टार्ट डेफिनेटली, हाँ, यस नाजिया, ग्रेफाइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर एवरीवन। आप पहले स्टेप्स बताओगे, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको कोई कार्बोनेट और गिवन है तो आप कैल्सिनेशन करोगे, फिर आप उसकी रिडक्शन करोगे, फिर आप उसकी रिफाइनिंग कर दोगे। स्पेसिफिकली कॉपर का केस पूछा है, देन यू विल मेंशन दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है। कैसे सल्फाइड ओर से, कॉपर ग्लैंड से, कैल्कोसाइट से कैसे मिल रहा है कॉपर, जस्ट बाय हीटिंग। आपको सिर्फ हीट करना है क्योंकि रिएक्टिविटी क्या है, लो है। देन यू हैव टू ड्रॉ दिस वेल लेबल डायग्राम। वेल लेबल डायग्राम का मतलब कैथोड आपको पता होना चाहिए क्या है, एनोड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट एंड एनोड मड, ये चारों चीजें होनी चाहिए। आपने ऑफ कोर्स बैटरी तो दिखानी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क द आंसर एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन द इक्वेशंस। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, राची बख्शी बच्चा देखो, एनोड पे आपने इम्प्योर कॉपर लिया है जिसको आपको प्योरीफाई करना है, कैथोड पे प्योर स्ट्रिप ले ली, थिन स्ट्रिप अपने कॉपर की। थैंक यू आरफ। 30 मिनट्स ब्रेक आफ्टर केमिस्ट्री, नहीं 30 मिनट्स नहीं, 10 मिनट्स ब्रेक दे देंगे। चलो एवरीवन, वी आर ऑन टू द लास्ट चैप्टर नाउ, कार्बन। लेट्स सी, देखो पहले 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ठीक है। पहले 3 चैप्टर्स के हमने PYQs देखे, हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दी। वी आर ऑन टू द 63rd क्वेश्चन नाउ। बहुत जल्द आपके 100 PYQs खत्म होने वाले हैं। तो 3 चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स केमिस्ट्री के आप देख चुके हो और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चंस तो मैनेजेबल है। अब थोड़ा इस चैप्टर में, कार्बन के चैप्टर में भी लेट्स इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस, लेट्स एनहांस आवर प्रिपरेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बच्चे न्यू आए हैं, जिन बच्चों ने अब तक सेशन लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक भी कर देंगे सेशन को। यस बच्चा, सर्च एंड रीजन भी आता है, करेक्ट।
चलो everyone, let's have the poll in the chat. Let's get started with the last one. Let's have the poll in the chat. Esterification is a process in which we have a sweet smelling substance that is being produced. Okay. Reason given है when esters react with sodium hydroxide, alcohol बन रहा है, sodium salt बन रहा है carboxylic acid का. चलो ध्यान से करेंगे अब ये. क्या है इसमें आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? ब्रेक आपको और 20 मिनट्स में ब्रेक मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63. नहीं, हाईली रिएक्टिव का आप नहीं करोगे, वो वाटर कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के वाटर कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे. ठीक है, चलो एवरीवन, लेट्स डू वन थिंग. लेट्स एंड द पोल. बच्चा भी एस्टेरिफिकेशन आपको बताने लगी हूं क्या. लेट्स एंड द पोल एंड लेट्स सी व्हाट यू पीपल हैव मार्क्ड. लेट्स एंड द पोल. देखिए सर आपने कौन सा आंसर मार्क किया? मुझे 2 ऑप्शंस में लग रहा है आप कंफ्यूज हुए होगे. चलो लेट्स हैव द रिजल्ट्स. वेरी गुड, अ लॉट ऑफ यू मार्क्ड ऑप्शन बी. गुड, यू कुड फिगर आउट. बच्चा जब हम बात कर रहे हैं एस्टेरिफिकेशन की, देखो जब एस्टेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं हमारे पास क्या है? एसिड है, वो रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ. ठीक है, और क्या बना रहा है? ऑब्वियसली यहां पे लेट मी राइट इट लाइक दिस, C2H5OH. रिएक्शन हो रहा है H2SO4 की प्रेजेंस में. CH3COOC2H5 बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है. दिस इज योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. सपोनिफिकेशन रिएक्शन देखते हैं क्या है. जब हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन की बात करते हैं देन वी आर स्टार्टिंग विद CH3COOC2H5. हम एस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिल गई और क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट मिलेगा, मतलब CH3COONA. लेट मी राइट इट लाइक दिस. हाँ जी, ठीक है. ये दोनों रिएक्शंस देखो कहीं ना कहीं मोरलेस एक दूसरे का रिवर्स है. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड. बिल्कुल सही बात है. ये जो एस्टर बन रहा है इसकी कैसी फ्रूटी स्मेल होती है. ये जो एस्टर बन रहा है इसकी फ्रूटी सी स्वीट सी स्मेल होती है. तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है ना. क्या बन रहा है? इथाइल एसीटेट जो बन रहा है इसकी फ्रूटी सी स्मेल होती है. चलो ये तो ट्रू था. रीजन देखते हैं. व्हेन एस्टर्स रिएक्ट विद NaOH, मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है. क्या हो रहा है? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है. जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो अल्कोहल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, और सोडियम सॉल्ट बन रहा है, वो भी बन रहा है, दैट इज ऑल्सो बीइंग फॉर्म्ड. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू तो है मगर ये करेक्ट रीजन नहीं है. So both the statements are true, but this is not the correct reason. एस्टर्स जो होते हैं एक्चुअली में वॉलेटाइल होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है वो वेपर फॉर्म में बहुत इजीली आ जाते हैं. दैट्स हाउ वी गेट द स्मेल. सो स्टेटमेंट्स दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं थी रीजन वाले स्टेटमेंट की. सो करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन बी. मैम यू आर एन अच्छा चलो. No, that's the thing. B is not the answer for A. It's not the explanation. Okay? Chalo, next. Let's have the poll again. Select the correct statement about the properties of acetic acid. It smells like vinegar and turns red litmus to blue. It is insoluble in water and turns blue litmus to red. It is soluble in water and turns red litmus to blue. It smells like vinegar and turns blue litmus to red. सपोनिफिकेशन को बच्चा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं. बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का. ठीक है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. मैम ब्रेक, यस बच्चा ब्रेक बिल्कुल मिलने वाली है आपको, डोंट वरी.
चलो फटाफट से पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Just last 10 to 15 minutes, then you'll get a 10-minute का break. Everybody is already marked. Very good. End करे पोल फिर अगर सबने मार्क कर दिया तो. A lot of you have marked option D. बिल्कुल सही. देखो पहली बात तो acetic acid. This is an acid. ठीक है, इथेनोइक एसिड. CH3COOH एसिड है. एसिड है मतलब लिटमस पेपर को तो रेड करेगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गया. हमारे पास बचे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी. देखो मैं एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज कर रही हूँ. बी कह रहा है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये यहाँ पे गलत है. अभी हमने देखा था एसिडिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा. देखो चैप्टर 2 की नॉलेज यहाँ पे यूज हो रही है, तो ये भी गलत हो गया. इट स्मेल्स लाइक विनेगर, बिल्कुल सही बात है. एंड इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बिल्कुल ठीक है. तो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. हाउ टू एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन. बच्चा वॉलेटाइल अगर लिखा होता कि वो वॉलेटाइल है, देन करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी वो. उसके स्मेल, किसी भी सब्सटेंस का स्मेल तब आता जब वो बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में जा पा रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फटाफट से मुझे चार्ट पे बता दो. निखिल वो तो बस डेफिनेशन लिखिए सपोनिफिकेशन की कि क्या क्या बनता है. इट्स ओके प्रीति. वॉलेटाइल मतलब वेपर फॉर्म में बहुत इजीली चले जाना. हाइड्रोलिसिस बच्चा वाटर को आप ब्रेक कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. चलो जल्दी से नेक्स्ट होमोलॉग C2H4 का. C2H4 का एवरीबडी सिंग मैम C3H6. ठीक है. C4H6 का, C4H6 का बताओ जल्दी से. C5H8. चलो लेट्स सी. हाफ मार्क का 2016 में 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है. अब होमोलॉग्स क्या होते हैं. होमोलॉग्स बेसिकली मेंबर्स है जो होमोलोगस सीरीज में प्रेजेंट होते हैं. अब होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसमें सेम जो फंक्शनल ग्रुप है वो किससे हटा रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है. अब जैसे यहाँ पे आपको अल्कोहल की सीरीज गिवन थी, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल. तो एक मेंबर से जब हम दूसरे मेंबर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ CH2 ऐड होता है. मतलब हमारा 14U मास इंक्रीज होता जा रहा है एज वी गो फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट. आपको गिवन है C2H4, या तो आप इसका जनरल फॉर्मूला लिख लो. ये क्या है, अल्कीन है, मतलब CnH2n जनरल फॉर्मूला होगा. N2 आपको पहले गिवन है, आप N = 3 डाल दो. क्या हो गया ये C3H2 × 3 कितना हुआ, C3H6. दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अल्कीन होमोलॉग, नेक्स्ट मेंबर. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास C4H6 गिवन. अब C4H6 आपका क्या हुआ, अल्काइन हुआ, मतलब CnH2n-2. अब N = 4 आपको गिवन है. नेक्स्ट मेंबर वुड बी N = 5. N = 5 के लिए C5H2 × 5 - 2 मतलब C5H10 - 2 मतलब C5H8. C5H8 ये आपका अल्काइन हो गया. ये क्या है, अल्काइन है. और ये क्या था आपका, ये आपका अल्कीन था. दिस इज हाउ यू हैव टू फिगर आउट. सो आई होप मैम वी कैन जस्ट ऐड CH2. बिल्कुल, आई हैव टोल्ड यू ऑल द अप्रोचेस विच एवर सूट्स यू. आप यहां से यहां तक CH2 भी ऐड करते हुए पहुंच सकते हो. दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड. मैम यू एंड केमिस्ट्री इज अ मैच. थैंक यू प्रीति. All right, everyone. Let's move on to the next question. Now, question number 66. When ethanol reacts with ethanoic acid in the presence of concentrated H2SO4, a fruity smell substance is being produced. You have to state the class. क्या class है? किसकी बात हो रही है? Very good. We are talking about esters. Absolutely right. Good, everyone. हम बात कर रहे हैं esters की. तो स्टेट द क्लास, हम एस्टर्स की बात कर रहे हैं. आपको ये रिएक्शन अभी बताया था. ये कहीं ना कहीं आपका एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो रहा है. H2SO4 की प्रेजेंस में आपका क्या बन गया, एस्टर बन गया. सो इथाइल एसिटेट बन गया एंड वाटर बन गया. आपने क्लास बता दी एस्टर, आपने रिएक्शन लिख दिया. ठीक है.
and write the chemical name of the product form. Ethyl acetate is the product form. Plus of course water is being formed. अच्छा यहाँ पे H2SO4 का रोल क्या है? क्या रोल है H2SO4 का? Everyone, क्या रोल है यहाँ पे H2SO4 का? वेरी गुड, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो है एक रिएक्शन का स्पीड या रेट चेंज कर देता है, बढ़ा देता है या कम कर देता है. पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो बढ़ा देगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो डिक्रीज कर देगा. तो मतलब बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है. यहां पे रिएक्शन का रेट बढ़ा रहा है. इट्स एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंशन द आंसर. एस्टर्स जो है वो फ्रूटी स्मेल वाले होते हैं, क्लास एस्टर्स की है. प्रोडक्ट का नाम इथाइल एसीटेट है. दिस इज द इक्वेशन. यहाँ पे H2SO4 इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट. यस, बिल्कुल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं मतलब मैं दूसरे को ऑक्सीजन दूंगी, है ना. सिंपल सी बात है. अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो मैं ऑक्सीजन या तो ले लूंगी या हाइड्रोजन दूंगी. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीजन देता है. ठीक है, जैसे कि आप देखो एल्कलाइन KMNO4, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट. ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं. सो दे एड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस. What happens when oxidizing agent is added to propanol? Propanol क्या है? क्या अल्कोहल है? अल्कोहल में जब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ऐड करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा. प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन का अल्कोहल. तो क्या बन जाएगा? 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा. एंड द वंस राइटिंग कि वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं. यस, बिल्कुल. इज दिस क्वेश्चन क्लियर नाउ? You have to answer it with the help of the equation as well. Equation लिखनी नहीं भूलनी. Clear? Clear to all of you? Yes, बिल्कुल. तो बस आंसर लिख देंगे. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करता है ऑक्सीजन को. ठीक है, प्रोपेनॉल को वो कन्वर्ट कर देगा प्रोपेनोइक एसिड में. अगर ब्यूटेनॉल देते तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाता, पेंटेनॉल देते तो पेंटेनोइक एसिड हो जाता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन. अच्छा एवरीवन प्लीज नोट, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, जैसे 2017 में 3 मार्कर आया, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन एस्टर्स एंड सपोनिफिकेशन. तो ये 2 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ये करके जानी है. डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस. आपको दोनों की इक्वेशंस पता होनी चाहिए. ठीक है बच्चा, वील गिव यू 10 मिनट्स ब्रेक, डोंट वरी. You need 20 minutes break. प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड. हाँ, 3 कार्बन का अल्कोहल तो 3 कार्बन का एसिड. यस बच्चा, हार्ड वाटर वो है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है. ओके हाँ, करेक्ट गौरव, सही. चलो, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, ये C2H5OH इज नथिंग बट CH3CH2OH, C2H5OH. उसको कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना. आपका क्या बन गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एस्टर बन गया और वाटर बन गया. आपको यूज भी लिखना है क्योंकि इसमें फ्रूटी स्मेल होती है, तो आप नोट करोगे परफ्यूम्स बनाने में या फ्लेयरिंग एजेंट्स में काम आता है. सपोनिफिकेशन बिल्कुल उल्टा हो गया. सपोनिफिकेशन क्या है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस हो रहा है मगर एक एल्कली की प्रेजेंस में, दैट इज NaOH. तो इसमें क्या हो रहा है? आपने एस्टर को रिएक्ट कराया जब NaOH से, आपको वापस अल्कोहल मिल गया और सोडियम सॉल्ट मिल गया इस बार. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, CH3COONA. इज दिस क्लियर? सोडियम एसिटेट आपको मिल रहा है. ये कहां यूज होता है? सपोनिफिकेशन इज यूज्ड टू मेक सोप्स. तो सोप्स कैसे बनता है? सपोनिफिकेशन रिएक्शन से. हाँ बिल्कुल उल्टा है ना. देखो वहां पे एस्टर बन रहा है, यहाँ पे एस्टर आपका रिएक्टेंट है. बिल्कुल सही दी थी. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. तो बस यही आंसर आप लिखोगे. इस आंसर में हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट बच्चा? वी आर ऑलमोस्ट ऑन द 70th क्वेश्चन. सो फॉर केमिस्ट्री अनदर 1 or 2 क्वेश्चंस लेफ्ट
एंड देन 30 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स भी मास्टर हो जाएगा। ठीक है, चलो बिल्कुल सही बच्चा। तो एस्टेरिफिकेशन में आप बता सकते हो, इक्वेशन मेंशन कर सकते हो, यूज क्योंकि फ्रूटी स्मेल है तो परफ्यूम्स में यूज होता है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। सपोनिफिकेशन में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, रिवर्स कर दो एस्टेरिफिकेशन का, बट NaOH की प्रेजेंस में करना, और सोप्स बनाने के काम आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। देखो जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रक्चर बनाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। इथेनॉल मतलब कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का अल्कोहल, मिथ इथ 2 कार्बन का अल्कोहल, तो ये लो कार्बन 1 कार्बन 2, 2 कार्बन का आपने अल्कोहल बना दिया। ठीक है, क्या है ये, दिस इज CH3 CH2OH। बच्चा कार्तिक बाय डिफॉल्ट आप 2 लेकर चलना, मेजरली केसेस में 2 है, जो कुछ केसेस में 1 है वो आपको बता दिए मेटोलॉजी में। ठीक है मैम, एग्जाम में कंडेंस फॉर्म में लिखना है या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है? बच्चा एग्जाम में आपको आप कंप्लीट फॉर्म में लिखना, कंडेंस फॉर्म में अवॉइड करना, राइट कंप्लीटली। ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में डिफरेंस बच्चा, सोप जो है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, डिटर्जेंट करेगा। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इथेनॉल मैंने आपको बता दिया है, इथेनॉल आपने यहां पे ले लिया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे, मतलब क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। यहां पे ध्यान से देखेंगे कैसे हो रहा है डिहाइड्रेशन। यहां पे मैं ये बोल सकती हूं कि ये CH3 CH2OH है। अब H2SO4 यहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये वाटर को निकाल रहा है, तो क्या बन रहा है हमारा, वापस से ध्यान से देखेंगे बच्चा, एवरीवन। वाटर के निकलने के बाद हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो जो भी आपके पास अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्या हुआ, एल्कीन बन गया। कैसे बना मैंने आपको दिखाया, डबल बॉन्ड कैसे आया। तो ये जो रिएक्शन है ये मैंने आपको राइट पे लिखकर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, CH3 CH2OH में जब आपने रिएक्शन करवाया डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना, प्लस ऑफ कोर्स वाटर, वाटर तो साथ में रिलीज हो ही रहा है। ठीक है, वाटर हो रहा है। अब उन्होंने पूछा था यहाँ पे रोल क्या है, यहाँ पे रोल डिहाइड्रेटिंग एजेंट का है H2SO4 का, ऑक्सीडाइजिंग डिहाइड्रेटिंग बच्चा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, तो जब एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, यू कैन मेंशन द आंसर दिस वे। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, आपको वो बताना है। फिर आपको बताना है कि क्या होगा अगर इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हो गया 443 केल्विन पे, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन दिखा देना, एल्कीन बन जाएगा, मतलब आपने इथेनॉल लिया है तो इथीन बन जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन बन गया। और यहाँ पे रोल क्या है, रोल है इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। मैम विल दिस हेल्प टू स्कोर 90% प्लस? 100% दिस विल हेल्प यू टू स्कोर बेटर। मनीषा, टू स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, दैट्स वाई। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है अंकुश? देखो, हाइड्रेटिंग एजेंट, हाइड्रेशन क्या होता है, पानी का एडिशन। हम कहते हैं स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, निकालना पानी को। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70th एवरीवन। व्हाई आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। Then you have to write the general formula for the homologous series of alkanes, alkenes and alkynes along with their first member. Now this is the catch. Everyone pay attention. General formula तो हम लिख देंगे, alkanes का CnH2n+2, alkenes का CnH2n, alkynes का CnH2n-2.
फर्स्ट मेंबर जब लिखना होगा, आप n इक्वल टू 1 यहां पे पुट करोगे तो आपका मीथेन आ जाएगा। क्या आएगा? आपका मीथेन आएगा। बट फॉर एल्कीन आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे और इथीन बनाओगे। मिथीन कुछ नहीं होता, ठीक है। एनाल्काइन में भी n इक्वल टू 2 पुट करोगे और इथाइन बनाओगे। क्या बनाओगे? इथाइन। मिथाइन भी कुछ नहीं होता। तो याद रखेंगे जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या क्या होगा तीनों का, ठीक है। मीथेन, इथीन, इथाइन। अच्छा, अब आपको एल्कीन्स को कन्वर्ट करवाना है एल्केन्स में। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एल्कीन से एल्केन में अगर जाना है तो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। देखो ये वैसे भी क्या है आपका C2H4 है, ये क्या है C2H6 है। यहां से यहां जाने में हमने क्या किया? हाइड्रोजन ही तो ऐड किए, तो रिएक्शन क्या हो गया? हाइड्रोजनेशन हो गया। यू हैव मेंशन दैट। ऑल्सो यू हैव टू राइट द इक्वेशन टू शो द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन के लिए आपको रिएक्शन शो करना है। कंडीशन क्या है? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है। हाँ बच्चा, एडिशन रिएक्शन है, बट क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो टू बी वेरी स्पेसिफिक हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजनेशन इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। यस, पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंशन द आंसर। आप बता सकते हो हाइड्रोकार्बन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है ओनली। देन यू कैन मेंशन द जनरल फॉर्मूलाज। दीज आर द फर्स्ट मेंबर्स। प्लीज ensure that you're mentioning methane, ethene and ethyne. Then हाइड्रोजनेशन से आप एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करो एंड द कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। What is a catalyst? Catalyst, bacha, can change the speed at which the reaction is taking place. All right, everyone. Let's move on to the last question now. Question number 71. Last question की तरफ चलते हैं. What is methane? देखो 2019 में 5 marker. We are so very scared of 5 marker questions. 5 marker question देखते ही हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या आएगा. कार्बन से 5 marker आ गए तो हम और घबरा जाते हैं. अब ध्यान से देखना है कितना इजी क्वेश्चन है। मीथेन क्या है? मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है। और कैसा हाइड्रोकार्बन है? ANE, एल्कीन है ये। तो बस यही आपको मेंशन करना है। व्हाट इज मीथेन? मीथेन हमारा CH4 है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। मतलब क्या हुआ? वो एल्कीन हुआ। अब अगर मैं बात करती हूं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2,4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। तो इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 और 1। तो यहां पे आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे और फिर आप उनकी बॉन्डिंग दिखा दोगे टू कंप्लीट व्हाट? टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। तो कार्बन के केस में ऑक्टेट, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट, ठीक है। तो कैसा हो रहा है? शेयरिंग हो रहा है यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। और कैसे बॉन्ड्स बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। सो नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। दे आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, वेरी गुड Ayushi, Sonali, even Ayush is there. Very good, all of you. Now you have to explain why are such compounds poor conductors of electricity. Why are they poor conductors of electricity? The answer is very, very simple. Ashish, no. They are poor conductors of electricity क्योंकि उनमें आयंस नहीं है। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, आयंस अगर नहीं है, तो कैसे कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी? नहीं हो पाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की प्रेजेंस होनी चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेयर हो गए तो दे आर नॉट बेसिकली डिसोशिएटिंग इनटू आयंस। जब हम उन्हें एक्वस सोल्यूशन, मतलब हम उन्हें वाटर में जब ऐड कर रहे हैं तो आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब दे आर ऑल्सो आस्किंग कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है? क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में वो कैसे बॉन्ड्स है? वो वीक बॉन्ड्स हैं। सो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। तो जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी देनी है, वो ब्रेक कर जाएंगे। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, उनको मेल्ट करना भी आसान है। बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, उनको बॉयल करना भी आसान है, ठीक है।
बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो कंबस्टन रिएक्शन हो रहा है मीथेन का. तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी भी रिलीज होगी. क्या होगा? एनर्जी भी रिलीज होगी इन दिस केस. ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेंशन द एनर्जी. इक्वेशन में साथ में आप एनर्जी भी मेंशन कर सकते हो, बट बेसिकली डोंट फॉरगेट टू मेंशन द प्रोडक्ट्स. हलवा क्वेश्चन, अरे क्या बात है. तो बस इसी तरीके से आप आंसर लिख देंगे अपना. सबसे पहले मीथेन क्या है? ये एक एल्केन है, एक हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला आपने बता दिया. एल्केन के हिसाब से आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा दिखाना है, एंड देन फाइनल है. ये फाइनल है, पीछे जाके पूरा भी लिखना. नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू बी वेरी स्पेसिफिक. क्यों इसका पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? क्योंकि मोबाइल आयंस नहीं है इसमें. और क्यों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है? क्योंकि वीक फोर्सेस से ये बॉन्डेड है. और इसी के साथ आपके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. बट हाँ, ये लास्ट पार्ट मत भूलना कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होते ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा. बेसिक कंबस्टन रिएक्शन. ठीक है, एंड विद दिस वी आर डन with your chemistry bit as well. and next हमारे पास क्या है? next हमारा physics start होने वाला है. इवा फटाफट से I want all of you to hit the like button. now take some break and 4:50 पे we will be back. 4:50 we will get started. 5 minutes break चाहिए, 10 minutes चाहिए? can we start at 4:45 everyone? जल्दी से बताओ, 4:45 और 4:50 quickly. हाँ, गिविंग यू द ब्रेक, डोंट वरी. आई नो यू पीपल आर वर्किंग सो वेरी हार्ड. देखो, ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो. 45 10 मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक. चलो ठीक है, 4:50 इज द टाइम. 4:50 पे वी विल बी बैक एंड इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स वील गेट स्टार्टेड. ओके, 4:50 पे स्टार्ट करते हैं. यस यस बच्चा. So keep working hard this way. I wish you all the best. फटाफट से रेस्ट करो and then come back for the physics bit.
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत लंबा खिंच गया ना, लेकिन बोर्ड की तैयारी है तो लंबा खींचना बनता है ना। इट्स ओके। देखो, टुडे वी आर फिनिशिंग 100 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ साइंस। मोर देन हाफ वे मार्क हो चुका है ना। बायोलॉजी खत्म, केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स बाकी है। एंड डोंट वरी, 29 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम फिजिक्स। ईच क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट मीन्स जो अभी तक यहां पर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बच्चा। आप लोग अभी तक यहां पर रुके रहे, आपने इतनी मेहनत कर रहे हो, बोर्ड का रिजल्ट तो अपने आप अच्छा आएगा, है ना। कोई तुमसे रिजल्ट छीन नहीं सकता। सेकेंड थिंग, फिजिक्स आसान है, आई एम टेलिंग यू। एक और सरप्राइज है विच आई विल रिवील आफ्टर 5 मोर क्वेश्चंस। एक सरप्राइज और है विच इज देयर फॉर यू। यस, गुड इवनिंग बच्चों। चिंता मत करो, डोंट यू वरी बच्चों। टुडेज क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन हम लोग आज कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन फंस जाएगा। क्वेश्चंस इन्हीं में से फंसने वाले हैं। डोंट यू वरी अबाउट दिस, राइट। गुड इवनिंग, यस, जय हिंद। ऑल राइट, क्या बोलते हो? आर यू रेडी? चालू करें? यस, थैंक यू, नमस्ते। स्टार्ट करिए। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, कितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी डर लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्कैर्ड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज आई गॉट टू नो, मेरे को बताया गया कि आप लोग डर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से। यस, यस, नो, एक्साइटेड, वेरी गुड, नमस्ते। बच्चों, एक सरप्राइज है, उसको लेके आई टेल यू। पहले तो फटाफट जरा एक्साइटमेंट दिखा दो। एंड आई कैन सी वी हैव अबाउट 500 राइट नाउ। यस, बढ़िया बा एकदम, अबाउट 500। फर्स्ट ऑफ ऑल, शो सम एक्साइटमेंट। ठीक है, आई अंडरस्टैंड बच्चा, आप थके हुए हो थोड़े से अभी भी, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे। आई प्रॉमिस यू विल ओनली स्पेंड टाइम जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे। समझ में सब कुछ आएगा, दैट्स अ प्रॉमिस। इसके अलावा मजा बहुत आएगा। कम ऑन, यस, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? Not scared but nervous. Very good. That's a very good line. Energetic as neutrons. नहीं, magnets है. Very good. Household circuit. आदित्य, question है बच्चा उससे. Don't worry. Human eye. अरे डरो मत यार. Human eye questions हैं आज. All right, बच्चों. Let's start the questions of physics. और बीच में I have promised a surprise also. ठीक है? जिन बच्चों को डर है इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से, कोई बात नहीं यार बच्चों, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आसान है। चलो आ जाओ, कम ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन फ्रॉम फिजिक्स, व्हिच मींस क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एंड डोंट वरी, फॉर एमसीक्यूज आई कैन गिव यू पोल ऑल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। रेडी, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 72 ऑन योर स्क्रीन. A student obtains a blurred image of a distant object on a screen using a convex lens. To obtain a distinct image on the screen, he should move the lens, first option, A, away from the screen, B, towards the screen, C, to a position very far away from the screen, D बोल रहा है either towards or away from the screen depending upon the position of the object. Yes. Aditya, this is CBSE, but लॉट ऑफ कॉमन टॉपिक्स आर देयर, है ना। सो लास्ट ईयर ऑल्सो ऐसा हुआ था बच्चों, हम लोगों ने ICSE कवर ऐसे ही किया था, कॉमन टॉपिक्स कर लिए थे एंड कुछ डेटा सेशन दिए, बट स्टिल बहुत सारे टॉपिक्स ICSE के नहीं कर पाए इस एकेडमिक ईयर में हम लोग। डोंट यू वरी, अगले साल अगले एकेडमिक ईयर होंगे। हैप्पी बर्थडे? अरे नहीं यार, बर्थडे। यस एवरीबॉडी, सी 4 ऑप्शंस आई विल गिव यू, ABCD, राइट, ओनली ABCD. सी, पोल इज लाइव. ABCD, come on. 2017 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, और आसान क्वेश्चन है. दिस इज समथिंग विच यू माइट हैव प्रैक्टिस्ड बिफोर ऑल्सो. कम ऑन, यस. आयुष, हाइपरमेट्रोपी अभी कहां? हेलो पूजा. It's okay, you are right on time, at least for physics. This is the first question of physics today. Hello Suhani. It's okay bacha, don't worry. Bachcho, people who are here for the first time, see, I would suggest you
सब्सक्राइब राइट नाउ, बिकॉज आज जो हम कर रहे हैं ना, ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके एग्जाम पास में है. दैट इज वाई टीचर्स जान लगा दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे. ये सिर्फ एक सेशन है, इसके अलावा बहुत सारे सेशन होने वाले हैं अभी आपके एग्जाम से पहले ही, राइट? साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश में सेशन भी है आज 7 बजे. डोंट यू वरी अबाउट दैट. अस्मिता मैम लाइव आएंगी. क्यों? ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे. ठीक है, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, लाइक प्रेस कर दो अगर नहीं किया है तो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 284 वोट्स. आई एम गोइंग टू स्टॉप इट नाउ. 5 4 3 2 1 स्टॉप. यस, वी हैव ऑप्शन बी इज 74%. बी बोल रहे हैं 74% लोग. अब ध्यान से देखते हैं टूवर्ड्स द स्क्रीन. अच्छा एक चीज बताओ, लेंस और फोकल लेंथ. इफ यू हैव चोजन अ लेंस, अगर आपने लेंस चूज कर लिया है, क्या उसका फोकल लेंथ फिक्स हो चुका है? यस, कम ऑन थिंक. इफ यू हैव फिक्स्ड वन लेंस, क्या उसका फोकल लेंथ फिक्स हो चुका है? यस और नो? यू टेल मी दैट. यस, कर्सिव में वैष्णवी यू कैन, बट इट शुड बी रीडेबल. नॉट अंडरस्टूड क्वेश्चन. सोनी डोंट वरी बच्चा, समझाता हूं मैं. बिल्कुल नूब गेमर है. यस, बस इतनी नॉलेज काफी है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. क्या मतलब? अब ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली. भाई इफ वी फिक्स अ लेंस, है ना, हमने अगर लेंस ले लिया, एंड नॉट आई लेंस, इफ वी फिक्स अ लेंस, लेट्स से कॉन्वेक्स लेंस, उसके अंदर पैरेलल रेज आ रही हैं, राइट? वेयर दे कन्वर्ज, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. सच बात है ना? दिस लेंथ इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ. ये हो जाएगा फोकल लेंथ, राइट? बहुत सही, वेरी गुड. नाउ दिस फोकल लेंथ इज फिक्स्ड. इमेज अगर ब्लर दिख रही है, इसका मतलब आपने स्क्रीन यहां रखा हुआ है, राइट? यू हैव केप्ट द स्क्रीन ओवर हियर. आपको क्या करना है? लेंस को पास लेके जाना है स्क्रीन के, सो दैट दिस लेंथ बिकम्स लाइक दिस, है ना? अगर आप लेंस को पास लेके जाओगे, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट दिस, कि भाई ये लेंथ तो फिक्स है ना? अब मेक श्योर कि ये पॉइंट यहां पर लाई करे. इसका मतलब लेंस को आगे लेके जा सकते हैं हम लोग, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ओवर हियर. सेम थिंग, we have to make sure that the image is forming on the screen. Correct? है ना? बस simple. अरे वाह, first session, welcome. Okay, I'm explaining in English. I'm saying if you choose a lens, the focal length becomes fixed. Means if you have chosen this convex lens, the focal length becomes fixed, right? Now, if you are saying that image is blurred, means you have kept the screen away or farther than the focal length. This is the focal length and you have kept the screen farther. You have to make sure that the point is falling on the screen. So what will you do? Sir, I'll make sure that my lens is shifted forward. Because if lens is shifted forward, it will form the image on the screen. Simple. Bas. Fine. So that's why the correct answer is towards the screen. Clear hai? Why not D? Either towards or away from the screen depending upon the position. It's a good thing. Who asked this? Srinivas. Very good question. Ab suno. A student obtains a blurred image of a distant object. The moment the question says distant object, जैसे ही question ने बोला distant object, मतलब the rays are parallel. है ना? Rays will be parallel. It doesn't matter if you keep the lens over here, here or here. The rays are parallel. भाई object तो distance है ना? So it doesn't matter. Parallel rays के अंदर wherever you keep the lens, the rays will be parallel only. तो क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए, ठीक है? Yes. Jiggle Master, I hope I explained this. Yes, है ना? That is why option D is not the correct answer, because the question has already said distant object. I hope this is clear. ठीक है? Yes. For concave lens also same condition. Concave lens पे तो screen पे image ही नहीं बनेगा ना. Concave lens forms what? Virtual images. It will not form on the screen. Infinity means beyond C. Infinity means very far from C. ठीक है? चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 73 ऑन योर स्क्रीन.
In the diagram shown, N1, N2 and N3 are refractive indices of the media 1, 2 and 3 respectively. Okay. Which one of the following is true in this case? You have 4 options. Answer it now. Yes. A, B, C, D I'll give you now. हाँ, DK18. Object position if you want to change that you can. ठीक है, but look at the options. बहुत तरीके थे. I could have brought the screen closer. मैं screen को close ले आता, right? I could have changed the position of object. तो बहुत तरीके हैं, but it depends on the options you have in front of you, ना? Yes. Black pen मत use करो. I would suggest you take blue pen only और pencil से बनाओ diagram. बस. Do we have options? A, B, C, D? Yes. Just joined, बच्चों. We are solving 100 most repeated questions of science. This is the second question from physics and question number 73 in total. Come on, A, B, C, D. We have 4 options in front of you. फटाफट. Come on, come on, come on. देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. This last year's question, 2022 question है, 1 mark का question है. Come on, let's do it. Don't use black pen. Suggestion is use only blue pen. Blue pen, ball point, gel, that's fine, but take backups, है ना? और try to make sure that you have same company pen, multiples. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेलो का ले गए, एक किसी और चीज का ले गए, किसी और का ले गए, ठीक है? सेम ले जाओ ताकि आपके पेन के कलर्स चेंज ना हो, है ना? और इसके अलावा पेंसिल से बनाओ डायग्राम. यस. डर लग रहा है? डरो मत बेटा. यस, कम ऑन. I'm going to stop it in 3, 2, 1. Stop. All right. Option B is 59%. Okay. ये क्या हो गया? Option B is 59%. Option D is 59%. My bad. पढ़ने में गलती. Option D is 59% and option B is 18%. हाँ, बहुत बढ़िया. देखो एक चीज बताओ. The only concept used in this question क्या है? When light travels from one medium to another, if it is going from denser to rarer, it bends away from normal. If it is going from rarer to denser, it bends towards normal. है ना भाई? Light की speed slow जाती है, towards normal bend करती है अगर वो जा रही है rarer से denser medium में. ध्यान से देखो. From N1 to N2, when light is going, it is bending towards normal. मतलब sir N2 is less than मतलब N2 is more than N1. सच बात है. N2 denser medium है ना, और denser medium का मतलब होता है high refractive index. Correct? Clear? Yes. If a medium is denser, it means it has more refractive index. Look at this. From N2, when light is coming into N3, it is bending towards normal again. मतलब sir N3's refractive index is more than N2. Now if N3 is more than N2 and N2 is more than N1, can we say that N3 is more than N1? And that, my friend, is the correct option. N3 is more than N1. N1 is more than N2. Wrong. Ye wrong. Wrong. And that's why option D is the correct answer. Clear hai? Everyone? Clear ho gaya? Easy question tha, hai na? Yes. Density, Shraddha, it's optical density. It means how much speed of light will slow down in that medium, and refractive index tells you that value, है ना? वो measure देता है आपको. ठीक है? Yes. Practice book तो कोई सा भी use कर सकते हो ना? Right? So everybody, I'm repeating it again. N2 is more than N1. Sir, how do you know? Because N2 में, when N1 से N2 में light ray enters, it is bending towards normal. That's why. N3 is more than N2. Sir, why? Because from N2 to N3 when light is going, it is bending towards normal. है ना? Bending towards normal means denser medium. Simple. Now, look at these two relations, and from that, option D becomes the correct answer. चलो बच्चों, next question. Come on. Yes. आ जाओ. अगले question पे आ जाओ फटाफट. If the image formed by a spherical mirror for all position of the object placed in front of it is always erect and diminished. ध्यान से पढ़ना question. बच्चों, आई एम टेलिंग यू, बोर्ड में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है? कैसे पढ़ते हैं?
if the image formed by a spherical mirror for all positions of the object placed in front of it is always erect and diminished. पहली चीज spherical mirror है कोई, ठीक है? Don't confuse सर, लेंस तो नहीं है, मिरर दिया हुआ है, it's a spherical mirror and image is always erect and diminished. What type of mirror is it? पहले तो कौन सा है? Good evening. Convex, 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 convex. बहुत बढ़िया. Draw labeled ray diagram to support your answer. अब बनाना है क्या? डायग्राम, ठीक है? Yes, डायग्राम बनाना है. सर, always erect and diminished. एक मिरर है जो हमेशा erect and diminished image बनाता है, right? There is one mirror which is always erect and diminished kind of image. Which one? Sir, convex mirror. Because convex mirror and concave lens, they both are there to make your life simpler. दोनों बोलते हैं सर आपको परेशानी नहीं करेंगे हम, right? I will always make virtual, erect and diminished image. Who says this? Convex mirror and concave lens. Simple सी बात है, right? So that's why. Next is labeled ray diagram to support your answer. अब डायग्राम बनाओगे, कितने बनाओगे? Yes. कैसे बनाएं? Good question भाई. एक डायग्राम तो बना दो ऐसा. डोंट वरी, ये चीज मेरे दिमाग में है. पैरेलल रे बनाना है ना? पैरेलल रे बनाना है, उसको डाइवर्ज कर देना है, करेक्ट? और डाइवर्ज करने के बाद दिस इज केस 1. सेकेंड केस क्या है? सर सेकेंड केस तो सिंपल वाला है ना, राइट? सेकेंड केस इज ऑब्जेक्ट, right? बस. And that's how you will get virtual, erect and diminished image. सिंपल सी बात है. बस यहां पर ये मार्क कर देना कि भाई this is C and this is F. ठीक? ओहो, अच्छा ये था. So डायग्राम सजेशन है, दोनों बना दो. Right? Make both the diagrams because this one is easy and this one is important. दोनों बना दोगे तो क्लोजर मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि बच्चे ने एक बना दिया, एक कम बनाया है. Both are simple diagrams, just draw them. ठीक है? Don't you worry about that. Always produces virtual, erect and diminished image. Yes. सूर्यांश, डायग्राम के ऊपर डोंट वरी बच्चा. I'll teach you exactly डायग्राम कैसे बनाते हैं. आज नहीं, मैं एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा तुम्हारे पास. इसकी बात हो गई है, ठीक है? बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया. So इसीलिए a convex mirror always produces virtual, erect and diminished image. डायग्राम बनाने जरूरी है दोनों. पहला है इंफिनिटी पे, दूसरा है कोई और पोजीशन पे, लेकिन हमेशा वर्चुअल, erect, diminished बनेगी इमेज. ठीक है, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 75 बच्चों, फटाफट. गॉट इट? वेरी गुड. यस, कम ऑन. Question number 75. Define the principal focus of a concave mirror. It's a subjective question है भाई, है ना? 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब सुनो जरा, ये लाइट से क्वेश्चन आ रहे हैं. इट मीन्स कि बहुत सारे लोग तुमको ये गारंटी देंगे कि इससे हमेशा एमसीक्यू ही आएगा, इससे हमेशा केस बेस ही आएगा. गारंटी किसी की नहीं होती. आई एम टेलिंग यू अगेन. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स गिविंग गारंटीज. इससे केवल एमसीक्यू ही आएगा, इससे केवल केस बेस्ड क्वेश्चन. कोई गारंटी नहीं है किसी की. गारंटी हमको कैसे होगी भाई? हम थोड़ी बना रहे हैं पेपर, राइट? सो देयर इज नो गारंटी, बट व्हाट इज गारंटीड कि भाई इस टॉपिक्स के अलावा कहीं और से नहीं आएगा. दैट आई कैन प्रॉमिस यू. ठीक है? यस. डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है. व्हेन यू से फोकस एंड व्हेन यू से प्रिंसिपल फोकस, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं. I have taught this before. अच्छे से पढ़ाया है मैंने. ठीक है? प्रिंसिपल फोकस पूछा हुआ है. It is desired to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 12 centimeters. Focal length of a concave mirror 12 centimeters is given to you. What should be the range of object distance in the above cases? Question clear है? Yes? Question clear है? Everybody, can you increase the font size of the comments once? हाँ, प्रीति, क्वेश्चन देखो बेटा, आपको सारे आसान नहीं मिलेंगे, सारे डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे, है ना? केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते क्या होता है ना, हम इजी में गलती कर देते हैं. तो इजी क्वेश्चन को इज्जत देना सीखो पहले, तो जरूरी है. मैंने बहुत बच्चों को देखा है, इजी क्वेश्चन में गंदा करके आ जाएंगे.
इजी है, आता है, प्रिंसिपल फोकस और फोकस में डिफरेंस पता है, कर दोगे ना, कर दोगे, बहुत बढ़िया। और लिख के देखो जरा फटाफट, टाइम दे रहा हूं लिखने के लिए, सोचने के लिए नहीं, कम ऑन। बिटवीन 12 एंड पोल, वेरी गुड, है ना, यस। अब सुनो जरा, इफ यू स्टार्ट विथ, पहले तो प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस अलग क्यों है? क्योंकि इट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस कहीं भी हो सकता है फोकल प्लेन में। प्रिंसिपल फोकस के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द इंसिडेंट रेज शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपने केवल पैरेलल इंसिडेंट रेज लिख दिया, if parallel incident rays fall on the mirror, they converge at a point called as principal focus. ये है पहली स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट स्टेटमेंट I just told you. Second statement is, if parallel rays which are, if rays which are parallel to principal axis fall on the mirror, they converge at a point called as principal focus. दोनों स्टेटमेंट में एक डिफरेंस है। मैंने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट में पैरेलल रेज फॉल ऑन द मिरर एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। सेकंड स्टेटमेंट बोला मैंने, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल ऑन द मिरर एंड कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? यस। आर यू एबल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज स्टेटमेंट्स? क्यों बोल रहा हूं मैं? गलती होती है इनमें, ठीक है? यस ऋषुराज बच्चा, आई विल टेल यू क्वेश्चन नंबर 80 पे, आई विल टेल यू दिस। पूजा, डायग्राम की जरूरत है? यस। श्रेया, अदीब, है ना? सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला वाला फोकस की बात हो रही है, प्रिंसिपल फोकस नहीं है वो, दैट इज प्रिंसिपल फोकस नहीं है वो, ठीक है? दैट इज फोकस। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग प्रिंसिपल फोकस। क्या है इंपॉर्टेंट थिंग? रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपने केवल पैरेलल रेज लिख दिया, गलत हो जाएगा। लिसन टू मी, ये गलती बहुत कॉमन है। बहुत बच्चे तेज बनते हैं और गलती करके आ जाते हैं, ठीक है? गलती नहीं होनी चाहिए, फाइन, ठीक है? यस। नेक्स्ट, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाना है। भाई कॉनकेव मिरर है, देयर इज ओनली वन केस विच इज एन एक्सेप्शनल केस इन विच इट गिव्स यू वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज, दैट इज व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट? पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, आई वुड सजेस्ट यू, ठीक है ना? सो सेकेंड, why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? List 2 reasons. बच्चों ये बड़ा कॉमन आंसर है ना? बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है ये, कि भाई 2 रीजन दो क्यों आप यूज करते हो कॉन्वेक्स मिरर को एज सर्वेलेंस मिरर, रियर व्यू मिरर। क्यों? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स यू वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ठीक है? सेकेंड, इट हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये ज्यादा एरिया देख सकता है ना? आपको, आपकी व्यू फील्ड बढ़ जाता है। सो इसीलिए ये हो जाते हैं 2 रीजन, राइट? नाउ आंसर, राइटिंग कैसे होनी चाहिए? सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग थिंग्स, इट्स अबाउट राइटिंग थिंग्स। केवल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला। नंबर दिमाग में होने के नहीं मिलते, नंबर नहीं मिलते कि दिमाग में है, नंबर मिलते हैं क्या तुम लिख सकते हो। कैन यू राइट अ गुड आंसर जो दूसरा बंदा समझ सके? इसमें राइटिंग पढ़ने लायक होनी चाहिए, आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आंसर लुक्स लाइक, इसलिए दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? Principal focus of a concave mirror is the point at which the light rays that are parallel to principal axis of the mirror converge on its principal axis after reflection. Principal focus, light rays that are parallel to principal axis. यहां गलती होती है हद से ज्यादा, ये नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं चाहिए मेरे को। आई एम टेलिंग यू द, ठीक है? एवरीबॉडी, स्मार्ट किड्स आई हैव सीन मेकिंग दिस मिस्टेक, आई डोंट वांट दिस मिस्टेक, ठीक है? Next, concave mirror produces virtual image when the object is placed between principal focus and pole. मतलब range of object distance for getting erect image is between 0 and 12 centimeters. Between 0 and 12 लिखना जरूरी है। अगर तुमने ये लिख दिया range is from 0 centimeter to 12 centimeters. Can someone tell me, is there any difference between writing this एंड दिस? ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे करता हूं, बिटवीन 0 एंड 12 एंड रेंज इज फ्रॉम 0 टू 12। क्या इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है? यस और नो? मोहम्मद मेरे दोस्त, पीडीएफ यूल गेट, डोंट वरी, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे लेकिन सॉल्यूशन यही मिलेगा। क्या इन दोनों चीजों में डिफरेंस है? बिटवीन 0 एंड 12, रेंज इज फ्रॉम 0 टू 12। फ्रॉम मीन्स, वेरी गुड विनायक, बहुत बढ़िया बेटा। फ्रॉम मीन्स 0 टू 12, इसका मतलब पता है क्या है? रेंज 0
से 12, यानी कि 0 भी इंक्लूडेड है, 12 भी इंक्लूडेड है, विच इज नॉट द केस. रेंज होनी चाहिए 0 से 12, मतलब 0 एंड 12 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस रेंज. इसीलिए दिस थिंग इज बिटवीन एंड दिस थिंग इज इंक्लूडिंग 0 एंड 12. ठीक है, ये हुआ रेंज वाला स्टेटमेंट, ये हुआ बिटवीन वाला स्टेटमेंट, एंड दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट. गलती नहीं चाहिए. ठीक है, यस, करेक्ट. ठीक है बच्चों, ऐसा लग रहा होगा, सुनो जरा, यू माइट बी थिंकिंग कि सर छोटी छोटी चीजें हैं, क्यों बता रहे हो, हमको तो पता ही है. ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां मैक्सिमम गलतियां होती हैं और बहुत तेज बच्चों की होती हैं. बच्चे हु कुड हैव स्कोर्ड 99 मार्क्स, 100 मार्क्स, उनके मार्क्स 95 हो जाते हैं, 94 हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दीज सिली मिस्टेक्स. ये मिस्टेक्स इसीलिए नहीं होनी चाहिए. ठीक है, टाइम स्पेंड इसीलिए हो रहा है. चलो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 76 ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, यस, बढ़िया, आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 76. 2020 में दिस वॉज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, दिस वॉज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. कम ऑन पार्वती, आई सेड बच्चा, रेंज में between 0 and 12, it means 0 and 12 you are not including, and when you say range is from 0 to 12, it means you are including 0 and 12 also, which is wrong, right? So between 0 and 12 is the correct answer. Yes, मोनिका बच्चा, फोकस एंड प्रिंसिपल फोकस में कुछ नहीं होता है. प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर रेस कन्वर्ज करेंगी, so this will be प्रिंसिपल फोकस. लेकिन अगर रेज पैरेलल हैं बट नॉट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तब वो कन्वर्ज कर सकती हैं ऊपर नीचे भी. ये फोकस है. ठीक है, एंड दिस वन इज प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एक ही होता है, फोकस बहुत सारे हो सकते हैं. फाइन, चलो चलो, कमान कमान कमान. क्वेश्चन नंबर 76. Draw a labeled ray diagram to show the path of a ray of light incident obliquely on the one face of a glass slab. कर लोगे? Yes. Yes. वन 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बहुत बढ़िया. ठीक है, अब सुनो जरा. Labeled ray diagram to show the path of a ray of light incident obliquely on one face. Obliquely मतलब क्या होता है? See, there are two ways light ray can incident. First is normally. So this is called as normal incident of the light, है ना? This is the normal incidence. Obliquely मतलब होता है at an angle, right? This is called as oblique form of incidence. ठीक है? So when light ray falls obliquely, कुछ नहीं करना है, at both the faces just follow the basics of refraction. मतलब rarer to denser towards normal, denser to rarer away from normal. सिंपल सी बात है. देखो भाई, light ray without glass slab would have gone like this, लेकिन glass slab होने की वजह से at this first point it bends towards normal, which is here. Second interface, it is going from glass to air, means it bends away from normal, which means like this. Emergent ray और incident ray पैरेलल रहनी चाहिए. ठीक है, these are small things which all of you should have in mind. दिमाग में ये सब रहना चाहिए. क्यों? आप जब डायग्राम बनाते हो ना, ये दिखना चाहिए आपके डायग्राम में कि आपकी emergent ray और incident ray दोनों. डाउट प्लीज पूछो. ठीक है, हाँ, फॉर ICSE ऑल्सो बच्चा. यस, ओनली दीज क्वेश्चंस, आरुषि, conceptually these questions come. I cannot and no one can promise you that this question will come. ठीक है, इन questions जैसे question ही आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा. conceptually. yes, ऋषिराज, I'm coming to this बच्चा. very good. ठीक है, ये हो जाएगा डायग्राम. अब सुनो, absolute refractive index क्या होता है? It is the refractive index of material with respect to air or vacuum. उसको बोलते हैं absolute refractive index, right? Speed of light in vacuum or air, right? Vacuum or air upon speed of light in medium. ये होता है absolute refractive index. ठीक, इसके बेस पे आप बना ही सकते हो. Calculate the refractive index of material for glass slab. क्या दिया हुआ है? ग्लास स्लैब में स्पीड दी हुई है एंड एयर में स्पीड दी हुई है. मतलब
Sir, 3 into 10 to the power of 8 upon 2 into 10 to the power of 8. What is it? Sir, 1.5 is the answer. It is the refractive index of glass. Bunch, maybe. Rifia, but don't worry, bacha, you won't miss anything. Yes. हाँ, very good, very good. ठीक है? So, this is how you will draw the refraction through a glass slab. Next is about numerical. That is very simple. 2, ये दिया हुआ है speed of light through the glass slab. This is the speed of light through air. And absolute refractive index, you have to give the formula first and then you have to calculate and get the answer as 1.5. Simple सी बात है. And now I think Sony was asking that why don't we have spectrum in the glass slab? Because as much bending happens towards normal in this case, equally the bending happens away from normal. So light kind of combines itself, है ना? इसीलिए. और इसमें ज़्यादा enter नहीं करूँगा मैं because this question won't come. Asiya, because it's a ratio, no? Meter per second upon meter per second. Meter per second get cancelled, इसीलिए, ठीक है? Rifia, lateral displacement is this, बच्चा. Emergent ray and incident ray both are parallel, but there is a separation between them. This is what we call as lateral displacement. Cool. Chalo. With this question is also done. Easy question था, correct? आ जाओ. Yes. Calculate the focal length of a lens if its power is minus 2.5 diopters. It's a very easy question. Bhai, power is what? It is 1 upon focal length in meters. Matlab, focal length would be 1 upon power. So focal length would be 1 upon minus of 2.5. Solve कर लो. कितना आ रहा है? 4. So, हाँ. Yes? है ना? So, focal length is 4. हाँ. Correct? Not getting? अरे भाई 1 upon minus of 2.5, 10 upon 25, right? So what are you getting? 0.4. This is 0.4 meters. You convert into centimeters. It is minus. So minus of 40 centimeters, my friend, is the answer. Yes. कैसे करते हैं सॉल्व? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कनेक्ट करती है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और बहुत बहुत लंबी होती है ना, इन्फिनिटली लॉन्ग होती है. इमेजिनरी एक्सिस है. मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, अली आंसर हमेशा सेंटीमीटर्स में आएगा फाइनली, क्योंकि 0.4 मीटर्स को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर्स में. लेकिन फॉर्मूले के अंदर इट इज बेटर टू यूज मीटर्स. कंफ्यूजन नहीं होता. बहुत सारे बच्चे सुनो, लिसन टू मी किड्स, अ लॉट ऑफ पीपल लर्न दिस फॉर्मूला लाइक दिस. पावर इक्वल्स 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स. पावर इक्वल्स 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स. भाई बोथ द फॉर्मूलेज आर सेम ना, दोनों फॉर्मूले तो सेम ही है. क्यों डबल फॉर्मूला बनाना है? हमेशा यूज ओनली वन फॉर्मूला और उसमें इसके बाद सेंटीमीटर निकाल दो. Like this, you got the answer as 0.4 meters, right? Minus of 0.4 meters. Convert कर दो सेंटीमीटर्स में, क्या ही है इसमें, right? है ना? ठीक है? Very good. चलो, question number 77. आ जाओ, come on, forward. अरे वाह, very good Vansh. Yes, come on. बच्चों, 77. It's a good question. अच्छा question है. Solve करो सबके सब फटाफट. A real image 2/3 of the size of an object is formed by a convex lens when the object is at a distance of 12 centimeters from it. Find the focal length of the lens. Come on, answer चाहिए मेरे को. Physics easy in boards. Suhani, it is. Actually, from past few years, the board paper was kind of easy, but this time the practice paper थोड़ा सा डरा दिया बच्चों को. तो इसीलिए हम कुछ बोल नहीं सकते. फिजिक्स नॉर्मली आसान ही आती है, आई एम टेलिंग यू. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे बच्चा तो सब कुछ भारी लग सकता है ना. 8 अनुराग इज सेइंग, ओके.
नीला प्रिंट, हाँ, यस, Arushi, yes. If these 100 PYQs you solve properly, you absorb them and conceptually आप clear हो जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता. Yes. Plus 24, Tanisha is saying. Kritika is saying 8 centimeters, 18 centimeters, 8 centimeters. हाँ, okay. सुनो जरा. आयुष, नीला प्रिंट. यार मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ऑल राइट, लिसन टू मी. पहली बात एक चीज बताओ. अ रियल इमेज 2/3 द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है. मैग्निफिकेशन कितना है? पहले ये बताओ, हाउ मच इज द मैग्निफिकेशन? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? इज इट +2/3 और इज इट -2/3? If you are able to answer this question first, आपका आधा सवाल हो गया. Come on. (2/3). Kritika is saying -2/3, +2/3. Komal is good. You're saying blue pen. अरे I know हिंदी यार. प्लस माइनस माइनस. बच्चों एक बात बताओ, हो गई गलती भाई. यहां गलती क्यों हुई पता है? अब एवरीबॉडी दैट ब्लू पेन वाला चीज आई विल टेक केयर, अभी नहीं. एग्जाम में ब्लू पेन लेके जाओ और पेंसिल लेके जाओ, ब्लैक पेन की जरूरत नहीं है. आइडियली हाईलाइट करने के लिए यूज करना है तो कर लो, लेकिन आई वुड सजेस्ट हाईलाइट पेंसिल से ही कर दो यार. ठीक है, सेफ साइड है, ब्लू लिखा हुआ है, ब्लैक कहीं नहीं लिखा हुआ है. ब्लू पेन और पेंसिल यूज कर सकते हो डायग्राम के लिए. अब सुनो जरा भाई, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस. कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस? सर ऐसा होता है ना. कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों एक जैसे ही होते हैं. दे ऑलवेज फॉर्म रियल image or inverted image except one condition when the object is kept between pole and focus, है ना. So अब ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि भाई convex lens is forming a real image बना रहा है convex lens. इसका मतलब it is inverted. सोच के देखो, just think for a moment, is it possible for a convex lens to form a real and erect image? No. There is no case. Only when the object is between optical center and focus, it forms virtual, erect and magnified image. इसके अलावा it always forms real and inverted image. भाई diminished, magnified अलग चीजें हैं, लेकिन inverted तो बनेगा. So magnification will be m equals -2/3, and this, my friend, is the first checkpoint. If you are clear with this, ये question आसान है. Otherwise, this question will take away the marks. Clear? Yes. ठीक है? श्रद्धा बच्चा, it's a long question, but हाँ ठीक है. वेरी गुड. सो -2/3 यहां पर आई डोंट वांट एनी डाउट. ठीक है, यहां कोई डाउट नहीं आना चाहिए. ध्यान से सुन लो. अब आगे चलते हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर्स, सर यू कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर्स. साइन कन्वेंशन, लेफ्ट में है तो -12. भाई लेंस अगर ऐसे है तो ऑब्जेक्ट तो यहीं रखेंगे ना, ये लेफ्ट में रहेगा. करेक्ट? ठीक है, वेरी गुड. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अच्छा एक चीज बताओ, बिफोर इवन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव की पॉजिटिव? कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब फोकल लेंथ शुड कम टू बी पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव आएगी मतलब सब सही किया है, अगर नेगेटिव आ गई मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है. ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व इट नाउ. सर u इज गिवन टू यू, m इज गिवन टू यू. व्हाट इज द फॉर्मूला? सर जी v अपॉन u इक्वल्स मैग्निफिकेशन, राइट? सही बात है. v अपॉन यू इक्वल्स m इज इक्वल टू hi अपॉन ho. सॉल्व कर लो जरा. v अपॉन u, v अपॉन -12 इज इक्वल टू -2/3.
माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 3 4 4 2 8, v इक्वल्स 8 सेंटीमीटर्स। अच्छा v पॉजिटिव आया, ध्यान से सुनना, v पॉजिटिव आया, इसका मतलब सर इमेज राइट साइड बन रहा है। सही बात तो है, करेक्ट है ना, इमेज राइट साइड तो बनेगा। अगर रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, मतलब इमेज इज टू द राइट। अगर इमेज लेफ्ट बनता, इफ इमेज इज टू द लेफ्ट, इट मींस इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड वाला केस। हियर इमेज विल बी टू द राइट ओनली, मतलब v इज करेक्ट। चलो v आ गया 8 सेंटीमीटर्स, u है -12, अब तो सॉल्व हो जाएगा, राइट? सिंपल, दिस इज द लेंस फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई दैट, सिंपल सी बात है। u इक्वल्स माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर्स, v इक्वल्स 8 सेंटीमीटर्स, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स 1 अपॉन f। सॉल्व कर लो जरा, आपको f निकालना है। सो 1 अपॉन 8 माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब सॉल्व करो, कितना आएगा? 24, राइट है ना? 8 3 माइनस ऑफ, और ये माइनस नहीं आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, यानी कि 24/5 इज इक्वल टू f। कितना आ रहा है? 5 4 20, 4.8 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू f। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, which is fine, it's a convex lens. The answer would be 4.8 centimeters, मेरे दोस्त। Yes, correct. Albin, if image is inverted is negative, that's all right, sir. हाँ, if image inverted is negative, yes. In convex lens and concave mirror, if image is inverted, it's real, guaranteed. Yes, and m will be negative. हाँ सोनी, यू आर राइट बच्चा। आदित्य, ब्रेक तो यार मैं बोलूंगा खत्म ही कर देते हैं ना फटाफट, है ना? आई अंडरस्टैंड, आंखें दर्द हो रही होंगी। हाँ हेली, competency based questions, whatever questions we take, no, lot of are competency based, and today also I have few competency based questions, ठीक है? Solve कर लेंगे। This is a kind of competency based question. If you look at this question, है ना, it's a practical approach, practical oriented based question, so that's why this is what we call as competency based question. Come on, ध्यान से देखो। प्रीति, obviously बच्चा, it's possible. अगर v पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होगी? अगर v पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, मतलब इमेज इन्वर्टेड होगी, इमेज रियल होगी, ठीक है? यस। हाउ फोकल लेंथ इज पॉजिटिव? जस्मिता, बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस, रेज पैरेलली आएंगी एंड दे विल फॉल ऑन द राइट साइड, दैट इज व्हाई। यस, कम ऑन, इट्स अ केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। A compound microscope is an instrument which consists of two lenses L1 and L2. बच्चों ध्यान से देखो, in case based questions, first of all read the case, then read the question. केवल केस पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना, because the case will always seem to be difficult, है ना? केस पढ़ के डर लगेगा पहले एक बार के लिए, डरना मत, क्वेश्चन पढ़ना आसान होते हैं ये, है ना? इनसे अगर डर लग गया पढ़ते ही, आधा खेल खत्म, ठीक है? Don't be scared of the cases, only by the cases. Read the questions also. ठीक? A compound microscope is an instrument that consists of two lenses. भाई दो लेंस होते हैं, L1, L2, ठीक है? Lens L1 is called objective. It forms a real, inverted and magnified image of the given object. अच्छा, sir, a lens which can form real, inverted and magnified image, मतलब convex lens. Okay? This serves as the object for the second lens L2, the eyepiece. The eyepiece functions like a simple microscope or magnifier. Which lens is a simple microscope? Yes. Shreya, question number 80 pe, surprise I'll tell you. Preeti, you are right. Convex, है ना? Simple microscope is a convex lens. Simple microscope or magnifier, it produces the final image which is inverted with respect to original object, enlarged and virtual. So यानी कि ये सोचो, L1, L2 दोनों कैसे हैं? सर convex lens है. And if you remember the practice paper which came for you guys, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था टेलीस्कोप को लेके, जबकि सिलेबस में नहीं है, माइक्रोस्कोप सिलेबस में नहीं है, बट दिस कैन कम. क्यों? लेंसेज हैं, राइट? रे डायग्राम्स हैं. सो मे बी दिस क्वेश्चन इज पॉसिबल. टेलीस्कोप वाला क्वेश्चन दे रखा था प्रैक्टिस पेपर में, आसान क्वेश्चन था वो,
राइट? ठीक है, so this diagram let's assume it is given to you. कोई बनाने के लिए नहीं बोलेगा. Important, nobody will ask you to draw this diagram, right? This will be given to you because these things are not there in your syllabus, but lenses are there and ray diagrams are there. ठीक है? अब सुनो, first question, it's an objective question. What types of lenses must be L1 and L2? We just did this. अभी तो किया हमने. सर जी दोनों convex होंगे. Both will be convex lens. Clear? बहुत बढ़िया. Question number 78 करते हैं. What is the value and sign of magnification and according to new Cartesian sign convention? ये बता दो जरा. Value and sign of magnification according to new Cartesian sign convention of image formed by L1. ये रहा L1. You tell me. Option A, B, C, D. Option B, 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 B. अरे नहीं यार, मुंबई कर हो जाएगा. अरे आसान क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं. हमको ना जैसे ही पढ़ते हैं टेलीस्कोप, सर माइक्रोस्कोप, हो सर माइक्रोस्कोप पूछ लिया, क्या करेंगे? अरे क्वेश्चन तो पढ़ो, सारी इंफॉर्मेशन दे दी है. ये क्वेश्चन तो वो हैं जो हम वैसे भी कर लेंगे. ये केस बेस्ड क्वेश्चन ना भी होता हम कर लेते. ऐसा ही क्वेश्चन है ये, राइट? है ना? करेक्ट. So I'm telling you, the moment we hear the words like microscope and telescope, we get so scared. We feel like, oh my God, what should I do? What should I do? No, arey, this question is very simple. If you just read this question, it does not relate it to the case. You can solve it anyways. Okay? Fine. Yes, come on. Value and sign of magnification. A lot of people are saying B. Is it? Sita, I'm coming to the surprise, bacha. A lot of people are saying option B. Now I can see option D. Thank you. Thank you for correcting this mistake. बच्चों ध्यान से देखो यार. Just look at this. Object is above principal axis. Image is below principal axis. Image is magnified. Sir, how do I know? Read the case. है ना? Just read the case. Real, inverted and magnified image. A convex lens, when forms a real inverted magnified image, it means magnification's value is more than 1. Sign will be negative because sign tells you it is inverted or erect. है ना? ये बात हमने कर ली है. We have done this previously also. The sign of magnification tells you if image is erect or inverted. If it is inverted, sign will be negative. If it is erect, sign will be positive. If it is more than 1, image is magnified. If it is less than 1, image is diminished. इतनी सी बात है, right? अब ध्यान से देखो, the answer would be more than 1 and sign would be negative. Correct? बहुत अच्छे. Next, what is the value and sign of magnification of the image formed by L2? L2 का बताना है. L2. Yes. What about this? हाँ. DK, J3, बच्चा don't worry. See, English, Hindi ना, you won't miss anything. Just focus on the content. आप बस content पे focus करो, आपका कुछ miss नहीं होगा. Value of image, नहीं source. Option B is 49%. हाँ? हाँ. Heli, बच्चा, I'm saying, see, height of object is above principal axis, मतलब it is positive. Image is below principal axis for L1, right? For L1, image is below principal axis, मतलब HI is negative. What is M? It is HI upon HO. It is minus upon plus. Answer is minus. Okay, fine. Very good. Now, everybody, question is asking you about L2. Now, L2, if you read the case again, okay? If you read the case again, simple microscope, which case? Simple microscope case is when both object and image are on the same side, when the image formed is virtual, erect and magnified. है ना? अब ध्यान से देखो, look at this diagram. And I want all of you to understand this. ध्यान से. Sir ji, height of object. Bhai, this is acting as an object for L2. है ना? Height of object is, sir, negative. Why? Below principal axis है ना? Height of image is how much? Sir, if we trace it back, this is the image.
Image is also below principal axis. Negative again. What is magnification? M is height of image upon height of object. मतलब sir, negative upon negative cancel out, positive. Magnification sign will be positive, right? What about value? It's a magnified image, more than one. The answer would be option B. More than one and sign is positive. Yes, as image is erect, M is positive. Farhan, you are right, bacha. ठीक है? हाँ, Shraddha, don't worry, bacha. No timeouts. Arey, in confusion it might happen here sometimes. Correct. So that's why option B is the correct answer. Develop a mentality to solve these questions. रटने का नहीं. Don't cram things. Develop your mentality. That is the only thing which will help you out. रटने से होंगी गलतियां. वो नहीं चाहिए. ठीक है? Principal axis and parallel. Yes. Correct. Very good. So as I just told you, पैराक्सिल होता बच्चा जो एक्सिस से पास करता है. ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस से जो पास करेगा ना वो पैराक्सिल रे हो जाएंगी. नॉट अंडरस्टूड. L2. In L2, object and image are on the same side of the principal axis. That is why sign is positive, right? Magnification is nothing, height of image upon height of object. Means negative upon negative over here. Why? Sir, object is below principal axis. Image is also below principal axis. Both are negative. Negative upon negative is positive. That is why magnification is positive. ठीक है? भाई second case कौन सा simple वाला ही तो है, right? है ना? चलो आगे आ जाओ. Come on. If power of eyepiece is 5 diopters and it forms an image at a distance of 80 centimeters from the optical center, at what distance should the object be? Now this question is numerical, which is again solvable. Yes. Bhavishya, bacha, diagram I can explain you, but you know what? I don't want to, because if I explain this diagram, no, you will only focus on diagram. Diagram is very simple. Just look at both the lenses separately and you will understand it. पहला case है कौन सा? Object is between focus and center of curvature. Second case for L2 कौन सा है? When object is between principal focus and optical center. Yes. Figure will be given, Anshul. हाँ, Anshul ये figure given था. श्रद्धा, I just explained ना बच्चा. Focus कहीं भी हो सकता है. Principal focus principal axis पे होगा. Yes, come on. We have the poll live. It's okay, Pooja. It's okay, bacha. Don't worry. Yes, everybody. If power of eyepiece is 5 diopters and it forms an image at a distance of 80 centimeters from its optical center, at what distance should the object be? Question is very easy. Just don't be confused. Yes? Come on. This is a case-based question. It's a very important question, and similar question came in the practice paper which included telescopes. Similar question आया था practice paper के अंदर. ठीक है? We are preparing for tough questions also. Not all easy questions will be there. ठीक है? अरे नहीं, it's okay बच्चा, पूजा है. नहीं, speed will not be your call. चलो, ठीक है? 174. अरे टाइम लग रहा है क्या सॉल्व करने में? Yes, come on. 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. आदित्य, it's okay बच्चा. अरे होती रहती हैं यार गलतियां. Don't worry. Option B is 45%, which is kind of a good thing only. भाई, power is given to you as 5 diopters. मतलब what is given to you? Sir, focal length 1/5 is how much? Sir ji 0.2 meters. Means focal length is how much? Sir, 20 centimeters. Okay, focal length is 20. Sir, plus 20 minus 20. It's a convex lens. It's a convex lens. मतलब focal length will be plus 20 centimeters. Done.
forms an image at a distance of 80 centimeters. V is, sir, 80 centimeters. Plus or minus? You tell me that. V is plus or minus? What is eyepiece? Seema, it was given in the case paragraph. Plus or minus? Hello, Diksha. Yes, come on. 80 plus है minus है? Plus, Amrita is saying. Good evening, Riti. Minus 16, Nikhil is saying. हाँ. Minus. अरे सर क्यों? बच्चों, focus at the diagram. The diagram is given to you in the question. है ना? This is U. U is to the left. So U is negative. This, my friend, is V. This is the image, na? This is the final image. It is to the left. It is negative. So V is negative. Matlab V is minus of 80 centimeters. F is plus 20 centimeters. If you did this much right, your question is done. Next is only calculation. ठीक है? Clear? Minus क्यों लिया? Clear है? अरे डायग्राम देखो. This diagram is giving all the hint. केस के अंदर यही होता है. Lot of times case will give you all the answers. ऐसे confuse नहीं होना. ठीक है? Yes. नहीं. फरहान, no. V is negative because image is to the left. It is not because it is inverted. If it is inverted, height of image will be negative, not V. Clear? ठीक है ना? So V is minus 80, F is plus 20. Solve कर लो अब और क्या है ना? You have to find what? You have to find U. So 1 upon V minus 1 upon U equals 1 upon F. अब इसी फॉर्मूले के अंदर सिंपल क्या निकालना है? U निकालना है ना? So 1 upon V minus 1 upon F equals 1 upon U. अब रख दो. So 1 upon minus of 80 minus 1 upon 20 is equal to 1 upon U. 80 LCM आ गया है, right? Minus of 1 and minus of 4 is equal to 1 upon U. So it's coming out to be minus of 80 upon 5 is equal to U. Solve करा जाए अगर कितना होता है? 16 5s are 80 है ना? So minus of 16 centimeters equals U. My answer is coming out to be minus of 16 centimeters. Sir, answer is minus. That is correct because U will be on the left only. Minus ही तो आना चाहिए था, है ना? अब ऑप्शन देखो 12, 18, 16, 20. अरे वाह सर, 16 is the answer. Option B is the correct answer. Yes. Clear? Not understood the case. सुहानी बच्चा, केस कुछ नहीं बोल रहा था. केस केवल ये बोल रहा था, पहले वाले लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरे को बोलते हैं आईपीस. पहला बनाता है रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज, दूसरा बनाता है मैग्नीफाइड इमेज एंड वर्क्स विद सिंपल माइक्रोस्कोप. केस केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है. केस आपको समझने के लिए नहीं है. केस इज ओनली देयर टू आस्क यू फर्दर क्वेश्चन और केस आपको हेल्प आगे करेगा. ठीक है? सो केस पे टाइम मत लगाना कि सर हमको केस समझ नहीं आ रहा. मैं इसलिए बोला व्हेन यू रीड द केस, रीड द क्वेश्चन जस्ट आफ्टर इट, because questions sometimes might not be related to the case, है ना? You might do it like this. ठीक है? Yes. How many questions are left? We have 21 questions left. Yes. Priyanshu, I couldn't see it out, bacha. Hoppy brothers, not sure, na? It doesn't matter. Keep your preparation good. May be difficult, may be easy. How does it matter? Why is image inverted? Why is image inverted? Because of the cases, right? Diagram बच्चा is not required. I'm telling you. डायग्राम समझने जाओगे टाइम वेस्ट करोगे, मत सोचो इतना. बस डायग्राम में रे डायग्राम देखो ना. फर्स्ट रे डायग्राम वाज ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. सेकंड वाज ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. यस ठीक है. कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 79. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट? 1 मार्क क्वेश्चन है ये. कम ऑन, वेरी क्विकली. ABCD. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट? गलती नहीं चाहिए. Read the question carefully because silly mistakes can happen in this question. Option A, color of the scattered light depends on the size of particles of the atmosphere. Option B,
red light is least scattered in the atmosphere. Option C, scattering of light takes place as various colors of white light travel with different speed in air. Option D, the fine particles in the atmospheric air scatter the blue light more strongly than red, so the scattered blue light enters our eye. Acha. Priyanshu, answer is between C and F, because you want a real image na, and you want a magnified image. Answer would be between C and F. ठीक है? Yes. We have 214 votes. I'm waiting for 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. ठीक है, लास्ट में I'll tell you why V was negative. Option C is 53%. Very good. भाई ऑप्शन C, ध्यान से देखो, पहली चीज तो it is which one is not true. Which one is not true is the question. No. Color of scattered light depends on size of particles. Yes, you are right. Smaller particles scatter smaller wavelength. Larger particles scatter larger wavelength. Very good. Red light is least scattered in the atmosphere. Red bends the least, scatters the least. Violet bends the most, scatters the most. ये तो हमको याद ही है. मतलब सर ऑप्शन B is also correct only. ऑप्शन D देखते हैं. The fine particles in the atmospheric air scatter the blue light more strongly than red, so the scattered blue light enters our eyes and the sky looks blue. Option 4 is the answer of why sky looks blue and not red. क्यों? क्योंकि blue scatter ज्यादा होता है. ठीक है. Option C, scattering of light takes place as various colors of white light travel with different speed in air. कोई मेरे को बताएगा? Option C, can I replace scattering with a word to make sure this statement becomes correct? क्या मैं इसमें स्कैटरिंग को हटा के कुछ डाल सकता हूं? यस. सीबीएसई लॉन्च कॉम्पिटेंसी बेस्ड. हाँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं बच्चा, थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस. Rosanna, correct. You are right. DK18. Preeti, correct. Dispersion is correct. Preeti, correct. Yeah, very good, very good. Dispersion. हाँ, you are right. है ना? यहां पर अगर मैं डिस्पर्जन कर दूं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रैवल डिफरेंट स्पीड, ये डिस्पर्जन का आंसर है. स्कैटरिंग इसलिए नहीं होता है. ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी माय फ्रेंड इज द रॉन्ग आंसर एंड दैट इज व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अच्छा ठीक है. जस्ट वन स्मॉल थिंग, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में वी नेगेटिव क्यों आया था. भाई लास्ट क्वेश्चन, इफ यू थिंक L2 यही तो था, राइट? दिस वाज द L2 ना, करेक्ट? जस्ट इन्वर्टेड. ये पूरा सेगमेंट फ्लिप्ड था नीचे की तरफ, राइट? यही केस तो था L2 का, राइट? दिस वाज द केस वी हैड, ओनली इट वाज फ्लिप्ड एंटायरली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट? सो इसीलिए V लेफ्ट में है, U लेफ्ट में है. अच्छा सुनो, साइन कन्वेंशन एक बार और. साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? लेफ्ट में अगर चीजें हैं तो नेगेटिव, पॉजिटिव, अपसाइड इज पॉजिटिव, डाउन साइड इज नेगेटिव. U and V are left or right, not up and down. Up and down is HI and HO, height of image और height of object होती है ऊपर नीचे, not V and U. ठीक है, इसीलिए हमने V को बोला नेगेटिव. ठीक है. यस श्रद्धा, अर्ली सनराइज डिलेड सनसेट वी हैव डन पहले भी, लेकिन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्यों? क्योंकि लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, रीचेज योर आई एंड योर यू फील कि भाई सन नीचे नहीं ऊपर है, राइट? दैट्स व्हाई. यस यू आर राइट. देन इमेज वर्चुअल रेक्ट, करेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 80 बच्चों. इसके बाद आई टेल यू अ स्मॉल थिंग रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी. स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरी क्लोज, हाँ, डिफरेंट स्पीड मतलब डिफरेंट बेंडिंग मतलब डिस्पर्जन, नॉट स्कैटरिंग, एंड दैट इज व्हाई. कम ऑन, assertion reason in front of you.
हाँ, dispersion is because of different bending of colors. Scattering is because they get absorbed by the particles and then are re-emitted. ठीक है? हाँ. Yes, Aditya, I know, बच्चा. I'm telling you. Come on. Next one, next question. Assertion reason है, 4 options. Assertion is saying, while passing through a glass prism, the red component of white light deviates the most and the violet component the least. थोड़ी देर पहले किया था. Reason क्या बोल रहा है? For glass, the refractive index for violet light is highest and for red light it is lowest. Yes. Come on. Yes. भाई एक चीज बताओ. While passing through a glass prism, red component of white light deviates the most. Red bends the least, scatters the least. Deviation means bending only in a way, right? The light which bends the most will deviate the most. Red deviation कम देगा, right? It will deviate the least. So assertion is wrong. Deviation of red will be least, right? And violet will be most. Okay. Reason, for glass, refractive index for violet light is highest. The light which is bending more will have high refractive index, right? Bending depends on how much refractive index that light के लिए the material has, right? The material has high refractive index for violet color's wavelength, right? So that's why violet will bend most. इसीलिए refractive index for violet light is highest and for red light it is lowest, and that is why violet will bend the most, deviate the most, tick, and red will bend the least, deviate the least. So reason is correct, and that is why my friend option D is the correct answer. Yes, correct, Farhan. Suhani, if incident light is going from denser to rarer and the angle is more than critical angle, it gets totally internally reflected. ठीक है? Hello, Disha. Yes? हाँ. Anonymous, ये पूरा setup उल्टा लगा होता है. This whole setup is inverted basically, right? Why not at F1? Why not at F1? Where? Which question? Is it? Yes. Very good. चलो आ जाओ. अपूर्व, delayed sunset and red color of sky during sunrise and sunset is deleted. चलो ठीक है बच्चों. See, सरप्राइज की बात हो रही थी. For electricity, while you guys were taking this session, we uploaded one short on the channel, on the same channel, ठीक है? And that was for electricity. And this short was meant to make your life easier for electricity, ठीक है? अभी तुम्हारे पास time नहीं है, but lot of you are scared about heating effect of current और इसके अलावा equivalent resistance, ठीक है? So that's why इस short के अंदर I have, yes, all right, in this short I have made sure that you understand how to make your life easier, how to complete electricity chapter very easily, ठीक है? एक short जब तुम लोग सेशन में थे आज एक शॉर्ट अपलोड कर दिया है हम लोगों ने रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कि इस चैप्टर को जल्दी खत्म और इफेक्टिवली खत्म कैसे करना है, ठीक है? यस, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा अभी, बट देख लेना. यस, दिस इज लाइव. फाइन, ठीक है? The reason this was a surprise because you guys were busy in this session and this short was uploaded on the channel. आप लोग साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ, ये 100 क्वेश्चंस वाला. इसी बीच में ये शॉर्ट हमने अपलोड किया है अब भी बिकॉज टाइम नहीं था तुम्हारे पास. दैट्स व्हाई. यस, ऑलराइट, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है?
गेटिंग कॉन्फिडेंस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। जो बच्चे बाद में आए हैं, जो बच्चे लेट आए हैं, हम लोग कर रहे हैं 100 मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर साइंस। एंड आपका काम है, पहली बात सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं कर रखा है अब तक, क्योंकि अभी बहुत कुछ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग रिवीजन करेंगे, बोर्ड तक विल मेक श्योर दैट यू आर अप टू डेट, सब तैयार है तुम्हारा, ठीक है। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कर ही रहे हैं। एंड सेकंड इज प्रेस द लाइक बटन राइट नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 81 एंड स्पीड पकड़ेंगे एवरीबॉडी, लेट्स गेन सम स्पीड। यस, डिफिकल्ट इन पावर, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ accommodation, राइट द मॉडिफिकेशन, हाँ, curvature of eye to see the objects clearly। बच्चों दिस क्वेश्चन ना, इन दिस क्वेश्चन I have given you a very nice trick which is always applicable। पास का ऑब्जेक्ट दिखना है, राइट, when you have to see the nearby object, क्या होता है? See, power of accommodation मतलब सर it is how our eye changes its focal length to see near objects and distant objects, उसको बोलते हैं power of accommodation। Apart from that, what is the difference in curvature? If you want to see nearby object, sir, I feel strain in my eye. Why? Because ciliary muscles are contracting and making sure that eye lens is thick. If you are watching a far object, you feel relaxed, right? Means your ciliary muscles are relaxed and they are thin. They are making the lens thin. ठीक, बस इतनी सी बात है। ये छोटा सा ट्रिक है। क्या होता है? Ability of eye to see objects different distances. इसको बोलते हैं power of accommodation। आपका जो आई लेंस है ना, इट कैन चेंज इट्स कर्वेचर, इट कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड एंड लेंस इज थिकर एंड हैज अ स्मॉलर फोकल लेंथ व्हेन यू आर ट्राइंग टू सी एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज क्लोज टू योर आईज। ये छोटा सा ट्रिक याद रखोगे, न्यूमेरिकल्स तक हो जाएंगे, राइट? फाइन। हाउ विल यू राइट द आंसर? Power of accommodation is the ability of eye to adjust its focal length, which helps the eye to see objects at different distances. कुछ नहीं है, the thing which we discussed right now उसको लिख दिया statement में। Apart from that, modification in the curvature of eye lens, which enables us to see the nearby object clearly, is the contraction in ciliary muscles that change the curvature of eye lens to become thicker. ये हैं चीजें जो आपने highlight करनी है, ठीक है? And consequently, the focal length of the eye lens gets decreased. Thus, it enables us to see the nearby objects clearly. Yes, है ना? आरव, बच्चा, I'm saying, अगर आप पास की चीज देखते हो, दिमाग पे, आई पे स्ट्रेन पड़ता है, आंखों पे थोड़ा सा, वो स्ट्रेन क्यों है? Because ciliary muscles are contracting themselves to make sure that eye lens is becoming thick. जब आप दूर देखते हो, तो आंखें बड़ी आराम से दिखती है ना, you feel no strain in the eyes, मतलब ciliary muscles are relaxed. Your lens is thin. तो दूर का ऑब्जेक्ट के लिए लेंस होता है थिन, पास के लिए लेंस होता है थिक, ठीक है? फाइन, बस। कम ऑन। अच्छा प्रियांशु, व्हाई नॉट F1? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, F1 पे द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, राइट? एट इंफिनिटी। सो दैट्स वन प्रॉब्लम। लाइट रेज आर पैरेलल, दे आर नॉट एक्चुअली कन्वर्जिंग। थोड़ा हेजी रहेगा इमेज। यू वांट अ वेरी शार्प इमेज बिटवीन C and F. यस हर्षिता, यू आर राइट। हाँ सत्यम, कोई नहीं बच्चा, ऐसा होता है, यही तो प्रैक्टिस करना है। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो यही लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। कम ऑन, राइट द फंक्शन ऑफ ईच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। कॉर्निया का बताओ फटाफट, इजी क्वेश्चन है। अली, माई नंबर इज -1.75। नाउ यू टेल मी। बिल्कुल आ सकते हैं सोनी। ये तो रट गया है, वेरी गुड। यस निधि, यू आर राइट। भाई कॉर्निया है आउटर मोस्ट लेयर, और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। कॉर्निया प्रोटेक्टिव लेयर है, यस। मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। क्यों? मैंने समझाया हुआ है, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस बिफोर। क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एयर टू कॉर्निया, है ना, इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग यहां पर होता है। वेरी गुड। आइरिस, आइरिस क्या है? आइरिस इज नथिंग बट दैट कलर्ड पोर्शन इन योर आई। किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, क्या है ये? दीज आर मसल्स विच आर कंट्रोलिंग द साइज ऑफ दिस स्मॉल होल इन योर आई विच इज प्यूपिल फ्रॉम विच लाइट एंटर्स योर आई, ठीक है? आइरिस तो वही काम करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग योर आईज। लेंस का काम क्या है? टू मेक श्योर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। क्यों सर? लेंस थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, टू मेक श्योर दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। बढ़िया इमेज बनना चाहिए, मस्त वाला, ठीक है? फाइन। सिलियरी मसल्स,
they change the curvature of eye lens, right? They give you power of accommodation. Simple सी बात है. So diagram is not required. I'm telling you, this diagram making is not required for this question because you just have to answer it. क्या लिखोगे? Cornea refract the rays of light falling on the eye, or you can say it gives protection to the eye. Both are correct, not a problem. Iris controls the size of pupil and allows different amounts of light to enter the eye. Done. Crystalline lens refracts light to focus the image of object on the retina. Very true, right? Ciliary muscles holds the eye lens and just focal lens to provide power accommodation. Easy है. Yes, है ना? Very good. Iris और pupil के difference, हाँ, MLB dreamer, बच्चा iris है muscles, pupil है hole. बस, that is the difference. Iris is those muscles which change the size of pupil, and pupil is that hole from which light enters your eye. Yes, Anshul, you are right, बच्चा. I need concave lens. Taha, you are right. This is a concave lens. Come on, question number 83. A student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 meters from him. Name the defect of vision the boy is suffering from. And this boy is suffering from the same defect which lot of students like me, they realized in the classroom. हमको क्लास में लगा कि अरे अच्छा हमको दिख नहीं रहा है. अरे क्या लिखा है मैडम ने? This is how we realized कि अरे चश्मा लग गया भाई. Myopia. State the possible causes of this defect. Sir, blackboard नहीं दिख रहा है. And blackboard is at 3 meters, right? 3 meters is kind of far only, right? So that's why. Far objects I cannot see. Near objects I can see. Sir, पास का बढ़िया. Short distance is good. Long distance is not good. Short is good. मतलब short sightedness. मतलब short word. मतलब myopia, right? Simple. Myopia is a short word. Means short range objects good. Myopia. Very good. And what are the causes for myopia? Sir, myopia. Near objects are very good. Matlab eye lens thickening is not a problem. The problem is thinning. Because to see far objects, I need a thinner eye lens. Right? I need a thinner eye lens. My eye lens is not able to become thin. It is converging more. Matlab it is forming the image in front of retina. Matlab it means eye lens is either thick, it is forming the image in front of retina, or my screen has gone away. Matlab eyeball has become longer. We have done this multiple times. बहुत बार किया है हमने ये, है ना? And this whole psychology I have given you. कितनी बार? Yes, सच बात है? Eyeball longer या फिर eye lens thicker? Yes? है ना? इस पे तो हमने बहुत बात करी है यार. कितनी बात करी है हमने? सर अगर आई लेंस हमारा थिक है तो कन्वर्ट ज्यादा कर रहा होगा, राइट? इफ इट इज कन्वर्जिंग मोर द इमेज इज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ रेटिना. सही बात. अब एक और तरीका हो सकता है, या तो मेरी स्क्रीन ही पीछे चली जाए. आइदर माई स्क्रीन इज मूविंग अवे, माई आई बॉल इज बिकमिंग लॉन्गर, देन ऑल्सो इट कैन हैपन, राइट? सो दैट्स व्हाई दीज आर द टू केसेस, राइट? है ना? ऐसे कॉन्वेक्स ओनली. वी हैव टू टेलीस्कोप्स, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग. कॉन्वेक्स ओनली. यस, वेरी गुड. थोड़ा हिंदी भी. हाँ, गेमिंग गुरु मेरे दोस्त. बच्चा इस पे बहुत बात करी ना हमने, तो आसान है ये. हमारा आई बॉल या तो बड़ा हो गया है और या फिर मेरा लेंस तो थिक है. सच बात है. क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट. अब इसको करेक्ट कैसे करें? अगर आई लेंस इज कन्वर्जिंग मोर, इफ माई आई लेंस इज कन्वर्जिंग मोर, आई वॉन्ट अ लेंस विच कैन डाइवर्ज. है ना? मेरा आई लेंस थिक होने में दिक्कत नहीं है, थिन होने में दिक्कत है, राइट? आई लेंस अगर थिक है ज्यादा कन्वर्ज करेगा. अब मेरे को इसको करेक्ट करने के लिए ऐसा लेंस चाहिए जो कि डाइवर्ज कर दे, इसकी कन्वर्जिंग कम कर दे, मतलब डाइवर्ज कर दे. कॉनकेव लेंस. आंसर है कॉनकेव लेंस, राइट? ठीक है. यस. हाँ करण, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू. इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं. आई शेयर दिस विद यू. आप कमेंट में पूछ लेना. बाकी जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिसिटी कर दिया है आपको, सिमिलरली आई विल गिव दिस टू यू. वेरी गुड. कॉनकेव लेंस इज द करेक्ट आंसर. बॉय सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, एक्सेसिव कर्वेचर है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल है, कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस. सिंपल. सेकंड, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? अरे सर, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. स्टार्स ट्विंकल बिकॉज दे आर वेरी फार. Light from the star is reaching your eyes, passing through so many layers of atmosphere, है ना? कितनी सारी atmosphere layers से pass करता है. And these layers are not static, they keep moving here and there, है ना?
So actual position of star is like this. It is bending towards normal, towards normal, towards normal, reaching your eye. Your eye and the brain have a tendency to think it is coming from the straight line. उनको star दिखता है यहाँ पे, and this, my friend, is also the answer for delayed sunset and early sunrise. है ना? Correct? सच बात है. So that is the apparent position, right? That is the apparent position. But these atmospheric layers, they keep shifting. Varying physical condition of atmosphere. इसीलिए क्या होता है, वो जो apparent position है ना, that keeps on shifting, tim, और इसी को बोलते हैं टिमटिमा ना. This is called as twinkling of stars. Why? Because of shifting in the atmospheric layers. Clear की बात है ना? सच बात है. बहुत बढ़िया. The twinkling of stars is due to atmospheric refraction. The atmosphere is made of several layers of different optical densities, and the starlight undergoes refraction continuously before it reaches the earth. The star appears slightly higher than its actual position, and as this apparent position keeps on changing, the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. इसी को बोलते हैं twinkling. Simple सी बात, right? Blurred image. Blurred image वाला कौन सा था? अच्छा ये वाला क्या? Yes. Why the light refract? Ayush, because air is denser compared to vacuum. Although we say कि भाई air और vacuum almost similar है, air का refractive index होता है 1.003, right? It is slightly denser. So that is why. And as you go deeper and deeper, as closer to the surface of Earth, density of air becomes more and more. Refraction becomes little more and more. इसीलिए bending of light happens, right? What is the apparent position? Bandstick, it is the position where the actual object is not there. Star है इधर. It seems like it is over there. This, my friend, is the apparent position, and this is the real position, right? है ना? Yes, Priyanshu, very good. How many questions are left? We have 15 more questions, almost. This is the 16th one. ठीक है, come on. Question number 84, kids. When a ray of light passes through a glass prism, it suffers two refractions. During these refractions, the ray bends. 2022, 1 mark question. Tute tips. The thicker pin is earth wire. Rest of the two we have live and neutral, right? Now, Shreya, in the last question, light from the star is reaching to you, passing through all these layers of atmosphere, which is transparent but denser than vacuum. So it will bend, right? And when your eye sees this light, it feels it is coming from a straight line. So apparent position is something else compared to a real star. Now, this layer of atmosphere is shifting. मतलब the apparent position keeps on shifting. If you have seen a bonfire, हवन देखा होगा, bonfire देखा होगा, या फिर कुछ भी देखा है, आपको लगता है कि सामने पंडित जी जो हैं, they are moving ऐसे है ना? That is similar, same as fluctuation. Away from the base in both the cases. Option A, option A, option C, option C, option B. Lot of people are saying option C, huh? पोल, अरे अभी कोई है नहीं स्टूडियो में. हाँ, I can't give you poll right now. No one is there in the studio. Option C, option C, option B. बच्चों सुनो, अरे why are you getting confused? Think. Whenever you have confusion, एक rough diagram बना लो. Just make a rough diagram. कैसे? Sir, light ray is going from air to glass. It will bend towards the normal, like this. Next interface पे, it is going from glass to air. It will bend away from normal, like this. In both the cases, it is bending towards the base only. है ना? So that is why, my friend, option B is the correct answer, towards the base in both the cases. है ना? ताहा, हाँ बच्चा, please पूछो. ठीक है? Yes, Priyanshu, you are right, बच्चा. कॉनकेव में नहीं. You can image आपको स्क्रीन पे मिलेगा. दूर में हेजी मिलेगा, परफेक्ट इमेज नहीं मिलेगा, बट स्क्रीन पे मिलेगा. प्रोजेक्टर इज सिमिलर टू लाइक अ प्रोजेक्टर. Yes.
What is base? अच्छा, oh, good question. बच्चों, this my friend is the base of prism. ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना. जिस पे प्रिज्म रखा हुआ है, that is the base, है ना? The part on which prism is standing, that is the base of the prism, and that is the question. Towards the base in both the cases. Come on, question number 85. What is a rainbow? Draw a label diagram to show the formation of a rainbow. Come on. Yes. What about glass slab? Glass slab, there is no bending, right? There is no bending. It bends towards normal, away from normal. It does not bend towards the base. Yes. हाँ बेटा विशाल, बढ़ गए आगे, आ जाओ. निधि, white light diagram is easy बच्चा. Red bends the least, violet bends the most, right? What is a rainbow? क्या होता है rainbow? Natural spectrum. Very good, Tanisha. Yes. Draw a label diagram to show the formation of a rainbow. There is only one mistake which I have seen people doing very commonly. बहुत बच्चे एक ही mistake करते हैं इसके अंदर, और वो है यहां पर. भाई, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, लाइट रे एंटर करेगी ड्रॉपलेट के अंदर. ठीक है, पहली चीज. रेनबो क्या होता है? ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर. फर्स्ट थिंग डन. ओके, नेक्स्ट थिंग, इसका डायग्राम में द मोमेंट लाइट एंटर्स इट स्प्लिट्स, मतलब इट रिफ्रैक्ट्स एंड डिस्पर्जेस. ठीक है, डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन दोनों हो जाता है पहले इंटरफेस पे. सेकेंड इंटरफेस पे इट इज इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल लिखोगे तो गलत हो जाएगा. दिस इज नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यू कैन से इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल लिखा तो नंबर कट जाएंगे. सुन लो ध्यान से. ठीक है. यस गोकुल, कुंजम कुंजम मेरे दोस्त. यस, कम ऑन, वेरी गुड. एंड नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन. फाइन. सो दिस इज द लेबल डायग्राम टू शो फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. Normally rain shower. Condition क्या है? Sun should be behind you. Sun should be behind you, and then you will see the rainbow in front of you. Correct? है ना? What is internal reflection? Jennifer, internal reflection बच्चा, it's refraction only. This is kind of refraction only. But small amount of light gets reflected also. ये वैसी चीज है ना, if you have seen lake water, है ना, आप अगर if you have seen the water of a lake, or let's say water in your glass, if you have a look, you see small shadows, आपको लगता है कि सामने आपको वो दिख रहा है, रिफ्लेक्शन शॉट्स मिल रहे हैं ना. तो रिफ्लेक्शन, जहां जहां रिफ्रैक्शन होता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड ऑल्सो. दैट इज पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, फाइन. It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. The water droplets in the atmosphere act like small prisms, and they refract and disperse the incident sunlight and reflect it internally, refract it again when it comes out. बस कुछ नहीं करना है, तीन चीज लिख रही है. It will first of all do refraction and dispersion. Second interface पे it will happen internal reflection, and third पे it will get refracted, refraction हो जाएगा. ठीक है. रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि मिलता है बारिश के बाद, and it is because of dispersion happening from the water droplets present in the sky. है ना, प्रिज्म से होना चाहिए, लेकिन water droplets are acting like prism. ठीक है ना. Cataract, WB dreamer, is because of haziness, right? Your lens is becoming opaque. That is cataract. Surgery is the only way. Question number 86. Come on everybody. Yes, astigmatism, Ayushi, is because of irregular curvature of your eye lens. For this we need cylindrical lenses. Yes. हाँ, आ जाओ. Question number 86. Find the ratio of resistances of two copper rods X and Y of length 30 centimeters and 10 centimeters, and having radii 2 centimeters and 1 centimeters respectively. It's an easy question. You can solve it. Give me the answer. फटाफट. Yes. It's okay बच्चा विशाल, पापा का नाम भी यही है ना, I know. Come on, Andrew, yes. You need a white source, है ना, you need a source of white light. बस इतनी सी बात है. Rithi, come on, this is for you. Session will be completed before 7. Yes, बच्चों
ratio of resistances of two copper rods X and Y of length 30 and 10 centimeters respectively. Right? सही बात? Okay. Having radii 2 centimeters and 1 centimeters. Very good. Okay. Bandstick, convert this formula. Convert into R equals rho L upon A. 3:4. Overconfidence, huh? Let's see. चलो देखो. What is the formula? Sir, R equals rho L upon A. सही बात है? Okay. If both are copper, मतलब rho is constant, right? Rho will not change. Sir, what about length? Length is 30 and area is 2. So R1 will be rho, length is 30 centimeters upon area is pi R square, means pi into 2 square. Now centimeter square, I am putting units also, there is a reason. R2 equals, sir, rho into L2. L2 कितना है sir? 10 centimeters upon pi R square, 1 square है ना, pi into 1 square centimeter square. अब R1 by R2 करना है, you just have to do R1 by R2. So just divide it. Rho and rho cancelled, centimeter square cancelled, centimeter cancelled. 10 30 is 3, pi cancelled. What is the answer? Sir, 3 upon 2 square, मतलब 3 by 4. 3:4 is the answer. Easy है ना? 3:4 is the answer. Dispersion and scattering. Dispersion because of different bending, right? Scattering is because of light gets absorbed and gets emitted, है ना? That's scattering. Aditya, surprise I told you na. I have given you a shot on the channel when you were attending the session. That is your surprise. That shot is for electricity chapter. उसको आसान और कम टाइम में कैसे फिनिश करना है, especially for boards. That is the shot for you. सिंपल सॉल्विंग है भाई. कॉपर रॉड x, कॉपर रॉड y के लिए दोनों की वैल्यू लिखनी है अगल बगल में, है ना? That's how you have to represent the answer. Next the formula, next the calculations, then you have to apply the calculations, solve it and give the answer as 3/4. Easy, right? है ना? Yes. Notes Jiggle Master on Telegram. Don't worry. Come on. Question number B for the same question. A current of 500 milliamperes flows in a series circuit containing an electric lamp and a conductor of 10 ohms when connected to a 6-volt battery. Find the resistance of the electric lamp. And you know what diagram is also given to you? Tell me. Why centimeter square? Mustafa, because pi r square, na? Radius is in centimeter. So radius का square will be centimeter square, no? Area क्या unit क्या होता है? Centimeter square, meter square यही होता है ना, इसीलिए. Correct. Break. इंसाफ मेरे दोस्त. Break क्या खत्म ही कर देते हैं और क्या? I'll give you break between this session and English session. इसीलिए. If we do in meters, ohm आपका ये आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं इसीलिए. 1 ampere 10 to the minus 3 2 ohms. Okay. Lata, surprise, I have given you a short when you were attending this session on the channel. Micro 10 to the minus 6, milli 10 to the minus 3. Nofal, milli hota hai 10 to the power minus 3. Micro is minus 6. Okay. Alright. Listen, everybody. By 10 ohm and R. Okay. If I convert this circuit into equivalent resistance, क्या होगा? It will be like this. 6 volt, 500 milliampere and R equivalent. What is R equivalent? Sir, it will be voltage upon current. मतलब 6 upon 500 milliampere. Milliampere means 10 to the power of minus 3. यानी कि 500 upon 1000. It will be 6 upon 0.5. Right? So it means 12 ohms. R equivalent is 12 ohms. Now R equivalent will be how much? Sir, 10 ohms plus R is equal to 12. So R will be 2 ohms. And that is the answer, my friend. Right? Okay? Resistance of conductor is 10 ohms. Let the resistance of bulb be R. Total resistance हो जाएगा 10 plus R. From Ohm's law, equivalent resistance is 12 ohms.
Now, if you solve, you will get the answer as 2 ohms. Resistance of bulb is 2 ohms, right? 2 ohms. Correct. बहुत बढ़िया. Taha, I won't take this question, bacha. And this is not relevant right now. That's why. Jiggle Master from Telegram, no, we'll share this PDF with you. There you can download. You can also write half ampere. Yes, you can write 0.5 amperes. Very easy, na? Very good. सुनीता, बच्चा आपको पहले निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से. ठीक है? कैसे? सर करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, V अपॉन I करोगे मिल जाएगा रेजिस्टेंस. अब वो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द सम ऑफ दिस एंड दिस. वाई? सीरीज में है ना. 10 प्लस R इज इक्वल टू 12. R की वैल्यू 2 आ गई. आ जाओ. क्वेश्चन 87 फटाफट. In the experiment to study the dependence of current on the potential difference V across a resistor, a student obtained a graph as shown. बड़ा favorite question है ये बोर्ड का. And this question we have been making sure that your seniors और उनके seniors और उससे पहले के भी लोग ये question ध्यान से करते चलो, because VI वाले ग्राफ आजकल नहीं आते हैं. आजकल आते हैं IV वाले ग्राफ. ठीक है? That's why. ध्यान से. Very cute question. Thank you, परीक्षित. ठीक है? In the experiment to study the dependence of current on the potential difference, a student obtained a graph like this. पहला, what does the graph depict about the dependence of current on the potential difference? क्या दिखा रहा है? Yes, Ohm's law. Very good. What is I ampere? That is unit of current, no? हाँ. Riti, we have done बच्चा. That short is for that only because I have done these sessions. VI graph, it is telling us Ohm's law. Sir, VI graph, it is a straight line. है ना? It is a straight line. It means it is showing proportionality of voltage to current. This is what Ohm's law is there. Very good. Second, find the current that flows through the resistor when the potential difference across it is 2.5 volts. Voltage is given. I have to find the current. I can find resistance and then find the current. कैसे निकालोगे रेजिस्टेंस? सर जी स्लोप निकालना है. नाउ कैन समवन टेल मी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज व्हाट? स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज द रेजिस्टेंस. ट्रू और फॉल्स? यस. व्हाट इज मिली एम्पियर? इट इज 10 to the power of -3 amperes. What is the slope of this graph is resistance. True or false? Insane gamers, thank you. Yes. हाँ ना बिका सफिशिएंट है बच्चा. ट्रू 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 फॉर अरे फॉल्स पिटा हो जाएगी. ए गलती नहीं करना. अरे ध्यान से देखो ना. दिस इज I वर्सेस V ग्राफ. V अपॉन I इज इक्वल टू R. I upon V is equal to 1 upon R. The slope of this graph is 1 upon R. Resistance नहीं है वो, 1 upon R है. ठीक है ना? Conductance है. Yes. ठीक. So if you find the slope, कितना आएगा? Sir 0.2 upon 2 is equal to 1 upon R. R कितना आ रहा है? Sir 2 upon 0.2 मतलब 10 ohms. Resistance is coming out to be 10 ohms, right? Resistance is 10 ohms. V is 2.5 volts, right? So you can find current. Very easy. Potential difference V across two ends of conductor is proportional to electric current I flowing through the conductor at a given temperature. This is what we call as Ohm's law. Second one, 2.5 volt upon R, that is 10 ohms. 0.25 amperes, my friend, is the correct answer, right? That's how you will solve it. Easy, है ना? हाँ, 0.25 amperes. ऋषुराज, बच्चा शॉर्ट उसलिए दिया है. अच्छा हाँ नीरज, you can say, but please make sure that you write at constant temperature. That is important. Mani Meghalai, all the best, don't worry. Chalo, come on. Question number 88. The maximum resistance which can be made using 4 resistors. अरे बहुत easy question है. Come on, फटाफट. Give me the answer.
maximum resistance which can be made using 4 resistors, each of resistance half ohms is? Rupa, please ask it out. Power. Vishal, power of lens या वैसा electric power? Jiggle Master, by tonight or tomorrow you will get the notes. 1 ohms. A. Obviously answer would be A, right? By if you want to maximize the resistance, you will connect in series. कितने हैं? 4 हैं. 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. मतलब 4 into 1 by 2. The answer is 2 ohms, and that is why option A is the correct answer. Right? Easy है. Come on. Question number 89. Assertion reason. Fadafat. Yes. Assertion reason. Assertion is saying alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron and heater. Okay. Reason. Resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metals, but the alloys have low melting points than their constituent metals. Acha, electric power. Vishal, electric power, bacha. It's very easy. It is the rate of energy dissipation or generation. यानी कि आप जितने एनर्जी के फॉर्मूले हैं ना उनको यूज करो और डिवाइड बाय टाइम कर दो. दैट इज पावर, राइट? है ना? द यूनिट इज वॉट्स. A, B, C. अच्छा, Jiggle Master, you can write this बच्चा on the comment section of this video ना. You can tell me. A, B, C. Alloys are commonly used in electrical heating devices. हाँ, क्यों? आंसर क्या है? सर नाइक्रोम ही तो होता है. It is an alloy of nickel and chromium. So normally we have alloys. That is true. Assertion तो सच बोल रहा है. Reason. Resistivity of an alloy is generally higher. That's kind of true. है ना? Kind of true. And they have low melting point. ये गलत बात है. Alloys की melting point ज़्यादा होती है, right? The reason we use nichrome is because it has higher melting point. भाई जल्दी melt नहीं होता ना, हीटर है, हीटर का वायर ही melt कर जाएगा, तो क्या फायदा हीटर का, right? सही बात है. So reason is wrong. So option C, my friend, would be the correct answer. Clear? ठीक है? Yes, C is the answer. Tungsten is a metal, not an alloy. Yes, no melting point is wrong. Suhani, yes, you're right. Vaishnavi, you're right, bacha. Question number 90. Kids, come on. Question number 90. And this one, it's a very nice, very beautiful question. Which one of the following is the correct setup for studying the dependence of the current on the potential difference across a resistor and Y? You have to see these 4 circuit diagrams and you have to choose which one is correctly marked. Voltmeter पे ध्यान दो और ammeter पे ध्यान दो. Yes, come on. We'll finish it before 7. Kids, come on, come on. Yes. Oham, love you too, beta. Yes. 650 will try. Everybody, come on. See, full of confidence. A lot of people are saying C, huh? A, C. बच्चों, एक चीज सुनना जरा ध्यान से. Everybody, listen to me. If this is my cell, this is my ammeter, this is my resistance, and this is my voltmeter, right? This much तो everybody knows. कि सर voltmeter is connected in parallel, series में लगता है ammeter, है ना? This much is all fine. Problem is first of all with the sign. Sign comes like this. ठीक है? The sign comes like this. This is the proper sign denotation for ammeter and voltmeter when you connect them in circuit. अब ध्यान से देखो. In option A, voltmeter is in series, मतलब sorry. In the option number B. In option B, voltmeter is in series, wrong. In option D, ammeter is in parallel, wrong. In option C, voltmeter is in parallel, ammeter is in series, which is correct. But look at the sign, plus, minus.
minus plus. अरे रे, this is wrong. Option A is the correct answer. Now I know what you are thinking. तुमको लग रहा है सर ऑप्शन A में तो वोल्टमीटर सीरीज में लगा हुआ है. Do you really think? सच में भाई, if you connect resistance like this and voltmeter like this, ठीक, this circuit and this circuit are both same. Both of them are same. दोनों parallel हैं. This one is also same. So ये तीनों सर्किट सेम ही है, ठीक है. So don't be confused. ये वोल्टमीटर करेक्ट है. Yes. Clear? हाँ, voltmeter has infinite resistance ideally. That's why option A, my friend, is the correct answer. Clear है? Yes. हाँ, that is parallel only. Question 91. Everybody, फटाफट आ जाओ. Yes, question number 91. A student wants to use an electric heater, electric bulb, and electric fan simultaneously. How should these gadgets be connected with the mains? In parallel. ये तो हाउसहोल्ड सर्किट क्वेश्चन है. They should be in parallel. क्यों? Parallel में everybody will get equal voltage. They will have control over the current. जितना करंट चाहिए उतना ले लो भाई. And you can operate them individually. फैन को कर लो, बाकी मत करो, है ना? You have control over them. What is electric fuse? How is it connected in a circuit? Electric fuse क्या है? It's a safety device. It protects you from overloading, from short circuiting. It works on heating effect of electric current. अगर एक लिमिट से ऊपर करंट फ्लो करेगा, this fuse wire will melt, break the circuit open, and your appliances will be safe, right? है ना? So हम कनेक्ट करेंगे किसमें? पैरेलल में. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? सेफ्टी डिवाइस है. आंसर लिखोगे, कैसे लिखोगे? Gadgets should be connected in parallel with the mains because of different resistance and potential will drop according to differently. सही बात है. If one appliance fuses, others will keep functioning and they can be controlled individually. Electric fuse की बात करें, it's a safety device that operates to provide protection against the overflow of current. It is connected in series with the device in a circuit. Easy है ना? Yes. Go, all the best बच्चा. हाँ, fuse is in series. Fuse has low melting point, हर्षिता. Fuse has low melting point. ठीक है? Question number 92. Come on बच्चों, question number 92. Two lamps rated 100 watt 220 volts and 10 watt 220 volts are connected in parallel to 220 volt supply. Calculate the total current through the circuit. We have done a similar question before. Come on. If you do 1 by R, then you have to find resistance. No, current is V upon R, not V upon 1 by R, right? That's why. Come on. Yes. पूजा, ऑल द बेस्ट बच्चा. Come on. भाई 100 watt 220 volt, 100 watt 220 volt connected in parallel to 220 volt. आसान है. It's a very easy question. जल्दी हो जाएगा. Come on. भाई if you solve it, 220 volt is the supply given to both of them. Simply find their respective currents ना. कैसे? पावर और वोल्टेज से. सर पावर इक्वल्स V इंटू I इक्वल्स P अपॉन V. I1 कितना है? सर I1 इज पावर दैट इज 100 watts अपॉन 220 volts. I2 कितना है? सर पावर विच इज 10 watts अपॉन 220 volt. है ना भाई? I1 you have found, I2 you have found. I will be how much? I कितना होगा? सर I1 plus I2. सॉल्व कर लो. कैसे करोगे? 100 upon 220 plus 10 upon 220. It will be 110 by 220 मतलब 1 by 2 मतलब 0.5 amperes and that my friend is the correct answer. Yes. Sample paper का question है ये. 0.5 is the correct answer. Second, two resistors X and Y of resistances 2 and 3 ohms respectively are first joined in parallel and then in series. पहले लगाया parallel में like this and then in series. In each case the voltage supplied is 5 volt. Draw circuit diagrams. Circuit diagrams बन सकते हैं. Easy है ना भाई? This is the parallel, this is series.
Calculate the voltage across 3 ohm resistors in series combination. Sir, 3 ohm में if you want to find voltage drop in series connection, it's very easy. Find the current first. Current will be how much? Sir, 2 plus 3 ohm is the equivalent resistance. That is 5 ohms. I is 1 amperes, right? Now, if I is 1 ampere, this is 1 ampere. Voltage drop across 3 ohm will be how much? V equals 3 into 1, that is 3 volts. And that, my friend, is the correct answer. है ना? 3 volt will be the voltage drop. Yes. English live class अभी है भाई, 7 बजे है. Come on, 93. आसान आसान क्वेश्चन है बच्चों. आरव, शॉर्ट्स में बताया मैंने. Come on, question number 93. List 2 disadvantages of using a series circuit in homes. First, if one appliance breaks down, everything will not work. That is one. और सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं. करंट तो सबको सेम मिलेगा सीरीज में, ये भी प्रॉब्लम है ना? कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ओहो, ये तो बहुत आसान है. देखो, वी यूज पैरेलल, उसका सब उल्टा कर दो. मतलब if one component circuit fails, then all the component circuit fail because circuit has been broken. सीरीज में ये दिक्कत है. Second, the more component there are in a series circuit, the greater the circuit's resistance. If circuit's resistance is more, current is less. Every appliance will not work properly, है ना? Because every appliance has different current requirements. ठीक. Second, we have to find equivalent resistance for this. Come on, 1 ohms. Anonymous is saying 1 ohms. Other works. Look at this. भाई A है और B है. Sir, this is one branch, this is one branch, and this is third branch. अच्छा. 4 and 6 are in series. 3 and 3 are in series. And this is A, this is B. So I can say B. ये बन जाएगा 6 and 4 is 10 ohms. This will be 3 and 3 मतलब 6 ohms. Center में this will be 15 ohms. And this, my friend, is A. These are 3 parallel resistances. Solve कर लो. Sir, 1 by 10 plus 1 by 15 plus 1 by 6 is equal to 1 by R. 10, 15, 6. 60 आ गया. 6 plus 4 plus 10. कितना हो गया? 20 by 60. यानी कि is equal to R. So, R कितना आ रहा है? 60 upon 20. मतलब 3 ohms. आंसर आ गया भाई 3 ohms. Yes, 3 ohms. Very good. चलो, क्वेश्चन 94. एंड दिस इज लास्ट ईयर्स पेपर. ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. 2022. As shown in the diagram, an aluminium rod AB is suspended horizontally between the 2 poles of a strong horseshoe magnet in such a way that axis of rod is horizontal and the direction of magnetic field is vertically upward. The rod is connected in series with a battery and a key. Okay. State, giving reason. पहले तो what is observed when a current is passed through the aluminium rod from B to A? क्या observe करोगे? Sir, this is the direction of magnetic field. Magnetic field है नीचे से ऊपर and current is from B to A. Current is flowing in a magnetic field. It will experience a force, right? Correct, बहुत बढ़िया. इसका मतलब B से A में we will experience a force. Now question is किस तरफ? Who will tell? सर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताएगा. दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फोर्स, है ना? सच बात है. सो इफ यू टेक दिस कलर, हाँ, दिस इज द करंट, राइट? दिस इज द करंट एंड दिस रेड वन इज द मैग्नेटिक फील्ड. थिंक अबाउट इट. सर, मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स, करंट इज दिस साइड, सो आई विल से फोर्स इज इनसाइड, है ना? फोर्स इज इनसाइड. सिंपल. मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इस तरफ है, फोर्स तो अंदर लगेगा. सिंपल सी बात है, राइट? सो द फोर्स एक्टिंग on the rod can be found as leftwards using Fleming's left hand rule. Hence it is observed that rod moves leftward towards the magnet, है ना? बहुत बढ़िया. What change is observed in a situation in which the axis of the rod AB is moved and aligned parallel? Second question क्या बोल रहा है? If rod is aligned parallel to the direction of magnetic field, sir, magnetic field भी ऐसे है, current भी ऐसे है, force लगेगा? नहीं लगेगा. This is the case in which we have zero force. So that is why there is no force acting on the rod when it is aligned parallel to the magnetic field. Hence it remains at rest.
यस है ना? करेक्ट, नो चेंज, वेरी गुड. हाँ सौरभ, ये करेंगे बच्चा, डोंट वरी. पोल्स त्रिशंजीत आर नॉट गिवन, बट व्हाट इज गिवन टू यू? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड. मतलब ये है नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. पोल दिए नहीं है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, दैट्स व्हाई. क्वेश्चन नंबर 95. 95 question. Magnetic field is a physical quantity that has both direction and magnitude. How can this statement be proved with the help of magnetic field lines of a bar magnet? अब सोचो, magnetic field is a physical quantity both direction and magnitude. अब if you look at magnetic field lines, कैसे बोलोगे? Where is the direction and where the field is stronger? You look at the closeness, है ना? So magnetic field lines of a bar magnet indicate the direction of magnetic field is from north to south pole of the bar magnet. भाई magnetic field lines they go from north to south pole of the bar magnet outside the magnet, inside the magnet from south to north. Okay. इसके अलावा this question was asking you about properties only. बस properties पूछ रहा था ये. Second, how will you say field is strong if the magnetic field lines are close? मतलब field is strong, right? So the degree of closeness of magnetic field lines indicate the strength of magnetic field. Hence, magnetic field has both direction and magnitude. ठीक है ना? Very good. Yes. Question number 96. Come on. बड़ा easy question है ये. For leftward, Neeraj, yes, it's a good thing to have. Inside the plane, Sony, nahi. I would suggest you say leftwards. Magnitude मतलब कितना is the answer of how much. ठीक. What is electromagnet? So magnet, temporary magnet है. It is because of flow of current, right? है ना? List any two uses. You can do it. You have a coil, you have a soft iron bar on which this coil is wrapped around, and then you have a current flowing in this coil. That is electromagnet. Uses junkyard में, electric bell में, headphones में, magnetic levitation, right? The trains, maglev trains. So electromagnet is a temporary magnet, consists of coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core. A strong magnetic field is produced when current is passed through it. Temporary होता है ये, right? Electrical devices such as loudspeaker, electric bell, electric motor, and MRI scanners. All these are applications. This is something which can be asked. Fine. Next, label diagram. Three things are very important. First, a coil. Next, a soft iron core inside the coil, and third is a battery or a power source. बस इतना बना दो, काम खत्म. State the purpose of soft iron core. क्यों use करते हैं? The ways to improve the strength of electromagnet. First, amount of current. Second, number of turns. Third, inserting a soft iron core. So it has two purposes. First, giving support, है ना, giving strength or durability. Second is improving the strength of electromagnet. ठीक है, दो फंक्शन है. पहला है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, दूसरा है increase the magnetic strength. ठीक, two ways of increasing strength. If material is fixed, amount of current, number of turns. बस सिंपल सी बात है. Soft iron core is used to increase the strength of magnetic field produced by the solenoid. When a current is passed through soft iron core, it gets magnetized easily and produces stronger magnetic field. Strength of electromagnet can be increased by increasing the current, number of turns. बस easy. ठीक. Yes. अरे oh. Kids, 1 second. PowerPoint crashed. PowerPoint ही क्रैश हो गया यार. कौन से क्वेश्चन पे हैं हम लोग? हाँ, this one तो we have done. हाँ, ये भी हो गया. We are on this question. This question is also done. हाँ, yes. From this question, आपका स्टूडेंट है. Thank you. Oswal is also good.
यस, राम राम। आ जाओ, कम ऑन बच्चों, आ जाओ आ जाओ। एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 एवरीवन। What is soft iron? Type of material, Roshan. ठीक है? Rajneesh, these are good. Pre-boards are tough. The following diagram shows two parallel straight conductors carrying the same current. दो पैरेलल कंडक्टर्स में सेम करंट जा रहा है, like this as shown to you. ठीक है? Copy the diagram and draw the pattern of magnetic field lines around them showing their directions. कैसे निकालोगे? Right hand thumb rule, है ना? What is the magnitude of magnetic field at a point X which is equidistant from the conductors? Give justification for your answer. Current के direction में रखो thumb and curl your fingers to show the magnetic field lines. Straight current carrying conductor के around concentric circles में we have the magnetic field lines, right? So what we can say, sir, lines will be concentric. What about direction? Direction of current is the thumb. Then you curl your fingers to show direction of magnetic field lines. Put like this and curl. इसका मतलब it is coming out to be clockwise in this first one and clockwise in this second one. बहुत बढ़िया. Now comes the question. Magnitude of magnetic field at a point X which is equidistant from the conductors. Equidistant. अब सोचो, if first वाले में ऐसे आ रहा है, second वाले में like this, and this is our point. They are cancelling each other out. ठीक है? So that is why it will be 0. अगर let me give you one more hypothetical case. Let's say the magnetic field lines are like this. ठीक है? So what will happen? They will become like this. ठीक है? So when the magnetic field lines at that point are opposing each other, they will cancel out. When they are coming in the same direction, they will join each other. ठीक है ना? हाँ, yeah. Physics is not tough, बच्चा. Left hand rule, studying star. This is force, this is magnetic field, this is current. Align it, all are 90 degrees. ठीक है? Yes. So that's why second में, as the same current flows through both the conductors and the point X is equidistant from each conductor, the magnetic field produced at X due to AB and PQ are equal and opposite. Hence the net magnetic field at 0 at point X. पहले का तो आंसर इजी है, सही बात है ना? हाँ बिल्कुल MLB ड्रीमर, ऐसा प्रैक्टिस पेपर में भी था क्वेश्चन. यस, नहीं अंशुल, हाँ डबल होगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा. इफ करंट इज ऑपोजिट डायरेक्शन इन बोथ द वायर्स, उस पॉइंट पे डबल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर 0 हो जाएगी. ठीक है? यस. हाँ, फादर मदर चाइल्ड, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस. अच्छा हाँ, या इलीगल मेथड वाज नथिंग, इट इज रिगार्डिंग अ कॉइल. इन द कॉइल इफ करंट इज गोइंग लाइक दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा उसमें. ठीक है? मोटर इज नॉट देयर. क्वेश्चन नंबर 98 किड्स, फटाफट आ जाओ. Name and state the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in uniform magnetic. Arre re. First one, it is what? Left hand thumb rule. This is force, this is magnetic field, this is current, right? And they are all 90 degrees to each other. बस ये है पहला वाला, Fleming's left hand rule. And by the way, Fleming's right hand rule is removed from your syllabus. Correct? Yes. Second one. An alpha particle, while passing through a magnetic field, gets projected towards north. This I have taught you before. Alpha particle, proton, these are positively charged. है ना? Alpha particle क्या होता है? Helium 2+ होता है ना? इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है. Overall, alpha particle is positively charged. Proton is positively charged. These are, wherever they are moving, that is the direction of current.
है ना. अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे होगा. प्रोटॉन ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे होगा. इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, करंट उल्टा होगा. ठीक. Alpha particle while passing through a magnetic field gets projected towards north. This is alpha particle, matlab this is current. Okay. In which direction will an electron project when it passes through the same magnetic field? Yes. अगर alpha particle पे force लग रहा है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन पे force लगेगा उल्टा. Yes, है ना? Yes, come on. See, first one is very easy. It is just a statement describing the Fleming's left hand rule. तो उसको तो लिख ही सकते हो, है ना. कुछ नहीं है इस पे. ये आपको बस लिखते हुए ये बताना है कि thumb represents force, the index finger represents magnetic field and middle finger represents current. Simple. Next question है ये कि भाई alpha particle is depicting force in the northward direction. बहुत बढ़िया, correct है ना. तो इसका मतलब if electron is going in the same direction, इस पे force लगेगा उल्टा, right? So the direction of flow of current will be along the motion of alpha particles. An electron travels in the opposite direction of the flow of current. Hence, by applying Fleming's left hand rule, electron will get projected towards the opposite direction, that is south. Yes, clear है? Alpha particle is moving in some direction. It is getting a force applied in the north direction, right? But flow of alpha particle is the flow of current. Flow of electron is opposite to the current. Socho, think about it. If let's say alpha particles are going in this direction and getting a force towards north, ठीक? If current is switched, keeping magnetic field same like this, now current is downwards, magnetic field is here and force is in this direction. So that's why if instead of alpha particle we have an electron, matlab current is in opposite direction, force now will be reversed in the opposite direction, it will be towards south, right? है ना. previous question बच्चा यही है. alpha particle अगर आपका direction में था इस वाले ऊपर की तरफ, ठीक है ना, magnetic field था इस तरफ, and let's say this is north, ठीक, north में लग रहा था force, but now if electron is going in this direction, मतलब current is downwards, force will be towards south, ठीक है. Yes. What are alpha particles? भास्कर, it's helium 2+. इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. Come on, 99th question. No, Rakshak, it's not there. For CBSE, it's not there. Generator motor is removed. Is south always positive? Higher? No. It depends on the turning. State clock face rule ना बच्चा. South is clockwise and north is anti-clockwise. ठीक है, चलो आ जाओ. 99th question. State an important advantage of using alternating current over direct current. यार ये तो बहुत आसान है. AC, it is transmitted for long distances. क्यों? Power loss नहीं होते. Correct है ना. Can be transmitted over long distances without much loss of energy. AC cheap होता है. It is less expensive and easier to generate from DC. AC can be stepped up or stepped down. और यही खास बात है AC की, है ना. इस पे तो बहुत लड़ाई हुई है टेस्ला एडिसन के बीच में, राइट है ना. करेक्ट. क्वेश्चन 97 कौन सा है? अच्छा 97 में, ओके वेट, 97 में फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वायर में, if field lines are crossing each other, they are cancelling out, it will become zero. अगर करंट ऐसे है और ऐसे जाएगा, सेम डायरेक्शन में आएंगे तो ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है ना. यस, ये तो आसान है यार. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 100. State with reasons the mode of connecting all electrical appliances in common domestic electric circuit. क्या है रीजन? क्या है रीजन बताओ भाई. ये तो है डायग्राम, एंड बाय द वे दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है. सो पैरेलल कनेक्शन में हम यूज करते हैं. व्हाई? बिकॉज इंडिविजुअली वोल्टेज इक्वल मिलता है एंड यू हैव इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर ऑल द अप्लायंसेस. दैट इज द रीजन वी यूज पैरेलल कनेक्शन इन हाउस होल्ड सर्किट्स. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है.
Which two separate circuits are often used? ये नया क्वेश्चन है. This is separately a new question but important question. आपके घर में होते हैं पावर स्विचेस और होते हैं नॉर्मल स्विचेस. पावर स्विचेस आर 15 एम्पियर्ड वंस, नॉर्मल आर 5 एम्पियर्ड वंस. नॉर्मल में अगर कभी गीजर कनेक्ट करोगे, कभी देखा है बूम हो जाता है, मतलब ओवरलोडिंग हो गया, राइट? सो दैट्स व्हाई 5 amperes and 15 ampere circuits are used in domestic electric circuits depending on power rating of appliances used in households. इनको बोलते हैं पावर सर्किट्स, है ना, पावर स्विच बोलते हैं इनको. 15 ampere current rating for appliances with higher power rating such as geysers, air coolers, etc. and rest है 5 ampere जिनमें बल्ब फैन वैन लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना? सुही यही है वो सेशन. गैरी ये सारे क्वेश्चन कर लेना, 70 आ जाएंगे. यस. How does current flow in solenoid? Pranav, it's a coil, no? Wire तो है, it flows. Yes, Urvashi, you're right, बच्चा. When does electric short circuit occur? How can it be prevented? Short circuiting कब होता है? जब लाइव और न्यूट्रल मिल जाते हैं. Mathematically resistance is zero, current is infinite. बहुत करंट फ्लो कर जाएगा. इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. कैसे करोगे प्रोटेक्ट? फ्यूज लगा के, राइट? है ना? Step up step down means DK18 it is stepping up transformer, step down transformer. बिजली आती है 440 वोल्ट पे, 33 kV पे, उसको हम 220 पे लेके आते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, है ना? Electric short circuit occurs when live and neutral wire meet and electric fuse is suitable rating can be used to prevent short circuit. ठीक है? Yes. हाँ, ये तो रोशन you are going into motor split ring के ऊपर, है ना? Yes. बिल्कुल अर्जुन हो गया एसएसटी का. विद दिस वी हैव डन 100 साइंस क्वेश्चंस, 100% इन फिजिक्स. अश्विन प्रैक्टिस करो, डरो मत, सब हो जाएगा, राइट? ईएमआई रिमूव्ड निर्मल, ठीक है? बाकी डोंट वरी, वी हैव अ क्लास फ्रॉम 7:15 ऑफ इंग्लिश. डोंट वरी. यस एवरीबॉडी, सी science is not difficult. The only reason we did this today's session, I understand it's a very long session and I think ma'am you can also come. The only reason we did this long session so that you get confidence कि भाई इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना? इसके बाहर कॉन्सेप्ट तो नहीं आएगा, ये मान के चलो. So with this I think we can conclude this 100 previous question वाला session. बहुत लंबा टाइम यू गाइज स्टेड, इट शोज हाउ मच डेडिकेटेड यू आर. ठीक है, तो चिल मारो, अच्छे से इंग्लिश पढ़ लो 2 घंटा और. हाँ, because it's your time. Now we understand that now your exams are very close and I think internally you also know कि it's important for us to study ना, मतलब इनको भी importance है इसलिए. Keep this hard work going on everyone. I think 1.5 months का हार्ड वर्क है ना. मार्च के बाद तुम भी चलते हुए आओगे. हाँ. अरे सर मजा आ गया, सब आसानी था, कुछ था ही नहीं उसमें, है ना? तो चिल, रिलैक्स, यू डिड वेल, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड यू विल रॉक दिस सेशन. डोंट वरी, वी हैव मोर सेशंस टू कम. बहुत रिवीजन करने वाले हैं हम लोग. लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो किसी ने नहीं किया है तो, ठीक है? गो अहेड, ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश सेशन. टेक केयर, सी यू, बाय बाय. बाय एवरीवन.